Yo, chat, I am live. And today is a very interesting day. So not only are we cheering for VD, we are also cheering for Shirov. So ऐसा interesting day कभी नहीं आया था. At least I never thought I would be cheering for Alexis Shirov कि भाई Shirov भाई आज जीत जाए. But that's the day we have today, and Alexis Shirov को पूरा support करने वाले हैं भाई along with VD. So let's go chat. And क्या हाल है भाई? Oh, VD has picked the Petrov. Very interesting. Not a choice you play when you're going for a win. But anyways, बड़ा स्ट्रीमर बड़े नाटक भाई ये मैं क्या किया हुआ भाई मैंने ऐसे कौन से नाटक कर लिए भाई और ठीक है भाई कैसे भाई बड़ा हूँ भाई बढ़िया हूँ भाई बड़ा हूँ मतलब बढ़िया हूँ Anyway, chat, let's go to Harikrishna's game. Harikrishna क्या हो रहा है? Okay, open Spanish again. Nothing spectacular. Okay, knight f6, castles, 94, d4, b5, bishop b3, d5, d5, and so on. It will happen. Let's go to the game of Anish Giri. Okay, c4, knight f6, knight c3, c5, opening. And एक और important game, that is Rapport against Shirov. So we have c4 by Rapport, c5 by Shirov, knight f3 by Rapport. Let's see what happens. आज फुल जोश में लग रहे हैं भाई जोश नहीं भाई फोश हो चुके हैं भाई द वे नाइट c3 played by Fedoseev and Fedoseev has no chance to win this chat, so I think Fedoseev बड़ा कुछ डल सा खेलेगा. Did Giri qualify? Giri qualify? Yeah, I think he has like 3 points, so I think he needs a draw. As far as I know, Giri needs a draw, and so does yeah, Giri needs a draw. Yo अरुण भाई क्या हाल है? Russian defense is banned. VD will get disqualified. To be honest, it doesn't make much of a difference right now. No offense, but I mean he has very limited chances right now. I hope he qualifies, man. I'm really hoping for it, but it's very very unlikely. आज भी जीत जाएगा टिक्कू भाई श्योर है भाई. देखो खाली VD के जीतने से काम नहीं बनेगा. That is the issue. VD को तो जीतना ही है. उसके अलावा शिरोव को जीतना है. मतलब इमेजिन करो भाई, दो लोगों को जीतना है ब्लैक पीसेस से. That is so unlikely. लाइक दोनों को ब्लैक से, वीडी को और साथ साथ में शिरोव को ब्लैक से जीतना है भाई. इट्स वेरी डिफिकल्ट. विल गो थ्रू. वेरी अनलाइकली भाई, वेरी अनलाइकली. So VD is also opening today match. Yeah, I'm not sure about the Petrov though. I totally agree with you. I think Petrov is not what you play when you go for the win. So yeah, I think maybe VD realizes the chance is very limited and maybe he's okay with the draw, but we'll figure out. 50 watching, 17 likes. अरे लाइक हो जाएंगे भाई. यो कपिल भाई क्या हाल है? अब क्या होगा यार? Vidit gave a nice chance to qualify. Yeah, I know भाई. He had a very good chance, 2 out of 2. Then he lost against like Rapport. से दोनों games he lost. So if Rapport qualifies, kind of fair as well. Yo VK भाई क्या हाल है यार? I have come to your stream with Pokeballs to capture Pikachu's. वो हमारे लिए पिकाचू नहीं आते, हमारे stream पे सारे awesome लोग ही आते हैं भाई. Can VD go through? He can, but it's very unlikely. As I mentioned up somewhere in the chat. Today VD needs to win and Shirov needs to win, both with the black pieces. Very unlikely bhai. Yo Cham TV, maybe he just wants to come back home. Yeah, it's also possible. डेढ़ महीने घर से बाहर आया. गुड इवनिंग. VD की प्रेडिक्शन आज नहीं भाई. अगर आज VD को जीतना है तो खुद से जीतना पड़ेगा. मेरी प्रेडिक्शन से कुछ फायदा हुआ नहीं कल. यो मैं भाई क्या हाल है? याद तो जरूर होगा. अरे हाँ भाई याद हो भाई. Okay, chat, by the way, after the move, knight c3, knight takes, pawn takes, bishop e7, bishop e3, castles, queen d2, knight d7. I think apparently there was a book written by Swapnil Dhopade on the Petrov, which I ran into, I think, a few months back. So, I think that's pretty much the theory now it is going on, but I think तो से evolve हुई है. Rapport Drew, क्या बात कर रहे हो? Stream बंद कर दे क्या फिर? अरे यार डराओ मत यार तुम. फिर 5 मिनट की स्ट्रीम कितने मिनट हुए? 4 मिनट की स्ट्रीम होती फिर. If Rapport draws, the match is over, chat. So let's hope that doesn't happen. VD has talent of a top 10 player, but not consistent. I think time pressure is the issue, chat. It's only about time pressure, I think. मतलब time pressure में he's always falling under time pressure. It's similar to what I feel in my games happens. So I think time pressure को solve करना है. VD started with the streak just like champion Beast Chats. अरे यार Beast Chats को भी रोस्ट कर रहे हो और VD को भी भाई. ये क्या है भाई? Out of 6 people right now, who is your favorite? Mine is Fabiano. I would have to say mine would be Anish Giri once he qualifies. We have to understand that Anish Giri is going to qualify. He's going to win from his pool. I thought we would go for Stafford. Unfortunately, I think Fedoseev has seen enough of Eric Cousin's streams to realize how it is to be refuted. Please note down these words. In the 24th move, this will be a pawn up.
Chess says, write down this in a note and wait till that move. Okay भाई, let's see. Let me pin that message and if that happens, तो आपको मैं मॉड बना दूंगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप प्लीज भाई सारी चैट से अपोलोजाइज करना. आपके प्रोटेक्शन से ड्रॉ लूज स्टार्ट होगा लगता है आपको प्रोटेक्शन में. अरे ये क्या है भाई? साहिल भाई आपको डैश है भाई, कुछ भी मतलब. चलो एक इंडियन तो क्वालिफाई होगा, अनीश ओपी. ये बात तो है भाई, अनीश तो क्वालिफाई होगा भाई, ये तो गारंटेड ऑलमोस्ट. Stafford is, I know Stafford is not at great at top level, like for sure. I think White can easily gain an edge. Anish is your inside fan. Wait, I am Anish's inside. Okay, inside fan sounds weird, but okay. Does Vidit still have a chance to qualify? Yes, he has a chance. By as somebody mentioned in the pinned message, he has a chance. But VD has to first of all win, and then Shirov has to win with the black pieces. So that's very difficult. Rapport को white pieces के साथ सिर्फ white है हराना. It's very difficult. Is it hypothetically possible? Yes. Will it happen? Unlikely. But will we wait for it to happen? Yes. Yo Manish भाई क्या हाल है? Little Tikku stand by. Little Tikku आज सो चुका है. Little Tikku is exhausted after yesterday. He worked really hard. पिकाचू चैनल में टिक्कू भाई गाली देके खुद कैंसिल हो जाओ भाई. गाली देके कैंसिल होते तो भाई आई थिंक अब तक चेस के स्ट्रीमर बहुत कम बचे होते भाई. Yeah, by the way, Anish Giri is qualifying. Yeah, all he needs is a draw. So there's one person who might qualify at least, or guaranteed to qualify almost. That's Anish Giri. So just keeping that in mind. Rapport को दूध पिला दो सेटिंग करके. अरे यार, Rapport को मैंने कल बहुत कुछ पिलाया, but unfortunately माना नहीं यार. माना नहीं, वो पी भी गया बट माना नहीं. लिटिल को वर्क रियली हार्ड यस्टरडे. अरे भाई कल मैं तो करीना भाई उसने यार वीडियो किंग को डिफेंड करने के लिए बस हुआ ही नहीं किंग डिफेंड. क्या करे यार, तब भी ही लॉस्ट. ऑब्जेक्टिवली आई थिंक फैबी विल बी बेटर देन अनीश इफ ही क्वालिफाइज इन कैरी, बट दैट्स ट्रू Rajneesh भाई. आई एग्री. आई थिंक फैबी विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लाइकली प्लेयर्स टू क्वालिफाई. बट आई डू फील कि मतलब वी डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग फिरोजा एज ऑफ नाउ. कितना उसका लेवल है, क्या चल रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिरोजा अप टिल नाउ. सो वील हैव टू वेट फॉर दैट वन. ओपनिंग दिखा दो वीडियो की. अरे रुको भाई दिखाता हूँ यार. So Petrov थी भाई. It was the Petrov and not a choice you go for when you're trying for a desperate win. So I think maybe he's trying to just keep it normal and not worry about the result. Maybe that's a good strategy overall. Rook e8 played and now I think he will play probably knight f6. Probably he'll start pushing the a pawn, put the bishop on g4. Let's see. Rapport को खट्टी लस्सी पिला. आज क्वीन को प्रोटेक्ट करो. क्या जाने काम कर जाए. अरे नहीं यार, I don't want to distract the queen from the king. That would be very unfair to the king. Yeah, piss off हो जाएगा. Who are players currently candidates? Up till now, it's Nepo. Unfortunately, Karakin. Then it is Firuzcha, Caruana. Then it is क्या नाम है इसका? Duda, and then it is Rajabov. Why did Vidit play knight b6? Knight b6 is not the good square, a good square for the knight because कर क्या रहा है यहाँ पे? It cannot go to c4, a4 पे क्या ही कर लेगा? So I think knight deserves to be on f6 here, trying to go to e4 and defending the king side. अच्छा knight c6 because chat यहाँ पे knight c6 is not the best square. As you can see, the knight on c6 might not be doing much. First of all, it's dominated by this pawn. It cannot move to d4 or b4 ever until white plays knight d4, which he might not because white has a plan of h4 and knight g5 here. So in that scenario, the knight on f6 actually has a job. It can defend the h7 square and also plan for knight e4 long term. Vidit is virtually out. I agree, Madhavai. I agree. He's virtually out. But whatever little hope he has, we'll of course wait for it and hope for some miracles. But let's see. Do you think World Chess might do Kraken's candidate? I don't think World Chess will, but I think FIDE can. कल सबका एग्जाम है इसलिए कल एग्जाम है क्या भाई? कल कौन किसका एग्जाम है भाई? Please tell Vidit to manage his time properly. Today he will manage his time properly. I'm pretty sure about this because today he's not under much pressure. He knows he's logically out. The only chance is कि मतलब जब अपना rapport हक दे वो तो होगा नहीं. So let's see. What are the players qualifying for each group? So pool B से Anish Giri, pool D से it will be MVL most likely. Pool C से it will be most likely Rapport. उम्मीद पे तो है वीडी का, बट एंड पूल ए भी टाइट है भाई. मैथ्स का पेपर है क्या भाई? आई एम नॉट किडिंग. मैं जब मैथ्स का पेपर था ना 12th का,
तो मैं पूरी तैयारी करके रात को 11 बजे सोने बैठा और मेरे को सुबह तक 5 बजे तक नींद नहीं आई भाई, लिटरली आई कुड नॉट स्लीप, इतना नर्वस था मैं। Vidi is better than Nihal, but Nihal ने Rapport को खेला था, but Vidi is struggling. भाई ऑनलाइन चेस is different than OTB चेस। अगर ऑनलाइन चेस का चले तो Nihal should be like top 5 in the world right now, but that's not how it works. If Vidit wins today, unlikely he's still in. No, he's not in. Mohit bhai, we need Shirov to defeat Rapport. दोनों को black pieces से जीतना है। Black pieces से Vidi has to defeat first of all क्या नाम है उसका यार? I keep forgetting. Fedoseev. And also, Shirov has to defeat Rapport, so very, very unlikely. Like, the chances of this happening is like less than 5%. So, yeah, very unlikely. टिकू भाई न्यू हेयर स्टाइल, यंग लग रहे हो, 45 साल का। अरे भाई क्या यार, तुम मजे ले लो यार, कोई हेयर स्टाइल नहीं है भाई। आज गैरी आ रहा है, आई नो आज गैरी आ रहा है समय की स्ट्रीम पे, मुझे पता है भाई। With is very consistent starting, so that means Saga bhai will not stream क्या today? That's weird. Oh, interesting. I think VD needs to be more aggressive as a person, which is people just. It's not about aggressive, man. He's totally playing to his style. It's all about managing his clock. I think he's not been able to manage clock. It's so obvious. Anybody who tries to manage his, if he manages to clock it, manages. ऐसे मुझे English classes book करने दो. Wait a second, chat. Hello. English classes? Yes, I would like to book a class for me. You know, like 25 times a week. Yeah. Yeah, I know I'm speaking English, but unfortunately, I sometimes forget how to. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, that would work. Yeah, so 25 hours a week is fine. Yeah, perfect. Thank you. ठीक है चैट, से मेरी स्ट्रीमिंग कल से थोड़ी 1 घंटा कम हो जाएगी पर डे, बिकॉज मेरी इंग्लिश क्लासेस आने वाली हैं। The English class is called English Classes Very Creative. Yes, Anisha, of course. Just like, you know, the best computer company in the world is computers. आपके एक ही कम है बोलना, वो तो सही करो। I am slightly confused why Vidit is Sicilian. I have seen him play a lot. Yeah, Ratnesh, I think what's happening today is Vidit was playing under a lot of pressure, but I think somehow he decided to just chill out today because it's not in his hands. And you never know, Fedoseev might try for crazy wins and Vidit might win, but the bigger problem is not Vidit winning. The bigger problem is Shirov defeating Rapport with the black pieces. That's the bigger problem there. What if a big touchdown by Samay and Saga bhai and you guys will be hunted for chess, journalism and printing fiction? That would be awesome. Of course, I would love to be there, Rama bhai. But I think I don't know if they actually require that, so it's totally up to them, of course. Yes, generic English classes, exactly. F1 is starting this month. Yeah, F1 is starting this month. Okay, F1. When is F1 starting? Okay, I don't know exactly about that one. Why is Shirov this? Okay, यार लगता है somebody else needs English classes. Shirov is an awesome guy, chat. I have to agree. Shirov is awesome. I think Shirov is the best guy in the planet. And if he defeats this guy, Rapport, then he's my favorite player of this month. Chat, agree कर लेते हैं. If Shirov defeats Rapport, then we can basically put out a community post saying Shirov is the player of the month. F1 racing भाई, of course I know भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। चैम टीवी लगा, मुझे पता ही नहीं F1 क्या होता है। Regardless, a win for Vidit will be great, as he will at least gain some rating. That's true, of course. That's true. But I actually want, you know, I actually want him to qualify if possible. Who won yesterday? Vidit lost it. भाई शिवी का ऑप्शन 5 मार्च को अनाउंस किया था, 5th मार्च को चेंज हो गया है, वो OTB होगा। It will happen on 11th March or something, as far as I know. H5 for Vidit. हाँ, अगर सुसाइड करने का प्लान है, H5 is a good start. सारे किंग को नंगा कर दो, फिर G5 फेंक दो नेक्स्ट, फिर F5 फेंक दो नेक्स्ट, and then you can go home very quickly. I wrote minus 50 also. Nice. Vidit is very considerate in starting tournament well and ending bad. Rohit, I think it's not about starting and I think it's just a coincidence. He's about starting well and ending well. It's more so about his time management. I think it's all about time management. OTB action. अरे मतलब यार, what I mean is कि मतलब OTB auction होंगे भाई. Action नहीं auction. Rapport कैसा कर रहा है? अरे Rapport भाई देगा भाई. Rapport गेम देगा तो आज ही देगा भाई. Oh no, E5 fork. Not really. E5 पे knight C6 है उसके पास. Okay, let's go to the game of Vidit. Hari sacrifice exchange. I think today everybody will sacrifice everything. Okay, Hari sacked an exchange apparently. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 for a pawn. But it's only going to get him a draw, not more than that, I think. Because black is absolutely solid, no weaknesses. Probably this should be a draw. Also on the auction of humans, very weird.
Yeah, but I think it's not of their humans, it's of their skills. So skills का option is probably fine. It's not like कि मतलब whosoever wins the like buys the players like चल भाई घर पे कल 5 बजे झाड़ू पोछा ये थोड़ी है मतलब it's like मतलब उनके skills को hack कर रहे हैं ना. I think psychology, in fact, it's better because they get a better price for it. Otherwise, directly quote करेंगे तो nobody would buy it. Yeah. AG qualified. Almost AG needs a draw by. I think psychological as well. Vidit lost to Rapport in last seal, then Group 1, then yeah, I agree with you, Ashbhai. That's also going to play in his mind. I think Rapport he has a terrible record recently, so for sure he'll play on his mind for sure. भाई Queen पर लगा दो, cause life is unfair. भाई क्या लगाना है Queen पर? किस चीज का ऑक्शन है? अरे ऑक्शन भाई सीओबी का. आज वॉचिंग कम है, ऑफ कोर्स यार. आज nobody thinks कि VD can win this one. To be honest, even I think it's unlikely. But I have faith, it is possible. So I will of course stream the entire game, चाहे जो भी हो. बाकी देखते हैं अब किस्मत के ऊपर है भाई. भगवान के हाथ होगा VD के सर के ऊपर तो भाई हो जाएगा, वरना नहीं होगा. I think Rapport को कुछ चमत्कार करना पड़ेगा. लाइक कुछ ब्लंडर मारना पड़ेगा, तब जाके कुछ पॉसिबल है. What if Anish loses? If Anish loses, then I think who was second there? I think I forgot who was second in Anish's group. It was Vitugov. Oh, Vitugov से खेल रहा है. Oh, Anish is playing Vitugov. So if Anish loses, then it's a tie break between Vitugov and Anish. अरे crazy भाई. So आपस में मैच हमका nice. छोटा टिको रिटायरमेंट ले चुका है भाई आज रात के लिए. Shirov beating Rapport is difficult. It's very difficult, man. It's very difficult. Anish game is this one, bhai. I think it'll end in a draw. At least it's very fair, yeah. Vitugov has his chance to defeat Anish and win. He has the white pieces, so he has good chances. But VD के chances बहुत खराब है. First of all, he has to defeat Fedoseev with the black pieces, which is still possible. But I think Shirov का Rapport को हराना बहुत difficult है. I think it's time to get up with match. Take the channel. I think it's not like कि VD का game is the channel thing, but he is the player from India who has the best chances, and he's also down to earth, so I fully support him. It's not like he's some Hikaru or Karyakin, so he's absolutely down to earth. He's a great player, and he's the only Indian of 27 who's doing well. At least Harikrishna is not doing well. Anand sir is not playing, so he's the best guy India has, and I'll always support him, I think. Pinned comment, भाई. Can VD win Tata Steel? अरे भाई जीत जाएगा Tata Steel. भाई हम पैसे खिलवा के 12 के 12 बाकी प्लेयर को बाहर निकाल देंगे, तो फिक्र मत करो. Lil Tico क्या यार? Lil Tico is busy, chat. He has some work to do tonight, so he's not free right now. Sorry about that. Does VD choke when playing hard players? I don't think so. I think it's all about time management. ऐसा मुझे लगता है at least. Hikaru distract नहीं यार. Hikaru can be a bit egoistic sometimes, but I think he kind of deserves it as well. I don't know if that makes sense. Auction कब करवाना है यार? आप बता दो. Lil Tico is busy sus. I think Vidit will get nervous and play top 10 players. I really see him beating them down. Yeah, but that's kind of normal. Yeah, it's kind of logical. Defeating top 10 players is not easy. It's very rare. Like top 10 players barely lose to some top 10 players even. So it's very difficult to defeat them. Yeah. Grand Prix से कौन दो qualify होंगे? I think अभी तक बताना मुश्किल है. But so far the top 3 candidates are clearly like Hikaru and Aronian. I think इस tournament से so far I think we've seen Anish Giri do really well. चेस क्लिप स्टार्ट करो. अरे भाई पहले असली चैनल तो चल जाए. नॉट रेयर फॉर एमसी. 12 प्लेयर 14 प्लेयर होते हैं ना. हाँ बट एक प्लेयर तो वो खुद है और एक प्लेयर तो मैं खेलूंगा ना यार. मैं भी तो खेलूंगा कैंडिडेट्स बार. सॉरी whatever it is. Lil Tico is busy making COB6 anthem. Yes, that's the reason why he's busy. Exactly. Can Vidit संतोष गुजराती qualify? यार तो नील नितिन मुकेश वाली बात कर दी आपने. He can. But I think it's almost impossible. I have to admit it's almost impossible. I will not dangle a dream in front of your heads and take it away. It is almost impossible. I think Shirov has to first of all win as black. And the opening he has gone for does not gives him very less chances to do that. But let's see. And then VD has to win as black. So दोनों के chances बहुत difficult जीतने के black से. एक सारी ग्रुप्स के लीडर्स बता दो about MVL. So pool A में tie है chat. I'll show you the leaders right now. Pool A देखते हैं. Let's start with pool A. In pool A chat, as you can see, or as you can't see actually, but now you can see, it's Shankland and
Dimitri, and they can tie it for first. And also backward is 2.5. So anybody can qualify from it. We don't know who will qualify in Pool A. Pool B में अगर जाएं, so very obvious Anish Giri. He just needs to draw against him to go up to qualify. Most likely Anish. Even if he loses, he will still have tiebreak. So also cool. Then Pool C, you have Rapport against Vidit. I think Rapport has to lose this and Vidit has to win this to get a tie. Otherwise, it's Rapport. And Pool D, it's most likely MVL because he's half a point ahead. But yeah, anybody could come back. MVL could lose, so it's not clear, but most likely MVL. So these four are the players. Let's go back. Hey, Kingway. Jidana. Anyways, okay, let's go back. Yeah, we are back now. Yeah, कहाँ थे हम? Do you have a child? Yes, yes, भाई. It's not Gauri. Are you? ये है क्या है भाई? पहले Levon था, अब Rapport है. But if VD wasn't, I would like to see Levon and Rapport qualify. Yeah, I would love to see Levon and Rapport qualify, but I want VD to qualify. But it's not in our hands now. It's totally in the other players' hands. भाई कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट बोल दो भाई. किसी से कल मैथ्स एग्जाम में पेल देना भाई, पूरा 2+2 5 लिख के आ जाना भाई. क्रेजी पेल देना कल पेपर में भाई. आप 12th को ऑक्शन में जाओगे क्या भाई? मैं क्यों जाऊंगा भाई, मैं थोड़ी खेल रहा हूँ. Adopt Hikaru in bullet, yes, and I will adopt Usain Bolt in running. Then I will definitely adopt Hikaru in Nalski in bullet as well. Then probably Agassi in classical chess. उसके बाद Sachin Tendulkar और विराट कोहली in cricket for sure. अरे अक्षय भाई, thanks for the cricket भाई. Thanks for samosa, चाट स्पाइसी चटनी खाकर मजा ही आ गया. Hope you're fine. I'm fine भाई. कैसे हो तुम? बताया कैसे हो? Thanks a lot यार. Thanks a lot for the super chat and the kind words. समय प्री शेड्यूल स्ट्रीम, क्या बात कर रहे हो? कौन सी वाली? अच्छा, कस्पारो वाली. मेरे को लगा भाई सीओबी वाली कर दी. मैंने कहा व्हाट रियली? अभी से ही? अभी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है. बट सागर भाई, अच्छा आज आई थिंक अमृता कमेंट करेगी, कमेंटेटिंग करेगी वहां पे. इवन उसका ट्वीट देखा? अरे देखा भाई मैंने. कहता चेस बड़ा आसान है, मैं इसको बोलो खेलने के लिए. समय प्री शेड्यूल स्ट्रीम नाउ एट 8:15. ओके, इंटरेस्टिंग भाई. लगता है हमारी वॉचिंग आज बहुत ही कम रहने वाली है. सीओबी कब से? सीओबी 22 to 27 मार्च. एंड उसके लिए भी ऑप्शन होंगे आई थिंक 11th को. C5 with it, yeah, C5 is possible. Also, bishop f8 makes a lot of sense. पहले रुक को एक्टिवेट कर लो. We also with it and want him to win, but आप तभी स्ट्रीम करते हो खेलता है. I just want to stream other main streamers also because you are. Of course, bhai. The thing is, the thing is, I would totally stream if Nihal is playing some big event, if Harikrishna is playing some big event, or even Plug is playing some big event. Because the thing is, they are not. That's the issue. Nihal is playing some random tournament in France, and then Harikrishna played the national, which I streamed as far as I could. So वो भी है ना यार. They have to play some important tournaments. Otherwise, कोई stakes नहीं है. मतलब if I win कल को गली का tournament, I will not stream that one. Okay, they are playing important tournaments, but it's not like कि कोई कुछ खतरनाक stake पे है. Apart from rating points. 12th तो किसी ऑप्शन है भाई. 12th को भाई मेरी किडनी का ऑप्शन होने वाला है. जरूर join us. ये हर्षित भाई क्या हाल है? Whatever happens, VD has become a more daring player playing e4. So high hopes in future. I agree. I think he should stick to 1e4. He's done really well with 1e4 nowadays. Even though he lost yesterday, I think his results with 1e4 have been really good. What if VD goes God mode like he went God mode against Kramnik? Bhai, if VD wins today and if Shirov wins today, अगर ऐसा हुआ भाई तो मैं स्ट्रीम पे पक्का नाचूंगा भाई. Confirm if that happens. Confirm. अगर ये चमत्कार आज हो गया तो भाई it will be crazy. ये बहुत अनलाइकली, सो अनलाइकली. मतलब इट्स मोर लाइकली कि एलियंस विल विजिट अस टुडे देन दिस विल हैपन. बट या इट्स पॉसिबल. कल डार्क वेब विजिट किया नहीं यार. मैं डार्क चीजें करता नहीं यार. मैं सिर्फ लाइट चीजें करता हूँ बहुत. जस्ट लाइक माय डाइट. शिरो भाई थोड़ी सी हेल्प कर दो. आई थिंक शिरो से रैपर से हेल्प मांगने की जरूरत है मेरे को. शिरो तो हेल्प करेगा. शिरो का ही बेनिफिट है गेम जीतने में. But the thing is, when Rapport offers a draw or a repetition to Shirov, Shirov has no incentive to play on. That is the issue I have here. VD is Gujrathi. Why is his short form VD? Then why not VG? Because Vidit is VD, bhai. I think that makes sense. Greedy VD, it rhymes. Yeah, that's why it's VD. What move is it? 11th move. 11th move for VD right now. And it should probably go D5. Yeah? Takes claim in the center. That makes a lot of sense. इलोन कौन सा ट्वीट है? अरे कोई था यार, किसी उसका ट्वीट किया था कि चेस इज वेरी इजी, बट नाउअडेज इट्स विद कंप्यूटर्स इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस. Where do you see Indian players in 5 years in terms of candidates or what? I think in 5 years, in fact in 4 years, I think probably you will see Agassi at 2700 plus, VD being there still. Then you will have Nihal at 2700 plus, probably Prag there as well.
and Mukesh as well. I think we'll see like at least like हमारी इंडिया की Olympiad team 5 years from now will be so strong कि मतलब I think we will be the favorites to win any Olympiad for sure. Because I think at some point Hikaru will probably get rid of his classical ambitions. Caruana will be tired of challenging Carlsen and getting wiped off. He might quit chess. Then Aronian is one of the oldest there. He might also not play chess too much. So and then Indian players will come to the top. We need to win every game from here. भाई एक ही गेम बची है भाई. Every game कहाँ से आ गई? एक ही गेम है chat. This is the last game of this tournament. If VD wins and if Shirov wins, then he goes to the tiebreak. Otherwise, not. In 4 years, no, I mean like not in 2700 plus नहीं भाई. मतलब he will be challenging everybody for the world championship. 2750 plus I'm saying. Shirov has to win. Shirov has to भाई. Shirov भाई. I know भाई. Please भाई please. शिरो भाई आज अपने पुराने जमाने के गेम याद रखो भाई. कैसे तुम कस्पारोव को नानी इंदला करते थे, कैसे तुम आनंद सर को पेलते थे, कैसे तुम क्रामनिक को तुमने धूल चटा दी थी भाई. याद करो भाई, याद करो वो दिन. हेलो भाईजान, भाईजान ये क्या है भाई? Where you see yourself here only with a new gaming chair? अरे तोज भाई मेरी क्यों ले रहे हो भाई यहाँ पे? ये क्या प्रेडिक्शन पेंट है? हाउ डू यू नो भाई? ये कोई है भाई बंदा, वो बोल रहा है 24th मूव में. Let's see भाई 24th में पॉन अप है कि नहीं. I think we'll have to wait for that. Do you think we talk to Shirov before the game to play on a bit? I don't think so. Of course he might have passed on a message, but I think usually the chances are so low कि मतलब I don't think so VD will do that, but it's possible. Gary will diss Sergey in Samay stream. I hope so he does भाई. अगर ऐसा हुआ तो मैं समय की स्ट्रीम खोल के यहाँ बैठ जाऊंगा because I totally want to watch him diss like अगर ऐसे ये चीज इंटरेस्टिंग है भाई because we'll see Samay and Gary both don't like Kraken. I don't like Kraken. I literally feel like going to Twitch and watching Samay stream there because I hate that. Okay, not hate, but I don't like that guy. Pre-ranging game is not easy. नहीं, वो pre-ranging game की बात नहीं कर रहे. What he's saying is he will ask Shirov to play on and not agree to a draw. समझ रहे हो? Like not agree to a draw with a repetition, not like to pre-arranged games. How can I play chess tournaments at 12 years? Okay. You can just go to some ASU.in and check out tournaments. आज दो streams खोल कर देखूंगा. Will you to think that every Indian action G 2750 it could be someone filled out? No. What I mean is I think Nihal, Arjun, Vidit, and Prag. I think Nihal, Arjun, Vidit, and Prag, these four will probably be 2700 in the next 4 years. But I think who will reach the world championship? Probably one of them. Like one of them will be the guy who will play candidates, not more than one. It's very unlikely कि all four will reach the candidates. So I think one of them will be the guy who will reach there. But in terms of Olympiad team, I think 2700 plus 4 players हमारे पास होंगे ही for sure. I think 4 years from now for sure. 24th move 2 pawns up guaranteed. अरे भाई ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है भाई. जो पहले बंदा बोल गया वो उस बंदी की बात मान जाएगी. Does any super team have an aim to become a world champ because like there's nothing to chase and their rating? Yeah, exactly. Of course, bhai. They all want to become a world champion, but it's kind of Carlsen is like सबका दादा बैठा हुआ है पर. It's like imagine you are like Fritz 13 at this moment. Imagine you're Fritz 13. You want to become the strongest engine. You had those dreams at one point. You were the strongest maybe at one point as a child. But now there is Stockfish. There is Alpha Zero. There is Leela. You can fight, you can do whatever, but it's very unlikely you will reach that stage. Will Samay become GM in next 20 years? If he dedicates his life to it, yes, but he doesn't need to. Why not Mukesh? Mukesh also, yeah, that's what I'm saying. No, इतने सारे लोग हैं मुझे नाम भी याद नहीं है भाई. वही तो कह रहा हूँ. मुकेश भी है, रौनक भी है, बहुत सारे हैं भाई. But 2750, I think max to max 1, and if something magical happens, then 2. उससे ऊपर तो impossible है भाई. Any chance of Rapport losing? Yeah, I mean objectively there's a chance of him losing. And the position is also not so simplistic, but yeah, I mean, I don't know, man. Anything would happen. If he just takes on D5, takes on D2, yeah, I mean, it could be a draw, but let's see. Where do you see me in 4 years? Not in my chat for sure, or either in my chat trolling again and again. Gary will diss again in some stream. I hope so, why he does. I hope so. Check fast, Shirov better. अरे भाई कुछ भी Shirov better. कहाँ से better? काहे का better भाई? Equal तो है. How will VD qualify for next round? The only way is chat. VD has to win this game, and Shirov has to win this game. Highly unlikely. Does Rapport need to play for a draw from his perspective to win in the pool? Yes, exactly. He needs a draw. He's white. He needs a draw.
Shirov is the lowest seed of this tournament. It's super likely he just draws and wins. So it's very unlikely for VD, and that's why I think VD went for the Petrov. He did not go for some very ambitious moves. But you never know, man. Shirov won yesterday against, I think it was Fedoseev. So he can surprise people, and it is possible. It depends on whether he wants to play. That's the only question. Does he want to play on, or does he want to draw and go home? It totally depends on mindset, yeah? Let me go to the game of Harikrishna for once. By the way, he is not blunder, bhai. यार क्या है ध्रुव भाई, कितने स्कैम भाई, कितने स्कैम। वैसे ध्रुव आपकी फोटो में तो कोई ओके इंटरेस्टिंग। लेट्स गो टू द गेम ऑफ वीडियो अगेन। मुझे फोटो लगा अभी मैं किसी जर्नलिस्ट की फोटो लगी मुझे वो, बट अपेरेंटली नॉट। शिरोव इतना भी बुरा नहीं है भाई। अरे बुरा नहीं है भाई, थका होगा ना बेचारा यार, उसके जीतने के चांसेस है नहीं। वो ड्रॉ के घर जाए भाई, कॉफी पिए, वो क्यों खेलेगा? दैट्स द पॉइंट, नो? लाइक साइकोलॉजिकली इमेजिन शिरोव्स पर्सपेक्टिव हियर, he has nothing to gain from this. He can draw, go home and chill. 2 साल वेट करना पड़ेगा वीडी के लिए। 2 साल तक तो आई थिंक they'll not only be VD, but in fact you'll also have Arjun, you'll also have Nihal right there, I think. Do you think Nihal will plug like Gary and Karpov in the upcoming future? Very unlikely. I don't think Nihal and Prag both will reach like 2780 or 2800. It's very unlikely. रेटिंग मिलेगी नहीं चाहिए आपको यार, मुझे चाहिए भाई, बट शिरोव को नहीं चाहिए होगी ना। शिरोव इज पास्ट हिज प्राइम भाई। इमेजिन यू नो ही इज लाइक, शिरोव की एज, लेट मी टेल यू शिरोव एज, शिरोव चेस एज। रुको भाई, अरे भाई ये क्या है भाई, चेस आगे क्या है भाई, चेस रुको, शिरोव एलेक्सी एज, yeah, so he's 50, yeah, he's 50 already, so he's definitely not aiming to become the next world champion. And if that's the case, in that scenario, and he has no chance to win here, so it's not like he has huge motivation to play on. अल्फा बोल दो, नई फैशन टर्म है। नहीं यार, मैं फैशन में उतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसे भी। एनीवेज आज अगर शिरोव जीता और फेडोसीव हारा, मैं दोनों को 1 करोड़ रुपए दूंगा। वाह श्लोक भाई, वाह वाह वाह, क्या ही मतलब ब्लेटेंट वो सुपारी दी जा रही है। यो डैडी भाई क्या हाल है? ओपन व्हाट्सएप वंस, माय व्हाट्सएप इज ओपन भाई। क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हो? If I could bet, then Nihal and Arjun would be 2-5-0 out of the. Yeah, even I would bet on them, Dhruv. Even I would bet on them. Younger than Ansa, yeah, but even Ansa is not trying to be world champion right now. समोसे का लास्ट भाई, समोसा हमने खूब खिलाया भाई, कल उसने धोखा दिया यार। Yesterday Rapport let me down chat. मैंने समोसे भिजवाया उसको चटनी के साथ, टेस्टी, उसने खा भी लिया और तब भी हरा दिया वीडी को। Not done. VD should more probably go for drawing lines against stronger opponents like 11 Rapid. Yeah, but I think it's not like they will still not push. I think drawing lines के लिए खेलोगे तो you all never have any chances of winning. Gukesh then Prag, yeah, possibly. समोसे भेज दो भाई यार, स्विगी में काम करते हो, समोसे हमसे मांग रहे हो भाई, ये कैसे चलेगा डैडी भाई? गलत समोसे चलेगा लगते हैं। अरे नहीं भाई, सही वाले हैं। अगली बार दूध कोला ही भेजना। अगली बार में भाई उसको कुछ नहीं भेजूंगा भाई, खाली एक नोट भेजूंगा कुछ। भाई ये प्यार तूने क्या किया, ऐसा कुछ भेजना पड़ेगा भाई। अभिराज जी नहीं बोलूंगा भाई। आई मीन यार, ये सारे स्कैम हम सागर भाई के साथ 100 बार देख चुके हैं भाई। लाइक कुछ नया, कुछ मात्र नया लाओ भाई, कुछ मजा है। अगर स्कैम ही फंसे तो भाई मजा भी नहीं आया इसमें। ट्रू कॉलर पे नंबर निहाल का कॉल कर दो, दोनों डिस्क्वालीफाई। अच्छा नाइस। Daddy Bhai is a very weird relationship. This dynamic needs to be explored. Please explore it on your own personal time. You are fully to do so. Damn, you sing so well. Yeah, I know, man. मुझे बताया था, बुलाया था मुंबई उन्होंने जादू पोछा मारने के लिए। अनीशा रॉय, who's your? Oh my God, अक्षत भाई ने कुछ स्टेटमेंट पूछ लिया है। I can't comment on it. Why not? Most of top young players from India, and except Aliza and Asipenko, no such young players perform that well. There are, Tanmay bhai, there are. It's not just youngsters. There is, for example, Netherlands का ही देख लो. You have क्या नाम है उसका? Jordan Van Forest है. You look at Russia, there are like at least 5-6 youngsters who are right there at 2680 plus level. You look at US, there are so many 2680 plus players. You look at so many countries, हर जगह है यार, हर जगह है। आज समय 11 सर के साथ स्ट्रीम है। आई नो भाई, आई नो है। उस टाइम हमारी वॉचिंग सिंगल जाने वाली है शायद। मैं देख रहा हूँ
और गैरी खुद देख रहा है भाई कौन है भाई ये नूब मेरे होते हुए स्ट्रीम कर रहा है। भाई पैसा देके मॉड बना सकते हैं? नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली नो भाई। पैसे दे, अगर आज वीडी जीत गया और शिरो जीत गया ना, फिर बना दूंगा भाई बट पैसे देके नहीं यार। वीडी की नेक्स्ट सिलेक्शन कब होगी? क्या है यार चैट? आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरी कॉफी में मक्खी चली गई यार। व्हाट द फक डूड, ये गर्मियां मुझे इसलिए पसंद नहीं है। आई हेट समर्स। ये मक्खी कहां से आई? व्हाट द फक शिट मैन। मैं आई एम ओपन टू ऑफर डीएम विद योर टैक्स डॉक्यूमेंट्स। अरे नहीं नहीं। हैव यू हर्ड ऑफ 26 यंगस्टर माचू जी? माचू जी का नहीं सुना मैंने यार। भाई ये क्या है? लिटरली आई एम नॉट किडिंग, मक्खी चली गई। मैं देखा कुछ गया, मैं देखा मक्खी है। मक्खी कहां से आ गई यार? मक्खीज आर बैक चैट, मक्खीज आर बैक। Apparently monkeys are back, so this is the official statement. Summer is back chat. This is summer is back, summer is back. अगर आप वीडी फक क्यों बोल रहे हो? टी पे देख रहा हूँ यार। फक आयुष, मुझे पता नहीं है फक क्यों बोल रहा हूँ यार। आई डोंट नो आयुष भाई, why am I saying the word fuck? I mean it could be because fucking monkey went to my fucking coffee, but I don't know भाई। भाई अगर रैपोर्ट हारा और वीडी जीता तो कुछ चांस है? हाँ फिर चांस है भाई, बट लेकिन दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। इमेजिन करो यार, रैपोर्ट को हारना पड़ेगा वाइट पीसेस से, सो अनलाइकली। अगर वीडी जीत गया और शिरो भी, तो मेरे को एक समोसा। देखो चैट, आई प्रॉमिस यू, इफ वीडी विंस, हाय द रीनिंग चैंपियन ऑफ चेस ऑन यूट्यूब इंडिया हियर। मुझे लगा लिखेगा हाय द रीनिंग चैंपियन ऑफ चेस ऑन यूट्यूब। उसने हियर लगा दिया आग में। भाई ये क्या बेशर्मी वाला प्रमोशन है फकर भाई, ऐसे कैसे चलेगा यार? अभी जाके समय की स्ट्रीम में जाने वाला है वहां पे जाके। भाई कुछ सॉल्व वॉल्व कर देना गैरी के सामने। भाई पिछली बार तो बेइज्जती कराई थी भाई। भाई इस बार तो अच्छा कर लेना भाई, इस बार पेल देना भाई, सारे आंसर कर देना। भाई लूला के साथ सब बैटल कब है? भाई लूला बड़ी स्ट्रीमर हो गई है यार, अब मुश्किल लग रहा है मुझे। अब तो मुश्किल लग रहा है लूला के साथ स्ट्रीम। भाई गैरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओहो नाइस नाइस। मैं अगली बार तू भी किसी को ले आइयो, जब मैच होगा ना सीओबी समय के साथ, तो किसी और को उठा के ले आइयो इस बार, जिसको समय एडमायर करता होगा, बिकॉज वी आर बोथ गुड्स। नाइस भाई, नाइस 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 नाइस। लूला इज वेरी ब्यूटीफुल। नाइस कृष्णा भाई। आई मीन यहाँ पे आज तो कुछ क्रेजी चैट में चल रहा है। गुड लक भाई, आज टीम में पेल देना भाई, सारे क्वेश्चन आंसर कर देना भाई। कल का जस्टिफाई करना है। और वेल भाई एक बार प्रखर ओपी इतना चैट दे भाई, बनता है क्या खेला बंदा कल। जो भी बोलो, जितना ही मजे ले लो, ही प्लेड सम अमेजिंग चेस भाई। प्रखर ओपी इन द चैट एक बार। अरे अक्षत भाई थैंक्स फॉर द कॉफी। थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर द कॉफी, थैंक्स अ लॉट भाई। यस लूला इज वेरी प्रिटी, इससे अनीशा इज सेइंग नाइस। Tikku, my girlfriend is watching. You can leave a message for her in English. Okay, so whosoever is Prakhar's girlfriend, welcome to my stream. And Prakhar, maybe I should not say this, but Prakhar is very good with the ladies. And yeah, so keep an eye on him. He's very good. He's damn good. Mike Oxlong will be the next Magnus Carlsen. Okay, I don't know who that guy is, so very unlikely that will happen. हाँ तो वो सुंदर है, इसमें क्या हुआ? या बट ओके। If she is a Peter Heine Nielsen certified trainer, can anyone GM be a chess trainer? Yes, anybody could be. लगता है प्रखर भी लाइक चलो भाई अब चलते हैं हम लोग। प्रखर भी लाइक ये तो नहीं बोलना था exactly. I'm just kidding by the way. He's awesome. He's awesome. He's totally awesome. Yes, awesome he is. Prakhar is secretly in love with butter chicken. अरे भाई Prakhar is in love with Faridabad. I think the only reason he's like, you know, sometimes streaming is because Faridabad याद आती है उसको, otherwise तो US में ही है। We can't defeat Gary, वो आग बंद करके 100 डेप में चला जाता है। यहाँ की यार गैरी के उसको हराना नहीं है, उनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं बस। प्रखर चला गया भाई, प्रखर चला गया। He's like, what the F is this shit? भाग गया प्रखर भाई, भाग गया। बटर चिकन deserves all the love. You should join समय स्ट्रीम, कोई तो आंसर दे। अरे भाई अगर कॉमेडियंस की बेइज्जती होगी तो चलेगा भाई, एनएम की बेइज्जती हो जाएगी तो भाई बैंड हो जाएगी यार। मजाक कर रहा हूँ। प्रखर इज ऑसम भाई, प्रखर इज ऑसम। He fell for what is Mike Oxlong? कोई ट्रैप था क्या? अरे यार फक।
अरे अरे अचित भाई, थैंक्स ऑफ द भाई, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, अचित ओपन द चैट, थैंक्स अ लॉट यार, 1000 रुपीज पे यार, थैंक्स अ लॉट भाई। अरे थैंक्स अ लॉट यार। यार निहाल ने बॉम्ब क्लाउड खेला ओटी में, क्या बात कर रहे हो तुम? बॉम्ब क्लाउड खेला ओटी में, क्या बात कर रहे हो तुम? सही बताओ। अच्छा ब्रो, शी इज बुलिंग मी नाउ। अरे यार, you should be open in relationship, I think. Prakhar's girlfriend, I just want to say something. He's good with the ladies, but he's good with the ladies one at a time, so he's kind of loyal. That's the most important thing. So it works out pretty well, yeah. I mean, he's just because you're good with something. For example, I'm good with chess, doesn't mean I'm playing 5 games at the same time. So yeah, I'm good with it. So I'll play one at a time, put my entire focus on it. So it's all cool now. देखो प्रखर, ऐसे solve करते हैं crisis. This is how you solve crisis. आयुष में यूपीआई भाई, यूपीआई लिख रहे हैं भाई, यूपीआई भाई। ये क्या है? नेक्स्ट 2 मिनट में वॉचिंग एक्सपोनेंशियली डीके होने वाली है। कोई बात नहीं भाई यार, हमें चलेगा यार, आज वैसे भी कुछ स्टेक्स है नहीं खास। रुको चैट में 1 सेकंड में, आई विल कम इन 6.9 सेकंड्स। एंड सी इट्स 6.9। और रुको भाई, ये जो रोशनी आ रही है ना, इसको भी हटाते हैं। भाई ओके, आई एम बैक। एसएन रैंक क्रशिंग इन ग्रैंड सैची। अरे भाई ग्रैंड सैची है तो ग्रैंड सैची में तो ग्रैंड फॉर्मेशन देंगे ही ना, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। निहाल का मैच दिखाओ भाई। निहाल ने बॉम्ब क्लाउड खेला क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? डिड निहाल प्ले द बॉम्ब क्लाउड? दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या बात कर रहे हो तुम? ही प्लेड द बॉम्ब क्लाउड इन ओटीवी चेस। भाई किस नूब से मैच था उसका जो बॉम्ब क्लाउड खेल गया? यो अश्विनी, हाउ आर यू? मैं समझ गया राहुल भाई, मैं समझ गया क्या बोल रहा था, मेरे को बाद में समझ में आया। माइक जी का, माइक ऑक्सलॉन्ग जी का। कहाँ यार? वेयर इज द मैच? निहाल निहाल निहाल, वेयर द एफ इज निहाल? सॉरी, वेयर इज दिस गेम? निहाल तो सर्बिया में ही है। कहां से ओटीवी खेला, कहां से खेला बॉम्ब क्लाउड? अच्छा ये थोड़ी गेम है, सॉरी दिस इज नॉट द गेम। रुको रुको रुको, वेयर इज निहाल? निहाल सरिंग, अरे ही प्लेड द लंडन। अरे ब्यूटी यार, निहाल प्लेइंग द लंडन। अरे नाइस यार, निहाल ही डिड नॉट प्ले द बॉम्ब क्लाउड बट ही प्लेड समथिंग क्रेजी भाई। लंडन सिस्टम भाई निहाल। सो जो कहते हैं लंडन इज आउट ऑफ फैशन, दिस इज एविडेंस भाई, ही स्टिल प्लेइंग द लंडन भाई। लेट्स गो टू द गेम ऑफ रैपोर्ट अगेन। रैपोर्ट भाई पूरा स्लोली खेल रहे हैं। ही इज लाइक ड्रॉ है, ड्रॉ चाहिए, ड्रॉ लेके जाऊंगा मैं। लेट्स गो गेम विद इट नाउ। ही इज नॉट निहाल। आर यू मैरिड? यस, कुछ भी सराहना था वो, सराहना था क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे ये क्या है? निहाली गेम कहां है फिर? वेयर इज निहाल? ये तो सनन सुग्रो है भाई। वेयर इज निहाल? ओ यहां है निहाल। अरे यार शिट यार, इट्स नॉट निहाल। ओके चैट, हम यही बात दबा देते हैं। जिसने जो स्ट्रीम में भी देख के गया है वो बंदा तो लंदन में फेमस हो गया ना। हाँ सो चैट, निहाल हैज प्लेड द रन सिस्टम ऑसम भाई, ही इज गॉन फॉर द रन सिस्टम ऑसम, ही इज प्लेड द रन सिस्टम नाउ। ब्यूटीफुल ओपनिंग, निहाल गोइंग फॉर द लंदन यार। ऑसम भाई, ऑसम। सो लेट्स गो बैक टू द मेन मैच एंड क्लोज दिस शिट राइट नाउ। इससे पहले एविडेंस और लीक हो जाए। ओके नाउ वी आर बैक। सागर शाह पार्ट 2 102 मी। अरे भाई कितना 1010 करोगे यार? मतलब हम छोटे स्ट्रीमर की फीलिंग के साथ ना खेलो मुन्ना। हम क्या करेंगे रे? साहिल, becoming a world champion for Super GM is like setting a legacy. Is there any by which they can be remembered forever? Yes, by creating controversy. For example, Sergey Karakin has set a different legacy right now on Twitter. आपको मन नहीं करता गैरी सर के साथ स्ट्रीम में आने का? Yes, और मुझे मन करता है एना हैथवे और स्कारलेट जोहानसन के साथ में डेट पे जाने का। और मुझे मन करता है इलॉन मस्क के साथ एक महीना उसके सारा सीक्रेट सीखने का। मुझे मन करता है कि पूरा 10 पैक एप्स बनाने का। बट मन बहुत चीजों करता है भाई। भाई बड़े स्ट्रीमर बन गए, हमें भूल गए कुछ भी, मतलब कुछ भी। आई एम द फोर्थ फादर ऑफ बॉबी फिशर, आई एम कॉन्टैक्टिंग फ्रॉम हेवन। ओके, उसका नाम पूर्ण तो नहीं था यार, दिस इज पूर्ण नॉनसेंस। इलॉन टिक्कू से कुछ सीख के जाएगा, पोएम बन जाएगी भाई। पोएम नहीं लानी यार, हमें सिर्फ वीडियो गेम देखनी है। इफ Kraken raids you and you have 1 million subs, will you delete the channel? Of course I will not delete the channel if he raids me.
भाई बड़े स्ट्रीमर बन गए, मुझे भूल गए भाई। आर्यन नायर जी ना, आर्यन नायर जी 100 सबसे है, और ये बंदे ने हमारे चैनल पे आना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम पेपर्स। मतलब एक कागज के लिए भाई, कागज से बिजी है वो, लिटरली इमेजिन। ज्यादा ओवर एक्टिंग करोगे तो क्रैकिंग के साथ रख देंगे फॉर फ्यू आवर्स। नहीं नहीं भाई, आई थिंक, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। इमोशनल डैमेज, आई हैव स्कारलेट जोहानसन नंबर, डू यू वांट? नहीं भाई ठीक है, आई डोंट वांट अ नंबर। स्कारलेट जोहानसन, एमा वॉटसन, ओनली वन कैन बी इन योर लाइफ। नाइस। हाँ भाई प्लीज टाइम आउट मत दो ना यार, प्लीज भाई, टाइम आउट नहीं दे रहा, किसने दिया टाइम आउट तुम्हें? Will he draw it first and then it will be winning and then finally he would lose? Same story. Rin bhai, today's game is not really that important because his chances of kind of qualifying are very low. But all I'll say is कि मतलब it's a miracle, and if miracle happens, well, I think I will scream miracle like Akshay Kumar. That's all I can do. But we can hope for the best and just hope for the best. That's what it is. क्यों साहिल भाई का नाम खराब कर रहे हो? छोटे स्ट्रीमर है वो। Yes, exactly. You don't hate Kraken more than you love your channel. नहीं भाई, of course नहीं यार। हमें stream started nice. भाई हाथों को मेरे सेट टॉप बॉक्स का नाम ये क्या है यार? आपका ऑटोग्राफ कहाँ मिलेगा भाई फ्यूचर में? फेवरेट कैरेक्टर इन हैरी पॉटर, has there been a case where GM hasn't said adjust but touched multiple pieces? It has happened at the start of the game, of course. अरे नंकिश भाई, थैंक्स फॉर सुपर चैट भाई यार, 201, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट भाई। थैंक्स अ लॉट यार भाई। हाँ चैट क्रेजी है भाई, मतलब सुपर चैट में सीधा यूपीआई आता है भाई, ताकि वो क्रेजी है। थैंक्स अ लॉट यार। व्हाट इफ Kraken becomes the world champion, then I will quit chess. आज छोड़ा टिक्कू नहीं है, जीतेगा वीडी। मैं भी 3.6K से हूं, तो आप एक बार चैट में नहीं पढ़ते? क्या बात कर रहे हो तुम आशील भाई? ये कैसी बात है यार? हाँ, क्या बात कर रहे हो आशील भाई? ऐसा जाता है यार भाई। रैपोर्ट गेम दिखा दो। अरे रैपोर्ट गेम देखेंगे यार, रैपोर्ट गेम देख रहे हैं। रैपोर्ट गेम में भाई, ओहो चैट, टू बी ऑनेस्ट ये गेम थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है, बट आई थिंक इफ वाइट फाइंड्स 5-6 मूव्स एक्स्ट्रा मतलब नेक्स्ट 5-6 मूव्स, आई थिंक ब्लैक विल probably not have any chances to win. So yeah, it might end in a draw and then Vidit has no chances. Let's hope so. Prakhar to ask political questions to Kasparov. Yeah, I don't know, man. I don't know how much Kasparov will actually comment on Kraken in politics, but he might comment a bit. Because समय की audience है ना, so he's like, he would not like to. I am from 800 subs. अरे nice हितेश भाई। प्रखर versus sir, आपकी smile rating है कि I keep it up. Next 4 years we will have the 1 million subs. Thanks a lot भाई for the kind words. आज बहुत खास दिन था, 2 माउसेस हुए ड्रॉन पोजीशन में। अरे भाई यहाँ पे कैंडिडेट्स का स्लॉट हाथ से स्लिप होता जा रहा है भाई, तो हम क्या करें भाई? आप भाई मेरे माउस स्लिप हुए, आपके माउस स्लिप हुए, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड छीन ली, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए लाइफ में, बट आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देम। भाई तुम्हारी यूपीआई की डिटेल्स कहाँ है? टेंशन मत लो, मैं सुपर चैट नहीं करूंगा। नाइस यार। भाई निहाल का क्या हो रहा है? कुछ टूर्नामेंट में दिख नहीं रहा है भाई। निहाल इज नॉट प्लेइंग दिस वन। I want to play the candidates so hard. Okay, daddy is hard right now for the candidates. Interesting. वीडी के पास advantage. Really? क्या बात कर रहे हो? दिख तो नहीं advantage यार। I mean, it looks like advantage, but this is very symmetric. Not symmetrical, but very static. There are no dynamics in the position, so it's not easy for any side to win this one. आप समय के songs play कर सकते हो ना? Songs play समय के कौन से भाई? भाई डायरेक्ट गर्लफ्रेंड ही छीन रहा है, तो क्या छीने? समय स्टार्ट स्ट्रीम या चैट, समय स्टार्ट स्ट्रीम एंड कस्पारोव इज देयर भाई। किसी को यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट भाई, कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज मैं तो भाई वीडियो को देखूंगा पूरा। गर्लफ्रेंड छीन ली, वाह मेरी गर्लफ्रेंड था, मुझे पता भी नहीं, वाह अरे नाइस। I think in 2 years video will be much longer than, and I think he will be easily able to qualify for the pool. Yeah, but 2 years is a long time, and for now this is all we have. यो लक्ष्य भाई, रखा को बुलाओ अपनी स्ट्रीम पे, बुलाएंगे यार। You said opposites casting are very attacking. It is attacking, but the issue here is white has an extra pawn. He has an extra pawn on c3, and that kind of defends the white king. This is the big issue. If this pawn was not here, I would say black has good attacking chances, but it is there, and it does not allow black to go b4 or d4. अरे पैफकेल भाई, thanks for the super chat भाई. Hello, thanks for great stream as always. If not VD, who will you support for candidates? I will support Anish Giri. There's no doubt. Anish Giri is my favorite.
And in fact, even if VD qualifies, I would still have a dilemma to choose who do I support among VD and Anish. So I think my full support would be to Anish Giri. Which city is more likely to host Olympiad? I think Delhi and Mumbai are the most likely because major airports are there. Gary आ रहा, अरे बिल्कुल भाई, चैट गैरी को चेकआउट करो भाई, कोई स्ट्रेस नहीं भाई. आज लिल टिक्कू को रैपोर्ट के किंग पे बैठा दो. ट्राई करें क्या, वैसे बनता तो है यार. देखो, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग. इट्स नॉट लाइक कि मतलब कुछ और हो सकता है. तो वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू मेक लिल टिक्कू सिट ऑन रैपोर्ट्स किंग, बट टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इफ VD हैज टू विन टुडे, ही हैज टू डू इट हिमसेल्फ. आई थिंक दैट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. What are chances of VD qualifying? Ambarish, very low. First of all, VD has to win today with the black pieces, which is still possible, I think, because Fedoseev has no motivation to play right now and he is not in great form. But the difficult part is Alexei Shirov has to defeat Richard Rapport with the black pieces. That is the difficult part and very unlikely. यारी वाली स्ट्रीम्स हद से फॉर्मल लगती है भाई, तुम छोड़ो ये. Just check out the testimony of any old chess player who played against Kasparov. Bhai, it was like, you know, your principal assaulting you verbally in your class in second standard. Bhai, सुसु निकल जाता था यार. इतना खतरनाक, इतना intimidating player था Garry Kasparov, and no wonder it's very formal. व्यास लिल टिक्कू को रैपोर्ट और फिर से किंग पे बिठाओ. क्या बोलते हो, बिठा देगा चैट? लिल टिक्कू को बिठाना है क्या? आई थिंक लिल टिक्कू को जरूरत है यार. लिल टिक्कू भाई आज रात का अपना एक्साइटमेंट छोड़ के लगता है ओपोनेंट किंग को डिस करने के लिए आ रहे हैं मार्केट में. लेट्स गो लिल टिक्कू भाई. ओके, लिल टिक्कू इज रेडी चैट. लिल टिक्कू इज रेडी. चलो भाई, मुंह काला कर देते हैं दोनों किंग का मेरे शर्ट से. डोंट वरी, गैरी प्लेइंग 40 minutes. Oh, nice. But with Samay, I think Kasparov is less intimidating. Now, I think it's not just with Samay. Overall, nowadays, he's not that intimidating nowadays because he kind of lost his spark. You know, he saw how he got crushed even against Vishisor and all these youngsters. So automatically, you lose that confidence. And now he realizes he's not the strong player he used to be. And yeah, Lil Tikku, I summon you now. बिल्कुल भाई, डैडी ने बोल दिया तो summon करेंगे. ये क्या था भाई? छी. What's the tie break? My tie break is a couple of rapid games against each other. By the way, following piece of your bestie Karakin, उसने कुछ और ट्वीट किया करना यार. I avoided Twitter for a couple of days. Hopefully, he's not tweeted anything nonsensical since then. I'm really hoping for it. But I'll quickly catch up myself on the daily tweets of Sergey Karakin. हाँ, कुछ ट्वीट किया नहीं है भाई उसने. कुछ ट्वीट किया नहीं है. Oh, he tweeted, I know someone who has been there and he's joining my stream on, please do. If you've never been here, are you sure you can judge any of them from Russia supported country and my president? Nice. I think, yeah, he has tweeted a couple of times since then, so I missed those tweets, but yeah, I'll check it out later on. Yeah. Envy surprising out of form his score. Yeah, he kind of held on in the worst game when Envy was losing. He drew those games and finally managed to win. Karakin is my favorite ex-chess player. Is my ex-favorite chess player, I would say, or actually ex-favorite ex-chess player. So Twitter war, exactly why, exactly. Shout out to Samay वैसे यार for speaking his mind, because not many chess players have said that. I don't know of any top streamer or chess player who has actually put his opinion forward on this. मतलब top में मतलब I mean anybody who has like lakhs and lakhs of subscribers. Nobody has, you know, come out and, you know, either supported or dissed Karakin in either way. So hats off to Samay. In my honest, every stream should have a dedicated bandwidth of 10 to 20 minutes for Twitter drama preview. Yeah, I think trailer, yeah, trailer. आज देखिए Karakin ने ये ट्वीट करा, then Twitter scroll. What did Samay reply? Oh my god. Queen d5. Yeah, I'm not sure how I feel about 8x b4. So I think we can play moves like knight to e4 here. But let's go to the game of Vidit though. I think until Vidit wins, looking at the Shirov game is kind of useless. So let's focus on the Vidit game. Hikaru has straight up cussed. Yeah, but he did not. I mean, he could have tweeted out something. I think stream में बात खो जाती है. Like अभी हम लोग 150 लोग देख रहे हैं, किसको पता लगे मैंने क्या बोला? Nobody knows.
You should check out Khan sir's video on the whole issue. Very informative. I'll check it out, bhai. समय के लिए chess team matter नहीं करती भाई. हाँ, that's good. No, he spoke out. I'm very happy about that. I don't think you are right on this. Not as many streamers have supported Ukraine and spoken against Sergei. No, what I mean is, Satyesh bhai, there are a few who haven't. I hope you understand my point. Like, there are a few who haven't because of fear of, alienating some audience. I wish everybody spoke on this. Many have. Ben Feingold has spoken. Samay has spoken. Even Chess24 has spoken. But I think not all of them have spoken, and that's a surprising part. Like, हर किसी को बोलना चाहिए इसके बारे में, right? I think that makes sense. I have seen the video by, I think, a couple of people. एक मैंने वो real life lore का देखा था on this Russian institution, and also one more guy I saw. Johnny, no, what's his name? I forgot that name. That YouTuber from Ukraine. I forgot his name, I think. Explain move, engine move, B5. Yeah, so chat, B5 makes a lot of sense. You want to open up. Yeah, Johnny Harris. Thank you, Johnny Harris. Yes, exactly. I saw the video as well. So B5 makes a lot of sense. As we discussed, we want to attack the white king. And in that scenario, B5 would be a very good idea, because B5, if black were to take the pawn on B5, let's say, then I can simply play moves like C4 or even just A6 to kind of completely open everything. सब कुछ रंगा कर दो, सब कुछ कच्चे भी फाड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना. We have B and A open files, and that's what we basically want. Now we take on A6. Let's say bishop takes, rook takes, and you can see black has the center, black has the open A and B files, and VD will be almost winning this game. So yeah, let's see what happens. Benko camps, exactly. But then even our Indian stars who speak in Sergey, don't you think? Yeah, Ratish bhai, I think everybody should. I think everybody should. I don't know why people are not speaking, because the thing is, people who have only commitments to chess, they don't want to alienate any audience. It kind of makes sense. I don't argue with Vishisha, because Vishisha never, gets into controversy. So I don't expect Vishisha to speak out. But I expected few more people to speak out, which did not. This is a bit disappointing for me. But I think it's hard to say, man, what's the reason? Because personally, judge karna very difficult hai. They might not have an opinion on this. So it's very hard to judge, but yeah. Don't worry, Gary will arrive in less than 40 minutes. Yeah, I think the thing is, the only issue I have is, it could have been resolved in, there are some issues with Donbass and whatever it is, but it could have been resolved in a better way. That's all I feel. Anyway, chat, let's not get into Karakin. यार मूड खराब है यार. Literally ना, मैं Vicks खा रहा हूँ, मेरे को taste literally पता नहीं किसी चीज को और का आ रहा है. So let's move on. I don't think players should. Yeah, exactly. They should not. But then Karakin got into it. No, he was the one who started it, and he's promoting this like crazy. We said Karakin पे react करना does not make sense. Exactly, it does not make any sense at all. Hikaru spoke 222. आप कह रहे हो इंडिया अपनी रिलेशन, भाई इंडिया रशिया की तो बात ही नहीं हो रही. मैं सिर्फ करियाकिन की बात कर रहा हूँ. आई हैव नो अथॉरिटी ओवर पॉलिटिक्स राइट नाउ. द ओनली थिंग आई एम स्पीकिंग अबाउट इज करियाकिन, नथिंग एल्स. एनीवे चैट, कच्चा फाइट गैम्बिट तो नहीं है भाई, बट लेट्स सी व्हाट वीडी प्लेस. लेट्स गो टू द गेम ऑफ हरिकृष्णा वंस. कि कर क्या रहा है वो. Oh, he is doing fine as of now, but it will be hard to win this one. I think what he basically wants is like the rook to come to e6. If possible, that would be really good for him. Or at least to get a pass pawn on e6, that would be really good as well. I mean, other players missing him or whatever, they can avoid him and destroy it. Yeah, they can, Amriva. They totally can, but I think it's kind of difficult. No, imagine you are a player from Europe who has family or friends in Ukraine. It's very difficult to not speak out also. Even I found it very difficult because it was just, his opinions were so, directed towards getting into politics for Putin. Ki, it was so obvious what he's trying to do, and it was so weird. What are AG's chances qualifying? Almost guaranteed, I think. Almost guaranteed. Living side comments of Karakin, do you think of him as a player? He's talked to him for long. What do you think of this player? I think as a player, I would say he's good enough, but I think he's also been on decline, yeah? He's been on the decline, so I don't expect him to, for example, win the candidates. And I think this will be his last chance there, because even if he plays, of course, because I think his ambitions are getting into politics now. That's very obvious. He wants to get into politics. So in that respect, he will not put so much effort into chess, I guess. At least that's my perception.
कराकिन ऐसे नाम रख दो। वही चैट। ओके लेट्स मूव ऑन कराकिन भाई, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम कराकिन, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नवनीत भाई मुझे पॉलिटिक्स के ओपोनेंट पूछ रहे, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दैट, ऑल आई नो इज कराकिन वाज रॉन्ग। बाकी एनीवेज लेट्स मूव ऑन, let's go to the game of Vidit now, and yeah, still waiting for Vidit's move here. And chat, VD is again low on time. This is the issue. I'm telling you, this is the only issue for VD in this entire tournament, in this entire year in fact. मतलब अगर वो टाइम मैनेज कर लेता ना, I think he would have crushed in Tata Steel, would have crushed in both the Grand Prix. He played some crazy games. I think he needs to work on this for sure. There's no doubt. But let's see, man. Hopefully he will come back and work on it. I'll try to bring you on stream someday. I'll ask him if he thinks this is an issue or not. भाई लिल्ट को पोजीशन चेंज करो। अरे हाँ, लिल्ट को पोजीशन चेंज करना पड़ेगा यार। लिल्ट को कहाँ खाली स्क्वायर बैठा हुआ है। लेट्स रिमूव लिल्ट को, क्या बोलते हैं, रिमूव कर दे चैट? आई थिंक वी शुड रिमूव लिल्ट को बिकॉज वी हैव किंग्स ऑन 2 डिफरेंट पोजीशंस। लिल्ट को डांस करके हिल के थक जाएगा भाई, इतना नहीं हिल सकता लिल्ट को। आई थिंक यू हैव टू रिमूव हिम। लेट्स रिमूव हिम नाउ। लिल टिको को हिला दिया भाई। सो उसको हिलाने के बाद अब हम खिलाएंगे बोर्ड। World Cup runner-up, he is declining. Yeah, Champ TV, but the thing is, he knows how to play in these league tournaments. But I think he does not have the motivation right now because, as you can clearly see, he's trying to get into politics, and I don't know, man. Before giving your pep talk. No, Lil Tico is motivated. He's getting some action tonight, so he's all fine. Let's go to the game of Vidit Gujrathi now. And Vidit is still thinking. I think B5 makes a lot of sense. Well, D4 looks so logical, but D4 is not the great move here because White has one more pawn on C2, so it's not a pass pawn. And now he will go Bishop G5, and he will go Rook E1 or even G4 and start attacking Black. So I think this is why. आज वॉचिंग कम क्यों है? 2 रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज स्टेक्स नहीं है, वीडी के जीतने के चांसेस बहुत कम है। अगर वीडी के चांसेस बढ़ जाए, सडनली वीडी विंस या फिर शिरोव विंस, तो वॉचिंग शूट कर जाएगी। एंड सेकंड बिकॉज कस्पारोव इज देयर ऑन समय स्ट्रीम। 2 रीजन है। या मोटिवेशन एंड फोकस इज लैकिंग रैकेट टुवर्ड्स दैट। या दैट्स ट्रू भाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कम ऑन वीडी, फास्ट यार, फास्ट। Fedoseev has lost motivation, that's very clear, because he had a chance till yesterday to qualify. Now he has 0 chances, so he will not have the motivation to win this game as White. He will try to just play moves, and that's usually a good sign for VD because he can try to use that as to his advantage. But the main issue here is that after a move like B5, C takes D5 might be possible, and then if you capture back, then there is some threats like Bishop H7, so you can go C4. And if the bishop goes back, then you don't take this pawn. In fact, you use this pawn as shield. You try to play knight e4. The queen goes to c1. Then you play a move like a5 or bishop f6 and try to attack the king, even a pawn down. So that's the plan for black. But VD has to sack a pawn for that. Will he sack a pawn? Let's see. Have you ever faced Levy? I have not, but I have not. Daily dose of Karakin, new channel idea, nice. Nice. Clips channel with only Karakin, yeah? Yeah, that makes a lot of sense. With a D takes c4, that makes less sense because if we capture on c4, I think certainly bishop c4, and then white is even better now because he has a d file, he has strong bishops. Knight coming to e5, attacking f7 does not look good for VD here. So we should not open up the d file when he's not developed. Very important. Let's see, let's see. Let's go to the game of VD qualification possible है क्या? I have a feeling कि हो जाएगा आज। यार होने के chances बहुत कम है। I don't think so आज होगा। But well, उम्मीद तो दुनिया कायम है। Let's go to the game of Rapport now. Okay, so we saw queen c1, queen b6, a takes b4, knight e4, bishop c3, castles, and now white has the bishop pair, and I think Rapport is even slightly better here, if not equal. So looks unlikely, man. Looks unlikely. Shirov's going to win this one, but yeah. Shirov sir, please win. भाई वही तो उम्मीद है यार, वही उम्मीद है। अनीश तो पेल रहा है, क्या बात कर रहे हो? Let's have a look. हाँ, इस गेम में तो इक्वल ही है, बट या ही ओवरऑल टूर्नामेंट में तो पेल रहा है। बट आई मीन द थिंग इज, पेल रहा है, बट इट्स लाइक ही स्टिल हैज टू गो अ लॉन्ग वे एज वेल। बट
and also he's not technically, he's I wanted video Harikrishna to qualify, man. Like खाली Anish नहीं, but of course it's at least good कि he might qualify. At least एक बंदा तो आगे जाएगा. Let's go game of VD now. Not just though, but have you ever heard of dark web? You can't imagine there are humans who are doing. I know about the dark web, bhai. I know, but yeah. You are missing for one thing. If Shirov wins, he will be at least tied first. He has the motivation. How will he be tied first though? Ah, you are right. Arey ruko yaar, Shirov has a chance of winning this. You are absolutely right. If Shirov wins, Shirov goes to... No, he does not have a chance. He does not have a chance, chat. Let me check. Wait a second, chat. No, he does not have a chance. Ruko. Nah, he has no chance. Because Rapport is on 3.5, Shirov is on 2 points. He has no chance. I thought he was on 2.5 or something. No, he has no chance, chat. ये क्या पिन कमेंट है? बिल्कुल भाई, किसी ने प्रेडिक्शन करी है 24 में पॉन अप होगा, बट मुझे लगता नहीं है वीडी पॉन अप हो सकता है. सो आई थिंक लेट्स अनपिन इट नाउ. Let's see. Oh, he played b5. He played the best move. Oh, that's nice. Yeah, he played the move b5. Vidi doesn't deserve to qualify. Rapport ने से पेल दिया. Yeah, but the thing is, Vidi also, if he manages to defeat Fedoseev, Vidi managed to defeat Shirov once and Fedoseev once, and if then Rapport loses to Shirov, then he would technically believe it. Yeah. टॉप 2 में आने के नहीं होगा चांस. टॉप 2 में आने से कुछ फायदा नहीं है एक्चुअली. टॉप 2 से कोई फायदा नहीं. टॉप 2 आओ या थर्ड आओ, फोर्थ आओ, एट दिस पॉइंट इट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज आई थिंक शिरोव का भी सेकंड टूर्नामेंट है ये. सो लेट्स सी. होगा पॉन अब भाई, मुझे लग नहीं रहा. पॉन डाउन होने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, बिकॉज ही इज टेक्निकली सकिंग अ पॉन. वीडी जीता तो भी क्या फायदा, रैपोर्ट को भी तो हारना पड़ेगा. हाँ, दैट्स द पॉइंट. नो, रैपोर्ट को तभी तो मुश्किल है, वरना वीडी के यहाँ जीतने के चांसेस आर नॉट सो, दे आर नॉट लाइक सो लो. ही कैन विन दिस गेम टोटली, बिकॉज b5 खेल चुका है, b5 ओपन हो रही है. ही हैज सम एक्टिव मूव्स हियर. द ओनली क्वेश्चन इज कैन शिरोव डिफीट रैपोर्ट. दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट. अदरवाइज तो काफी आसान था, हराओ और जीतो. एलेक्स नेस शिरोव सेन, ये क्या है भाई? Vidi plays such amazing moves. I think what's stopping him from breaking top 15? I think it's all about time management. As you can see even now, of course, he played a crazy move b5. I think it's all about time management, because he's using a lot of time and he has no time to kind of, find good moves in the end game, especially from the move 30 to 40. Rapport तो हारेगा ही. अरे हार जा यार, हार जा Rapport यार. What's the YT challenge of? Okay, I'll check it out. Rapport game देखो ना, हम देख रहे हैं. Looking at Rapport's game is of course very important. But to be honest, chat, I don't know how you can lose this as white. There is absolutely no hope. I mean, symmetrical structure hai. Black will go c5 at the correct moment. You will have one pawn each. So I highly doubt white can lose this one. But okay, at least if really wins, he would know, yeah. Do you think if a player gets beat by the same player twice with both white and black pieces, he doesn't deserve to be qualified? Not about really though. Asking general. It depends. It depends, man, because it's a kind of a group stage. So if he can defeat somebody else twice, it's kind of a loop. Yeah, you lose to somebody twice, you defeat somebody twice. So technically, you still deserve to be there. I had asked if Tara Steel must have peaked. What are your thoughts now? At least he's on a long plateau. Sarashmai, that's true. There's definitely a plateau he's hit right now with 2720 or something. But I feel it's very obvious to me where he's struggling. It's about time management. I think he might have realized it also. Maybe there's something else also. So right now he's of course stuck in a plateau. That part I agree with. But where will he be 2 years from now? He could be 2780. He could be 2680. We don't know. But if I had to choose, I think it's more likely he'll be 2780 than 2680. Your prediction for 2 players from Grand Prix? I think most likely it should be Hikaru and Anish, but I'm not sure about this one. Rapport का पेट खराब हो जाए भाई. अगर यहाँ पे पेट खराब भी हो, चाहे गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए, चाहे डिवोर्स हो जाए, चाहे मतलब बोलते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे मतलब उसकी पैंट में चूहा कूद जाए, कुछ भी हो जाए भाई, दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ मोस्ट लाइकली. सो आई फाइंड इट हाईली अनलाइकली कि ही विल लूज दिस वन. गलती से सच निकल गया भाई. क्या सच बोल दिया यार? अरे नहीं भाई, 2780 ऑब्वियसली. भाई कस्पारोव आया क्या? Can Vidi win Tata Steel? Yes, why he can, and he will next year for sure. What? Okay. अच्छा, your clips का भी कोई मतलब एक अलग टैब होता है क्या? I did not know about this.
Okay, all done. Yeah. Can VD qualify from his pool? Yes, he can, but very unlikely. भाई भाई टाटा स्टील खत्म नहीं होगा भाई इनका. भाई समय गैरी कोलैब आई नो भाई, मुझे पता है भाई, पता है भाई, मैं भी चेस खेलता हूँ. नॉट येट विल कम इन 25 minutes. समय स्ट्रीम वॉच पार्टी ऑन ट्विच. मैं वही सोच रहा हूँ यार. आई थिंक वी कैन गो टू ट्विच इन लाइक half an hour and we can watch Samay stream there. Like we start for the first time ever. Can Samay reach 2000? Yes, he can, and he will someday. But he will surely reach 2000 for sure. In fact, I expect कि for COB 6 he will reach 2000. अदर उससे कौन कौन क्वालिफाई कर सकते हैं? आई थिंक MDL फ्रॉम पूल डी, अनीश फ्रॉम पूल बी. पूल ए में पता नहीं अभी कौन जीतेगा. आई एक्सपेक्ट एंड्रेकन टू क्वालिफाई, बट एनीबडी कुड. एंड पूल सी से मोस्ट लाइकली रैपोर्ट. क्या हर्ष भाई तुम थोड़े लेट, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1-1.5 लेट है भाई, ज्यादा लेट नहीं है, 1.5 महीना लेट है. Okay, so now Fedoseev is thinking. Let's go to the game of Rapport. By the way, Shirov did play the best move C5 and White has gone B5. And to be honest, if White wanted to draw, he could have also played just castles. But he plays the move B5, so he's playing the best move still. He's not trying to, play some desperate draw. Yeah, so Rapport is playing some good moves. Let's go to the game of Vidit now. देखो आपका स्ट्रीम देख के मजा आ जाता है. ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल. होपिंग सब्सक्राइबर में और जीरोस ऐड हो जाए. थैंक्स लॉट हर्ष भाई. होपफुली जीरोस नंबर के आगे ऐड होंगे, पीछे नहीं. यू लेट्स सी यस्टरडे विद वीडी विनिंग एंड वी नो व्हाट हैपेंड. डोंट गो प्लीज. ठीक है यार, आई विल नॉट लीव, आई प्रॉमिस. यो पवन भाई क्या हाल है? थैंक्स अ लॉट सुपर चैट भाई. थैंक्स अ लॉट यार. थैंक्स अ लॉट भाई पवन भाई. थैंक्स अ लॉट यार. आज तो भाई कुछ स्टेक्स नहीं है. आज समय की स्ट्रीम भाई कस्पारोव के साथ आज कम ही लोग हैं. बट ठीक है यार, आई मीन वी विल वॉच वीडियो स्ट्रीम चाहे कुछ भी हो, पूरा गेम एंड तक. उसमें जब समय स्ट्रीम बंद करेगा उसके बाद जो जंप आएगा उसमें भी अलग ही हाई मिलता है. लाइक व्हेन यू सी योर वाचिंग गो फ्रॉम 100 200 300 400. होप सुपर चैट में भी जीरो ऐड हो जाते हैं. अरे नहीं भाई, इतना सपोर्ट मिल रहा है भाई, इससे ज्यादा क्या सपोर्ट मिल सकता है? क्रेजी सपोर्ट है यार. व्हाट हैपेंड टू CP5? सो चैट यहाँ पे I already mentioned this one, but I have a question chat. White को कौन सा मारना चाहिए? CD5 या CD5 कौन सा White के लिए अच्छा है बताओ. Which is the better move for White here? Come on chat, कौन सा पॉन मारना चाहिए? भाई समय की स्ट्रीम छोड़ के देख रहा हूँ, वीडी जीतना चाहिए भाई. भाई छोटा टिक्कू is on the job, don't worry, you will win today. CD5, exactly. CD5 makes a lot of sense, I think, because after CB5, Pawan bhai, if you capture on B5, Black will play the move A6, and now White has to again capture, and suddenly after Bishop A6, Rook A6, there are two open files of Black to attack, and VD is completely winning. So यहाँ पे खतरनाक अटैक आएगा. That's why I think White should keep the B file closed and capture on D5. जहां पे Black can't even capture, because if you capture knight takes D5, suddenly comes Bishop E4 and White is completely winning. And even if this was not possible, this is not opening up the file on the king side, so this would be better for White. So I think B5 के बाद C5 would be a mistake here. Tikku better than Kasparov. Nice one. I don't see Lil Tikku. Lil Tikku is working behind the scenes. Don't worry, bhai. Behind the scenes is working. So White should probably take on D5, and that's what Fedoseev is thinking. Come on, D5 मार दे यार. Rapport का दिखाना देखते हैं. Rapport भाई. Let's go to Rapport's game. This game is as important as VD's game right now. For VD to qualify, the only hypothetical and very unlikely chance of VD qualifying is Shirov defeats Rapport with the black pieces. Considering how symmetrical this position is, it looks very unlikely Rapport will lose this. But I'm hoping for this. Yeah, उम्मीद है, but very unlikely. Behind the scenes भी तो काम करना पड़ेगा. अरे काम तो कर रहा है वो. Lil Tikku is working by behind the scenes for sure. Let's go to the game of Harikrishna once. And Harikrishna is still playing. I think he might take the draw with a repetition like this. Bishop 5, Rook D8, Bishop. Like he might go for something like this here. It's totally possible. So I expect a draw here. Let's go to the game of Anish Giri. Anish Giri needs a draw to qualify. So at least Anish Giri will qualify from this. And he needs a draw to qualify. He has a black piece that is free to go off. If he takes a draw, he goes ahead. And I think यहाँ पे he might already have some sort of drawing chances. So let's see. Let's go to the game of Vidit Gujrathi now.
VD won't qualify. I know he won't, Lakshmi. I know he won't qualify. 99.99% he won't. But जब तक के लिए चांस है भाई, कम से कम मजे ले सकते हैं. वॉचिंग को क्या हो गया आज? अरे भाई आज कस्पारोव भाई आ रहे हैं समय की स्ट्रीम पे. दैट्स वन रीजन. सेकंड, बिकॉज देयर नॉट मेनी स्टेक्स टुडे. वीडी जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है यार, ऑलमोस्ट निल है. लंडन कैरोकैन की हेल्प से रीच 1500 रैपिड. आपने सिखाया कुछ? अरे थैंक्स अखिल भाई. होपफुली आप 1800 से 1500 नहीं पहुंचे और 1300 से 1500 पहुंचे हो. Rapport doesn't like chess. He doesn't want to be a chess player. He has no motive such. And he says this. Still, he is in top 10, crushing with Super Genes. Lol. Yeah, Champ TV, that is true. But I think it's like when you kind of don't want to do something, sometimes it's like you're not under pressure to win. So that sometimes can even help you. That's the ironical fact there. आज आपके स्ट्रीम पे भी कस्पारोव को बुलाओ. अनफॉर्चुनेटली कस्पारोव की स्ट्रीम पे आने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए बचे होंगे यार. Let's see what happens. Let's go to the game of Shirov once. Okay, so far Shirov is a pawn down and he's trying to win the pawn back, but I don't see how he's going to win this one. So let's go to the VD game. Big dreams, exactly. Very big dreams, by very big dreams. Let's see what. Oh, he took on d5. He took on d5 now. So VD के chances again to win are not so high now, and he should not take on d5, of course. Not a good tournament for Hari bhai. He didn't win a single game. Yeah, I think Vidit se zyada I think Harikrishna को stress है because he's not played well in any tournaments for the past couple of years, I guess. So I don't know exactly how he assesses his chess. In fact, I don't even know his live rating. Has he actually? Is he still above 2700? Let me check. So Harikrishna's live rating is 2711 and yeah, he is struggling a bit. VD is 2722. Yeah, interesting. So yeah, Harikrishna is definitely struggling, there's no doubt. Reached 1300 se 1500. Arey, that's nice yeah. C4 only move. Yes, he played C4 though. He played the move C4 to not allow bishop E4 anymore. Bishop has to go back. Let's go to the game of Anish once. Yeah, I mean, the thing is, Anish is surely slightly worse because the isolated pawn, there's a lot of pressure on this pawn from all pieces, also the rook. But I think Anish knows how to play with the isolated pawn. He's very experienced in this. Putting the rook on the e2 pawn, bishop pressure on the e2 pawn. That has like bishop d4 followed by bishop takes e2. So yeah, Anish knows what he's doing and he should hold this one and qualify. Let's go to Vidit's game now. Why man is so good? Yeah, man, he's good. He got trained by Kasparov himself for 3 or I think couple of years, and he is incredibly talented as well. So yeah, I mean he's just I think God's favorite child in chess, let's say. Yo Petrov, क्या हाल है यार? बस सोशल होने से अलग मोटिवेशन मिलती है. ये तो है भाई. और I think फिशर को एंटी सोशल होने से मोटिवेशन मिलती है. सो अपना अपना है भाई. Every person is on his own and they know what works for them. That's true. Come on. Fedoseev भाई खेल दो. अरे भाई व्हाट्सएप भाई, कुछ व्हाट्सएप तो है नहीं यार. आज तो भाई थोड़ा सा डिप्रेसिंग सिचुएशन है, बट लेट्स सी. भाई आप तो मैग्नस से सीड्यूस हो रहे हो भाई. ये क्या है भाई? I test 20% plus rapid, then fell down while playing some bullet tank games. Yeah, man, bullet definitely spoils your classical and your rapid and your blitz if you play it too much. Keep it limited to like, you know, once a day or like once in 2 days, only a couple of games, not more than that. मेरे को भी एंटी सोशल से ही मिलती है. ट्रू भाई, मेरे को भी मिलती थी पहले. वीडियो कितने पॉइंट्स है भाई? अरे यार तुमने भाई बोल दिया. स्लैश लगाने की जरूरत क्या थी भाई? मतलब काहे मुझे लिटा दिया आपने साथ में. वीडियो के आई थिंक 2.5 पॉइंट्स है. फेदोसीव एट 3.5. Come on, let's see what happens. अनिश इन टाइम प्रेशर भाई. हो ही नहीं सकता. हो सकता है भाई, हो सकता है एक्चुअली. Oh, Anish took the pawn. He took the pawn. Crazy. Anish took the pawn on d4. Bishop takes d4. Rook takes d4. Bishop takes e2. Rook to b1 now. And Anish has taken on e2 and he will lose the pawn on d5. I think he's trying to liquidate to some equal endgame. So let's see what happens. Rook b1 ka idea hai to, you know, after black plays a move like queen b6, the b2 pawn is defended. So that's the idea of rook b1. Shirov is a losing chat. He can take on b5 right now and equalize.
but that's pretty much it. I think, chat, unfortunately, Shirov is going to draw against Rapport, and VD will have no chances, unfortunately. 99% it's going to be a draw here. Ashtak has 1.9 lakh live watching. Guess what's going on? Ukraine, कुछ रशिया कुछ हुआ होगा, क्या चल रहा है देश भाई उस पे? What if Magnus trains Nihan, Arjun or Prag can become? They surely can, but I don't think Carlson has time for coaching right now. That's the only issue. भाई बुलेट इज लाइक जसन खान। हेलो भाई, कनाडा भेज दो। अरे अब तुम बोले ना कनाडा जाना है अपने, अच्छा नाइस। तुमसे कनाडा कर रहे हो, मैंने कहा कनाडा कौन सी जगह, भी सुनी नहीं कनाडा जगह, कनाडा जाना है तुमने, अच्छा। If FIDE qualifies, I will run naked on the streets. I don't think so if anybody wants to watch that, Lakshay bhai, and you will also get into jail for that, so I would not recommend doing that, regardless of who wins or loses. नहीं, exit polls of elections. किसके, यूपी के क्या, किसके इलेक्शन चल रहे हैं यार? यूपी के ना, बल्कि से कन्नड़ जा। You also joined समय stream? नहीं यार, I am not qualified to be there yet. उसके लिए लास्ट सब्सक्राइबर चाहिए यार, अनफॉर्चुनेटली। I used to play London in Rapid and Blitz. Feels so slow if I play London in Bullet. Any advice? Which opening should I play with White and Bullet? You can, if you play 1 D4, in that scenario you can probably play, simple Queen's Gambit. That's the best, man. D5, D4, C4, Knight E3, simple. अगर E4 खेलते हो, go for Italian. When FIDE removes a player from rankings like Kasparov, Kramnik, sir, is it retirement or inactivity? They don't ever remove a player. I think Kasparov's name is still there in the rankings, inactive के नाम पे. I voted no, but okay, not going to read about that one. भाई मुझे जीत गए, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार. Just come cheaper on mobile than laptop. Why? Really? Is it cheaper? I don't know about that one. Membership cheaper होती है क्या इसकी मोबाइल पे? I don't know. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत कर लिया, अब जरा देसी पॉलिटिक्स से भी बात कर लेते हैं। भाई देसी पॉलिटिक्स पे कैसे बात करें भाई, तुम खुद बताओ। तुम्हें जेल जाना है क्या, मुझे जाना है क्या? नहीं भाई, तो रिस्क लेने का मतलब ही नहीं है। कैसे हो आप दो, लाइक मैग्नस गेम्स मोर लाइक बॉबी कस्पारोव? नहीं, आई थिंक कस्पारोव की गेम्स आर आल्सो वेरी ऑसम। C4 is best, but C4 it's first of all black to play, and even if C4 then still bishop B5 by the way. Yeah, it's cheaper in India than abroad. That's true. I think abroad makes like at least 3 times higher price. That is absolutely true. But mobile or I think app or online कोई difference नहीं है as far as I know. And now, chat, this is just a draw, yeah. Bishop takes B5, Queen takes B5, Rook takes A7, and now Queen C6 or Queen C4. I think just Queen C6, Queen C4, Rook A3, Rook B3, Rook takes, Queen takes. I don't know, maybe G3, Queen takes, Rook takes. And we have a dead draw position, and unfortunately, yeah, bishop taken on b5, chat. Rapport has played it very carefully. He will get the draw, chat. And I don't even know if we want to stream after Rapport draws because, अरे यार मूर्खा हो गया यार, हर मूर्खा कर दिया यार। थोड़ी लंबी गेम तो खेल लेते यार, शिट यार। आज वीडी का मैच है, ऑफकोर्स वीडी का मैच है भाई, देख रहे हैं। By the way, after b5, c takes d5, c4, d6 played by white now. C takes d3, d takes e7. D takes c2, Queen takes c2, Queen takes c7, and chat, whether you believe it or not, VD is slightly better here. The only unfortunate fact is, even if he wins, it will not be enough. Rapport ne bhai, Rapport cost him the entire, who knows, not the world championship, but at least a chance at the candidates bhai. Yeah, VD is better, man, but it's not enough. It's not enough because Shirov is not going to win this one. It will be a draw. Everything is cheaper in India than abroad. Netflix, Amazon Prime. Yeah, it is. But I think even Chessbase is cheaper in India. If you check out Chessbase की main website जाओ, it's much more expensive than Chessbase India. So everything is cheaper in India, of course. Rapport को report, but Rapport deserves it. He bet with you both class. He deserves it, भाई. Of course. अब imagine करो कि तुम्हारा कोई तुम हो स्कूल में हो, ठीक है, और तुमने कम पढ़ाई करी है, तो टॉपर फर्स्ट आ गया, तो ऑफ कोर्स टॉपर डिजर्व्स इट, बट डजंट मीन कि वी कैन नॉट होप कि भाई हम फर्स्ट आए थे। उम्मीद तो करेंगे ना भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। Rapport has a great improving curve since mid 2021. He has, man, but the issue with Rapport is he does not want to play chess. Like, he hates playing chess, so that's the weird part. Let's go to the game of Vidit now.
At least I hope VD wins, because if VD wins, he'll end on a high note. Yeah, it'll be really good. We can really Fedoseev with black. Who all have qualified on other pools? I think Anish is the best chance to qualify in pool B. Pool D में MVL has the best chance. And pool A में tie है यार, I think दो लोगों में. क्या ऑलरेडी साहब अपडेट ये है कि भाई I think VD cannot qualify chat because this will be a draw. Queen C4 played. You'll see rook A3 now, followed by rook B3, rook takes, queen takes, and a dead draw. And I think chat, unfortunately, VD cannot win this one. बैक रैंक होने वाला है रैपोर्ट. अगर रैपोर्ट बैक रैंक चेकमेट हो गया तो लिटरली चैट में जितने 130 लोग हैं ना, हर किसी को चेस को मेंबरशिप मेरी तरफ से कंफर्म. सब अपने नाम लिख दो भाई, कौन कौन हो तुम लोग यहाँ पे, ताकि मुझे पता हो भैया तुम लोग हो. अगर रैपोर्ट बैक रैंक हो गया, हर किसी को चेस को मेंबरशिप. Agassi was similar, hated tennis all his life. Really? Is that true? I want Anish to manage the world chess champion. That'd be fun, bhai. That'd be fun. कंगाल होने वाले हैं साहिल भाई. अरे किडनी भी बेच देंगे भाई. काउंट में है. नाइस. शौर्य लिख दिया शौर्य भाई ने. वेद का मैच दिखाओ. अरे यार वीडी के मैच से इंपॉर्टेंट तो ये मैच है यार. तनिष्का भारी पड़ेगा ये. अरे भाई नूब लक्ष्य केस. नाइस. At least before he married Steffi. Nice. So you basically mean शादी के बाद he started loving tennis. Nice. He was like, I can't deal with shit at home. Let me love tennis instead. भाई हरी ब्लंडर यार. साकिब भाई पक्का स्कैम है. आज पकड़ लिया साकिब स्कैम. मैंने 100% स्कैम पकड़ लिया है. यस चैट, साकिब जी का स्कैम पकड़ा गया है. साकिब जी फाइनली एक्सपोज्ड ऑन स्ट्रीम. कंप्लीटली एक्सपोज्ड. लेट्स गो टू द गेम ऑफ विदित अगेन. मेरे को एक देख के दिखाओ ताकि पता चले सच में दोगे. या शौर्य भाई एग्जैक्टली. हाँ मतलब आपको पहले मतलब वो एविडेंस चाहिए. नाइस. रैपोर्ट जीत रहा है या हार रहा है भाई? वो ड्रॉ कर रहा है. दैट्स द वर्स्ट सिनेरियो. विदिता गुप्ता, आई सीन यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल. लेट्स गो टू द गेम ऑफ शिरोव वंस. नूब लिखने में साहिल क्यों आ रहा है भाई? किसी नॉटी वर्ड ने डाला होगा. ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं चाहिए. ये नहीं हैप्पीनेस नहीं. ये हुआ ना आंसर. ईशा एग्जैक्टली. मैंने ईशा कुमारी का इशारी कर दिया गलती से. सॉरी यार. ईशा कुमारी. यस. बिशप E6 विदित गेम. बिशप E6 खेल सकते हो. ऑल्सो यू कैन प्ले बिशप B7 because you have bishop E4 simply winning the queen. So bishop B7 also makes a lot of sense here. अभी 20 just in case. नाइस. आरती टिक्कू कौन है? अरे शिरोव प्लीज हरा दे भाई. अरे यार इट्स वेरी अनलाइकली यार. शिरोव के हाथ में है ही नहीं भाई. रैपोर्ट ने इतना सेफ खेला है. शिरोव को एक मौका नहीं दिया भाई उसने जीतने का. एक मौका. कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई भाई. कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई. VD might win to the chat. I think it is totally possible he might win. And also that after bishop B7, let's say king A1, bishop E4, queen B3, and now queen to B7. And I think black is surely better here. Is he much better? No, but he is surely slightly better because it is a very important diagonal to control, and white king is a bit weak. So Vidit might have some chances to win this one, but unfortunately for him, यहाँ पे Shirov भाई could not do the needful. Yeah. वीडियो गेम भी ड्रॉ होने वाला है. आई डोंट थिंक सो ड्रॉ होगा ये वाला गेम. विजिटिंग इंडिया दिस मंथ. लेट्स मीट अप टू प्ले सम चेस मैचेस. अरे पकड़ भाई ऑफ कोर्स यार. अगर कोर्स में बेटर हुई तो आई वुड डेफिनेटली मीट. बट वही चीज है ना कि भाई कहाँ इंडिया में कहाँ रह रहे हो भाई यार. कहाँ मैं जा रही हूँ इंडिया में. गैरी हैज अराइव्ड. अरे नाइस. इसलिए वीडियो ने हारना नहीं था कल. एग्जैक्टली कल हार गया. कल की चक्कर हो गया. How long do you practice chess in a day? Bhai, I am not practicing chess like 7 hours a day right now, but I am involved with chess 24/7. Like मतलब कुछ ना कुछ तो लिंक होता ही है. मतलब कुछ ना कुछ मैं चेस रीड कर रहा हूँ. चाहे मैं चेस खेल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, स्ट्रीम कर रहा हूँ, स्ट्रिप चेस गर्लफ्रेंड सॉरी कुछ 4 प्ले चेस खेल रहा हूँ. यू नेवर नो. कुछ रिजल्ट्स आए. अब तक कोई रिजल्ट्स नहीं है. बाय द वे किंग बिशप B7 played by VD and king A1 for white now. And I think VD will go bishop E4 now. बैंगलोर आ जाओ. अरे जाऊंगा कभी ना कभी आऊंगा. For sure कभी ना कभी तो आऊंगा.
वाह भाई, कुछ भी बोलना मत, ये क्या यार. VD gets overconfident after winning first few of the games. I don't think he's overconfident. I think he's just not managing his clock well. I think it's as simple as that. Even right now, you can see 15 minute पीछे है. I think that's the sole reason he's not winning this. और कोई reason नहीं है. बाकी, of course, there will be some other reasons. But as far as I can see it, I think it's time pressure. I am involved in laziness 24/7. तो ऐसा करो ना यार, ये स्ट्रीम ऑन छोड़ दो और बस चलते रहने दो भाई, चलते रहने दो बस भाई. एक साल में 10,000 गेम खेले हैं. आई स्टार्टेड लाइक 1 year बिफोर. भाई सिर्फ खेलना नहीं है यार. जस्ट बिकॉज यू अप्रोच लाइक 10,000 women doesn't mean they will say yes. उसे सीखना भी है. You have to learn from them. So for example, one girl rejects you, you see why it went wrong, you analyze. Second girl rejects you, see why it went wrong, and by the time you reach the 10th girl, she will say yes. So analyze your games as well. Vidit played the Russian defense. Exactly. Lil Tiku gets dirty. Lil Tiku is always dirty, right? Dirty and naughty both. आज टीम करोगे रात को as Arjun is playing today against Robson Forest. अरे really Arjun is playing क्या? आज वो बुलेट चैंपियनशिप है, क्या बात कर रहे हो? आज है क्या? आज है क्या बुलेट चैंपियनशिप? I did not know about this. इतना जल्दी है तो भाई ऑफ कोर्स करेंगे यार. लेट मी चेक, इज इट टुडे? अगर अर्जुन का मैच है आज तो ऑफ कोर्स वी विल डू इट. कहां पे लिखा है? आई डोंट सी इट एनीवेयर दो. कहां लिखा है? चैट पे लिखा है क्या? आज है दूसरा ब्रैकेट. तो आज कितने बजे अर्जुन का मैच बताएगा मुझे? कितने बजे अर्जुन का मैच? अर्जुन वॉज लूजर ऑफ 4. तो दैट मीन्स उसका मैच 10वां मैच है. दैट मीन्स इट शुड स्टार्ट एट 12:15. 12:15 है क्या आज? करेंगे भाई, ऑफ कोर्स स्ट्रीम करेंगे. इफ अर्जुन इज प्लेइंग आई विल श्योरली स्ट्रीम दैट वन. देयर इज नो डाउट आई विल. अर्जुन का मैच तो देखना ही यार. And who is he playing today? He is playing loser of 3. So he's playing Van Forest, I think. Will VD qualify? Man, it's not going to happen, unfortunately, chat, because I think Fedoseev is Rapport will draw against Shirov. Yeah, by the way, chat, yeah, I don't know why they're even playing right now. Has he entered already, or can he still Rapid Championship? रैपिड चैंपियनशिप नहीं यार. आई थिंक वी टॉकिंग द बुलेट चैंपियनशिप. रैपिड चैंपियनशिप तो हर हफ्ते होगी, उसमें तो खेलेगा वो हर हफ्ते. बट वी टॉकिंग द बुलेट चैंपियनशिप राइट नाउ. 12:65 अनीश विनिंग. पक्का स्कैम है 100%. ऑफ कोर्स भाई, 2 स्कैम पकड़े गए साकिब भाई. वेयर्स योर, कहां गया यार तुम्हारा वो, मतलब वो ऑरा भाई सारी गायब हो चुकी है यार. मतलब यू नॉट एबल टू फूल मी एनीमोर. हाउ दिस विल नॉट वर्क लाइक दिस. कम ऑन मैन, यू आर लूजिंग योर टच. Oh, sorry. Yes, bullet. That's the first and last time probably we'll see Anisha say sorry. So, chat देख लो. Anisha said sorry. Yeah, I mean, just saying. बाद में जब कार्लसन रिजेक्ट करेगा तो कार्लसन भी सॉरी बोलेगा, मुझे लग रहा है. Sorry, just kidding. Anish is at time pressure. Yeah, Anish is at time pressure. That's true. He has very limited time, 24 minutes. And if Anish loses, then he'll have a tiebreak against Fitugov. ये लूजर कुछ हार्श टर्म नहीं है. Yeah, but it's kind of fair also. I mean, losers bracket. That is true. वैसे losers bracket. बेचारे 27 प्लेयर खेल रहे हैं in the losers bracket. Nice, nice. अरे बोलती हूँ सॉरी, मेरी गलती हुई तो. अरे नाइस यार, मजाक कर रहा था of course. Nice यार. Shaq sacked the piece again. Of course, confirmed scam. Why Tikku smiles and blushes when Anisha comments? I don't think it's about Anisha. ब्रो मैं तो तुम्हारे कमेंट पे हंस रहा हूँ भाई. ये क्या, फिर तुम मुझे क्या बोल रहे हो भाई? भाई how is VD better, please? VD is better because his white king is a bit weaker and he has an important diagonal to control, and there is potential in the position कि long term black can use the awkward king, and also he can double white spawns whenever he wants. So white will have a double pawn structure which is not so great. So yeah, that's the combined effect. Slightly weaker king and the possibility of double pawns is important diagonal. But it's opposite color bishop, so anything could happen, man.
Until players make move quick analysis on Nihal game, please. Yeah, Nihal game, yaar, is not so important. That's the issue I have with the Nihal game. It's not important. There's no stakes there, even if he wins. Generally, मेरी गलती नहीं होती, वो अलग बात है. Nice. I played a chess game and I was the runner-up. अरे, शाबाश यार. कहाँ पे भेजूं तुम्हें? हैं? प्राइस तुम्हारा. Until players, okay, हो गया. चैट में लूजर्स भी सेकंड ही होते. अरे लेकिन ये बुलेट चैट कितने बजे कोई बताओ यार मुझे. somebody let me know what time is it. there is no information on this कि कितने बजे है मैच आज. okay, let me see. अच्छा, losers round 1 is on March 7th at 7 p.m. so 7 p.m. पहला मैच है. and if we go to the entire pool, एरिगेसी अर्जुन का मैच फर्स्ट सेकंड वाला है. so that means it starts at वही 12:15 चैट. 12:15 एरिगेसी अर्जुन का मैच. आई थिंक 12:15 AM को होगा. एंड ही विल बी फेसिंग जॉर्डन वेल फॉरेस्ट. अरे भाई आसान मैच नहीं है उसका यार. अनीश गेम दिखाओ प्लीज. अनीश गेम भी देख लो यार. ये है अनीश गेम एंड आई थिंक अनीश इज स्लाइटली वर्स हियर, बट ही शुड बी एबल टू होल्ड टू अ ड्रॉ बिकॉज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. नाइट टेक्स d5, नाइट टेक्स d5 will happen very soon. Rook takes d5. The queen will probably go to c7, trying to exchange queens. And Anish should manage to draw this one. Queen d4, trying to attack the a7 pawn. a6 now, and then rook to e1. And white should be slightly better because of these active pieces. But overall, with the symmetrical structure, pawns in front of each other, it should be a draw still. So let's go to the game of Richard Rapport here. Chat, this is over, man. They have agreed to a draw, chat. So Richard Rapport has agreed to a draw with Alexei Shirov, and that means Vidit Gujrathi unfortunately is out of this tournament, and there is not much anybody can do. He can of course win today's game, but he will still come second. वीडियो मैच में सारे पीसेस दूर दूर क्यों हैं? बिकॉज दूरियां हैं जरूरी. भाई सारी ऑडियंस को अपनी कोर्स दे दो तो भाई ले सकते हो भाई. यू कैन बाय इट ऑन द वेबसाइट एनी टाइम यू वांट टू. या नेवर थॉट ही वुड लूज. या 0-2 versus Rapport hurts. That's true. Yeah, that's true भाई. By the way, Bishop played by VD now, and now the queen has to move. Does not have many good squares. C3 there can always be knight d5 tactics or b4 tactics, so he should go to b3 now. But now queen b7 and white black will start pushing their pawn. पिन मैसेज हटा दिया फिलहाल. 24 में वाई नहीं है एंड VD इज नॉट पॉन अप राइट नाउ. लेट्स सी. अब तो ओनली इंडियन अनीश बचा है. या बट अनीश विल probably end up winning this fight. That's the best part. Anish is one of the strongest players in the entire tournament and he will end up winning this because he's going to qualify from pool B. Free में as a token of gratitude, thank you रोहित भाई for supporting us so much. आई थिंक आपका नाम मैं पिछले इतने पुराने जमाने से आप हमारे चैनल पे फॉलो कर रहे हैं. हमें आई थिंक रफली 1 हफ्ता हो चुका है आपको. सो क्रेजी सपोर्ट भाई. आपको तो कोर्स देना ही चाहिए. व्हाट हैपेंड टू द पिन मैसेज? भाई गायब हो गया वो. मैं आगे और एलिमिनेट हो रहा है. गैरी कस्पारोव देखने और समय चैनल. अरे भाई क्या करे यार, वीडियो एलिमिनेट हो चुका है यार, कुछ नहीं कर सकते हम लोग. Hari game we can watch. By the way, Hari has a decent position here, but I find it hard to believe he will win this one. Black has no clear weaknesses. He will next go bishop somewhere and also control the e6 square. So I expect a draw here in Hari's game against Tabatabai. And Tabatabai ने Harikrishna की 2 बार ली है अच्छे से, मतलब 2 बार टूर्नामेंट से निकाला है. So maybe Harikrishna has some revenge to pick with him, but let's see. Gary को invite करो. Nice. Tabi will mostly win losers bracket. He almost defeated Tank. Yeah, but I think today we have to follow who will win अर्जुन और यॉर्डन. आई थिंक पहला मैच तो वो देखना है हमें. उसका थंबनेल बनाना पड़ेगा मुझे. कस्पारोव बूमर मोमेंट्स हैपनिंग. क्या बात कर रहे हो कस्पारोव की बूमर मोमेंट्स? क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे 1 साल हो गया और अरीना वाली डायमंड मेंबरशिप ड्यू है. ये कौन सी मेंबरशिप ड्यू है भाई? शिरो वर्सेस रैपोर्ट में क्या चल रहा है? अरे मस्त. वो ड्रॉ हो गया यार. They drew, man. They drew. Not much we can do. What time is Arjun Jordan? I think it's at 12:15 AM today. Even Fabi will lose bracket. Now the irony. Yeah, but कोई कंफर्म करा दो यार कि किसी को पता हो ना अगर कि कितने बजे आज. I would love to know for sure it's at 12:15 because I don't have the guarantee here. जब Instagram एक्टिवेट करूंगा ना तब भेजूंगा कब फॉलो किया था. अरे नाइस. क्या हाल चाल? अरे बढ़िया तारंग भाई, बढ़िया यार. क्लब इंडिया बैटल यू प्रॉमिस टॉप 10 मेंबरशिप. लक्ष्य भाई उस मेंबरशिप में हमें चेसकॉम ने भाई 3 लाख रुपए प्रॉमिस किए थे भाई. वो खा गए यार. अब मैं क्या कर सकता हूँ यार. इफ रीड इवेंट्स नो यूज.
Yeah, man, now it's no use, unfortunately. He will, of course, come second now. And that's usually not a good sign. Let's see, bhai, let's see. What time is Arjun? I think 12:15 AM को है. I'm not sure about this. I think 99% वही time को है. भाई FIDE का next tournament कब है? I think FIDE का next tournament अभी Grand Prix 3 ही है. But I think Anish and Harikrishna are not playing that one. Sorry, Vidit and Harikrishna are not playing. Anish is playing, of course. तो हम stream तो शायद नहीं करेंगे. अगला इवेंट आई थिंक अब FIDE का तो काफी टाइम तक कोई है नहीं. आई थिंक इट्स ओनली नेक्स्ट वाला FIDE का इवेंट होगा. आई थिंक इट्स रोमानिया GCT. दैट्स लिटरली इन मे. सो आई थिंक तब तक के लिए CO भी रहेगा. आई थिंक नेक्स्ट इवेंट एंड Grand Prix 3 विल ऑफ कोर्स कीप एन आई इफ Anish wins. Why you should really lose? Why? Of course I'll stream. Why? I mean it's not about the result always. Game भी देखना है. Here comes scammer. Scammer तो नहीं है, but I think हाँ मतलब उस टाइम पे तो थोड़ा सा कुछ अनएथिकल किया उन्होंने. इनवाइट बाबा जस्ट ऑन स्ट्रीम. यार इतना बड़ा स्ट्रीमर जो समय का इन्विटेशन खेल चुका है, सब कैसे बुलाया? मेरी औकात थी उसको बुलाने की. ऑल्सो पॉजिटिव नोट, अगर वीडी के चांसेस बहुत कम थे और वो रैपोर्ट का चांसेस खराब हो जाता. समझा नहीं यार मैं. आई एम द मोस्ट एक्टिव. आई मीन वेला मॉड. भाई ऐसा नहीं है भाई, चेस्टी भी चैट में है, इतने सारे मॉड्स हैं. मैं खुद बैठा हूँ भाई, मैं खुद हूँ चैट में. वेला नहीं होता भाई. ऑल okay, Queen B7 played now. So clearly he wants to win this pawn and white has to come up with some counterplay here. Varna VD wins the pawn here. Bhai, I am nahi. Invite Nitish bhai to analyze games together. Wah beta wah. Bhai, I at 2200 FIDE feel like a bit underqualified to analyze these games. अब नीतीश ठाकुर की कमी है. बिल्कुल बिल्कुल. आप एक टूर्नामेंट कराओ और जो जीतेगा उससे साथ ब्लाइंड फोल्ड खेलेंगे आप. अरे भाई ब्लाइंड फोल्ड खेलने की टूर्नामेंट करनी नहीं है. डिड वी टॉक अबाउट क्रैकन टुडे? या फॉर 5 मिनट्स. क्वेश्चन था वो, स्टेटमेंट नहीं. नहीं भाई, वेले नहीं है भाई. लेट्स चैट क्या होता है यार. अब आई थिंक if I was white, what would I do? I don't know, man. If you go knight d4, I anyway take the pawn. So I think VD is better here for sure. He's better for sure. If you play queen e2 trying to defend this, I can still capture on f3 and give you double pawns. I can also wait here, play b4, a5 and so on. So I think VD is definitely pushing here. Karyakin tweeted, nahi yaar, I can't do this once more. I can't do this. I think मुझे chat में word Karyakin ही ban करना पड़ेगा. सारे FIDE candidates और मैंने VD खेलेगा क्या? नहीं यार, नहीं खेलेगा. Chat going really slow, of course. कम लोग chat goes slow. That's kind of understandable. भाई अभी बिशप वर्सेस नाइट से हर दो वीकनेस आएगी. वीकनेस तो आएगी बट वो डोलो या फिर कोई क्रॉसिंग खाल के ठीक हो जाएगा यार. वो ट्विटर बैंड है अभी. नहीं, आई थिंक ही वाज इन दुबई, राइट? आई थिंक ही वाज नॉट इन रशिया बाय द वे. एंड उसने लिखा भी कराकिन ने समय को कि कोई बात नहीं, रशिया में बैंड है, आई विल स्टिल बी देयर. सो अपेरेंटली ही स्टिल ट्वीटिंग लाइक क्रेजी. वीडियो गेम पूरा ड्रॉ लग रहा है. इंजन क्यों नशे में है? ड्रॉ नहीं है भाई, ड्रॉ नहीं है. एंड द क्वेश्चन एंड द आंसर इज वेरी सिंपल हियर, बिकॉज व्हाइट pieces are very awkward. Knight on h4 has no potential here. He's trying to avoid the double pawns. Of course, now if I take on g2, there can be rook g1 ideas, and there are some attacking chances for white. But as you can see, the king is a bit weak, so there is some potential for attacking here with pushing these pawns. And even in the endgame, the king will be cut off on a1, and I can try to, bring my king into the endgame very quickly. Second, even though white is fully developed, where is this knight going? ये knight कहाँ जाने वाला है? There is no square for this knight. He might play f3, of course, but then the bishop goes back. The knight is still stuck. It's still stuck. So I think white is surely slightly worse here. He is slightly better. But the problem is, even if he wins, he can't qualify. That's the issue, man. Correct, try to get to 60k followers. Let's help him. Karakin is already 65k followers. Acha, you mean? Nice. Karakin writing his tweets and notes app so he can tweet them once Russia unbans Twitter. Nice. सब गैरी भैया को देख रहे हैं. अरे गैरी भैया को सब देखेंगे यार. गैरी भैया को देखने लायक भैया है. गैरी भैया तो यार देखने लायक भैया है. पहले तो आप बोलते थे अपोजिट कलर बिशप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, ये सब दोगलापन है. भाई दोगलापन है, बट जब से 2000 करोड़ की सेटलमेंट ले ली है अश्नीर ने, मैंने भी शब्दों खाना शुरू कर दिया है. सो अगर ये नाइट, इमेजिन करो ये नाइट जादू से, ठीक है, मैजिक से, नॉट
विवेक देसाई का मैजिक, लाइक यू नो करण सिंह मैजिक का मैजिक. लेट्स से नाइट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी एक्चुअली अटैक होगा. और लेट्स से कि ये क्वीन आ जाए कहीं गंदे स्क्वायर पे. लेट्स से दिस क्वीन इज ऑन h5, लेट्स से, देन white is fine, there's no stress. But with this queen on this active diagonal, this bishop on this active diagonal, pawns being pushed right now, knight kind of weird. Vidit is slightly better for sure. The only question is he winning? No. Yeah, will he win? Don't know. But is he better? Yes. Superchat Gary and tell him to try control W. Nice beta, nice. नहीं, मैंने लास्ट टाइम सुपरचैट किया भी था लेकिन कंट्रोल W बोलने के लिए नहीं. What if knight d5 for black? But why knight d5? What is the idea of knight d5? It's just a loose piece. White can go f3 now, and suddenly you have to exchange a lot of pieces, man. And I think this is definitely in white's favor. So let's not do this. Let's go back quickly. Rapport drew chat. Rapport drew. So Vidit cannot win this event, unfortunately. If VD wins, he reaches 2727, which is 0.6 more than his rating before. I can say, okay. 2000 करोड़ का करेंगे क्या लोग इस जिंदगी में, तो स्पेंड नहीं हो पाएगा मेरे से इतने पैसे. अनिशा, it's possible to spend यार. I mean, give me 2000 crores, I'll show you how it's done. अगर आप FIDE ओलंपियाड में खेलोगे, हाँ भाई, अगर मैं अपनी कंट्री स्विच कर लूँ किसी अफ्रीकन कंट्री में या किसी न्यूजीलैंड या किसी आई डोंट नो कंट्री में जहाँ चेस प्लेयर्स नहीं है, सो या अरोनियन बेट हिकारू एंड फैबी, यार तो क्या करे भाई. अगर ब्लैक बेटर है तो कैसे जीता है यहाँ से. आई थिंक फन प्लान शुड बी टू पुश दीस पॉन्स, दैट्स वेरी ऑब्वियस. ट्राई टू यू नो पुश अ पॉन ऑल द वे टिल b3 और a3. इस किंग को नंगा कर दो. मान लो ये पॉन मैं यहाँ पुश कर दूं, suddenly white has to play b3 and his king opens up, so that's in my favor. One plan could be to quickly exchange all the pieces and bring the like you know save like one rook and try to play rook c2 and so on. And one plan is to kind of you know simply capture this pawn. So there are a couple of plans. Let's see. Give me $2 trillion, I will spend it easy. भाई $2 trillion तुझे देंगे तो भाई इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी मुझे लग रहा है. VD आज भी टाइम प्रेशर से आने वाला है 40 मूव तक. Yeah, I don't know man. I think VD has some time to issues. That's very clear. बोरिंग है समय की स्ट्रीम. क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया यार? इतने लोग देख रहे हैं तो इंटरेस्टिंग होगी. आई रियली डाउट कि कस्पारोव की स्ट्रीम बोरिंग हो सकती है. भाई गैरी आया है, रियली गैरी आया है. Oh my god! भाई पता है यार. Bishop e2 looks risky opening the g file. Yeah, but sometimes you have to open the g file and take some risks. VD is playing bad in front of top players. Not in front of, against top players. When are you streaming next? I don't know. I'll stream tomorrow for sure. There's no doubt. But कल I think कुछ और stream करेंगे. I think आज शाम को भी stream होगी apparently Bullet Chess Championship की. उसका thumbnail ही बनाना है मुझे यार, वो भी देखना पड़ेगा thumbnail. And he's playing Jordan went Forest apparently. So वो भी interesting है. 18. No, Gary just very visibly disturbed by world affairs right now. Yeah, also possible because Gary was always vocal about politics since a law. I think since like 2012 or something, he's been very vocal about I think Putin. Last time आपने sorry किसे बोला था at a serious note? भाई इस chat में मैं दिन का 50 बार तो बोलता ही हूँ. Sorry guys, sorry I blundered. Sorry chat, I blundered. World top 25 अभी top place भी नहीं आता. अब क्या VD आता है? Of course top place में आता है. But I think there is a class above 2750 जहाँ I think वो एक अलग class है. Like these are guys who have actually done a lot. Like they've kind of they have potential to become like be world champion within a year. That's as simple as that. And luckily वो connecting ratings ज़्यादा है. शाम को बोले से एग्जैक्टली रंगी भाई आज एलिग्रेसी अर्जुन वर्सेस आई थिंक जॉर्डन विन फॉरेस्ट है एंड वहां पे अर्जुन के अच्छे चांसेस आई थिंक टू विन. इट्स नॉट लाइक नाल्स्की दिस टाइम ही विल नॉट गेट क्रश्ड. वाईटी सीईओ जस्ट ट्वीटेड ऐसी एक्टिंग देखने के बाद ही वांट्स टू क्रैश वाईटी टू स्टॉप योर स्ट्रीम. यार उसने ट्वीट किया तो मेरे फॉलोअर तो नहीं बढ़ रहे यार अनफॉर्चुनेटली. ना मुझे गालियां पड़ रही ट्विटर पे, सो इट्स ऑल फाइन आई गेस. बाय द वे क्वीन टू a6 played by VD. What? Okay, interesting move. I would not necessarily block my a pawn. Maybe he wants bishop d5 here. Very interesting move because this looks very awkward. Wow, 138 will choose you of Gary. That's the crazy part, भाई. Imagine एक जमाने में हमारे 138 तो नॉर्मल वॉचिंग थी, आज गैरी के ऊपर देख रहे हैं.
Harry was fantastic a few years ago. Now he seems out of touch. I have to agree, Shirov. He's not in touch nowadays. It's like, I mean, he's not played like amazing chess even in a single tournament in the past couple of years. So he has to for sure try to come back somehow. Sorry, थोड़ा लेट हूँ आज. अरे पिज्जा खा लोगे आप लोग? भाई तुझे फ्यूचर में कौन लगता है जो मैरिस को हरा के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बनेगा? देखो, आई थिंक इट विल बी वन आउट ऑफ फैबी स्लैश फेदोसीव बोल रहा हूँ. what a joke. Sorry, Fabi slash Firuzja slash Anish. Like the next time. उसके next में जो juniors में है, I think it could be like Nehal, Arjun, Esipenko and so on. For me, Tikku equal to Gary. That's why I am here. This seems more interesting. अरे thanks a lot भाई. VD की नजर लाइट स्क्वायर्स पे है, डार्क स्पेस पे नहीं. भाई ये कैसा रेसिज्म है लक्ष्य भाई? What is this racism? Imagine if you take any Bollywood song and replace तेरा सोना मुखड़ा with like सोना square, like मतलब ऐसे मत करो यार, racism मत करो यार. Nepo should take the revenge. Nepo का revenge. भाई नेपो को रिवेंज लेने के लिए he has to first of all get towards C5 traumas. I think नेपो जब भी चेस में बैठेगा ना, उसको ऐसे कहेगा लाइक नेपो लाइक ऐसे बैठेगा, ठीक है? नेपो आ रहा है गेम खेलने, ठीक है? बैठा. Yeah, I adjust. And he will start cleaning the board, look at C5, he will go into a trauma, he will be like, उसके हाथ मेल्ट होने स्टार्ट जाएंगे पसीने से. So I think he will not be able to get back anymore, भाई. Not gonna lie, but all Hindi songs are a bit racist. Yeah, I don't know why they have to include like gory something like in songs. It makes no sense at all. I don't understand. Queen E6 looks stupid. It looks awkward. I don't know if it's stupid because the idea of Bishop D5 is very obvious, and you want to mate on A2. If Black is doing two moves, yeah, it will not look so stupid anymore. But it is awkward. I have to agree. Is this the last game? Yeah, chat, this is the last game. Gary Tikku और साहिल Kasparov. Okay, किसके बच्चे तुम निकाल रहे हो मुझे पता नहीं है. These are not mine. You know what is the problem with Karakin? He's a big wannabe. I think he's a big blunder. Okay. Okay. Oh sorry, big chess player I meant. My wrong. Rapport क्या कर रहा है? Rapport चला गया भाई चाय कॉफी पीने. उसकी ड्रॉ हो चुकी है भाई. So Vidit is out of this tournament. Unfortunately, it's all about just प्राइड नाउ. प्राइड पे भाई, पूरे प्राइड पे खेल रहे हैं. इंडियन टीम खेलती रहती क्रिकेट में हमेशा. आरती भाभी के होंगे. अरे ये क्या है भाई? आरती भाभी का अफेयर है तो मुझे पता नहीं है भाई. मेरा कुछ नहीं है भाई, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे. Obnoxious Bollywood. Yeah, totally. I think Bollywood का ना, I think यार, I don't know. I have not seen Bollywood for a long while now. For a long while, I've seen no Bollywood movies, and it started, I think, since the pandemic. Have you seen Levy's dog, Benjamin? I saw his video. I saw his dog. But apparently he plays the London system now. So I don't know. Big fan. बुरा लगा है हम इंडियंस जीते भी नहीं. Yeah, man. To be honest, I think VD has to push himself to the next level, and step one is to learn time management. I think he's suffering from time management. That's very obvious. I think every game, like sometimes you lag behind on the clock. Because I have this problem myself, so I can totally relate to this. Yeah, you play some awesome moves in the first 25 moves. Your opponent is under pressure. You're winning or like better, and then suddenly you have no time to calculate what to do in the remaining 15 moves, and you lose the game. And then your only excuse is, I was winning the game. I lost a winning game. I lost a winning game, and that's what I used to say to my parents. So I think, I hope he comes back. He tries to solve this problem. It's very important. Bhai, you saw the Batman. Recent वाला नहीं देखा है कुछ. On my way to India में उससे मिलने जा रहे हो क्या? Apart from Anand, no Indian on that level. Yeah, that's true. चेस इंडिया का कवरेज देखता हूँ तो सीखने को मिलता है. आवाज देखता हूँ तो 90% टाइम बकन सुनने को मिलता है जो कहीं से भी एंटरटेन नहीं होती. तो मत सुनो कौशिक भाई. आपको फोर्स होकर मैंने आशिक भाई को पकड़ के रखा नहीं है यार. प्लीज भाई वॉच CBI देन. देयर इज नो इशू देयर. ये आशिक भाई क्या हाल है? Maximus has qualified from his group. He is not qualified yet. He's not qualified yet. And by the way, White is like, bhai, come on. Queen trade. Let's trade the queens. So Queen D6 played by White now. And chat, it's very obvious. Black should not trade queens here.
If queen takes d6, rook takes d6, I think white is probably okay here. Maybe black is still better because this awkward knight, but yeah, but then if you don't trade queens, then why did you play queen to a6? If you queen a4 looks super awkward as well. Rook d4 is a possibility for white. So I think VD probably have to trade queens or go back to queen b7, and both of them don't look that logical to me. So I think probably white is going to equalize. You a DC guy or Marvel guy? I think I'm more of a Marvel guy, but I do love the Flash though. But I don't know, man. I love Batman as well. I don't know. I love both, man. I can't choose. भाई बैक में ऐसे ही सीखते हैं नो स्क्वायर पर ये क्या है भाई टिक्कू डेफिनेटली नीड्स कूलर ग्लासेस आई नो मैन को recommend करो यार I was looking at lens card I don't know which type of glasses suit me like I've always gone for these glasses and I'm bored with them I don't know which one to buy now every time I reach 1000 I get to 950 again within 1 hour of reaching it so when you reach 1000 why stop and relax and go spend time with your families. These days, it's all about pan-India stars, bhai. Okay. 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 Yeah. I was checking something, chat. मैं check कर लिया. So apparently, chat, I think if I think Rapport has drawn, so and VD is out. Then I think what will happen now is white will kind of, like VD will also lose some motivation. And if I checked his rating is not increased. Like he left India with a rating of 2727 and he still has a rating of 2722. Even if he wins, all he does is regains that rating. So it's like, sometimes this happens. You go for a couple of months abroad and you basically spend like so much money and you gain like 0 rating out of it. So that's the sad part about chess, and that's why it's so money intensive, and that's why it's not easy for him to grow, like increase really fast. Accidentally installed that तहसील माँ कसम इतना ये क्या इंस्टॉल कर दिया भाई वे क्लास में कौन से बेंच पे यार वो बैठते थे भाई ये बीच में बैठता है यार मैं हर जगह बीच में ही हूँ अपार्ट फ्रॉम माय सेक्सुअल प्रेफरेंसेस टिक्कू भाई क्या वीडी के साल कैंडिडेट खेल पाएंगे नहीं भाई यार इस साल तो ही इज आउट अनफॉर्चुनेटली even though if he wants to he can kind of relate to the project but he cannot qualify growth for life अरे भाई कुछ ढंग की ओपनिंग खेले play the London system Tata click क्या है भाई what is Tata click at one point Hari was nearest to Vishy he even crossed Vishy on the live rating bhai he crossed Vishy on the live ratings at one point and then he simply fell back Vidi catches 5 moves ahead of opponent and then the opponent plays the second best move and Vidi starts thinking again that might be also true that might be true actually but let's see rook e6 I mean yeah rook e6 but then I don't know if VD want to trade queens I mean you have some sort of pressure on the white king so if you wanted to trade like it's like queen e6 is not in black's favor so why did you play queen e6 in the first hand you just played queen a6 and now white plays queen d6 so if you take on d6 then you exchange queens in white's favor if you do not trade queens, you play a move like queen b7. Why do you play queen a6? I'm a bit confused here. We'll have to see what VD plays now. If he plays queen b7, then he obviously missed queen d6. And if he plays queen takes d6, then it was his plan to exchange queens. But that will probably lead the game to a draw most likely. Let's see what happens. See Mr. Dodgewick, निचल शॉट ने क्या बेइज्जती करी क्या बेइज्जती करी यार तुम मुझे टेम्प्ट मत करो फोन मत करो आई फील लाइक क्रैकिंग की बेइज्जती थे लाइक कहां ऐसे ऐसे टेम्प्ट होता मैं यार तुम मुझे फोन दिलवा रहे हो यार नाइजल शॉट लेट मी चेक Was really caught off prep today? I don't think so. I don't think he's caught off prep. I think he was in prep. But Petrov खेला उसने तो of course chances कम है. Okay, I can't see anything here. I don't see anything roasting Kraken though. I don't think so. Anyways.
यार नो साउंड, ओ माय गॉड, मैं बके जा रहा हूँ, अरे यार छी भाई, शाबाश शाबाश टिक्कू भाई, शाबाश। क्या स्ट्रीमर ओपी भाई, स्ट्रीमर ओपी, यस भाई क्रेजी स्ट्रीमर ओपी भाई, क्रेजी। प्रैंक कर रहे हो क्या टिक्कू भाई? अरे प्रैंक नहीं कर रहा भाई, बूमर मोमेंट्स ऑन द स्ट्रीम। एनीवेज, साहिल भाई ग्रैंड प्रिक्स में विनर रनर को कैसे डर होता है यार? विनर रनर भाई पॉइंट पे होता है यार, जो टॉप में आएगा 4 लोग निकलेंगे नॉकआउट इस लीग स्टेज से, एंड दे विल हैव सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। बिगर मोमेंट कस्पारो भाई, कस्पारो ने क्या बूमर मोमेंट किया गया यार? हाँ 50 रुपए कार्ड एक्टिंग के, अरे एक्टिंग नहीं थी, ऑनेस्टली बूमर था भाई। 1000 पहुंचे, ऐसा लगता है कि आई कैन डिफीट मैग्नस, सो द कॉन्फिडेंस मेक्स मी प्ले मोर। या बट यू कैन प्ले इट टुमारो यार, मतलब थोड़ा फ्लॉन्ट मारो, ऐसे जाओ। 1000 रेटिंग हुई ना आधे घंटे बाद, हे बेब वी प्ले सम चेस बिकॉज़ आई एम गुड एट मीटिंग, यू नो, ऐसे करके कुछ कोट मारो और फायर आउट 1000 रेटिंग यार। चलो हम मजे आ रहे हैं समय की स्ट्रीम पे, सो बाय 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 बाय। मैं तो 1650 तक से छू के 1450 गिर गया। अरे तुम 700 थे भाई एक साल पहले, तुम लिटरली 700 रेटिंग पे भाई एक टाइम पे, क्या ही फर्क पड़ता है। करीब भाई अश्लील, सॉरी अश्लील भाई, तुम्हारा नाम अश्लील है और तुम मुझे करीब बोल रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा यार? ये तो बिल्कुल मत बोलना, ये नहीं बोलूंगा यार। Can Vidi win Grand Prix? No, he can't, भाई, no, he can't now. Let's go to the game of Anish Giri once. By the way, Rook can knight d5, knight d5, bishop d5, queen c7, rook e1. I think, Chad, this is a dead draw, queen f4. So I think Anish Giri is qualifying for sure. Anish Giri is definitely qualifying from pool B. Rapport is qualifying from pool C. Pool D or pool A का पता नहीं है. Let's go to Harikrishna's game once. Yeah, kind of balanced. No way anybody can break through here. Draw most likely. Let's go with this game again. Creep OP. Creep OP, nice. समय स्ट्रीमिंग, या भाई मेरा नाम अश्लील पागल, ओ माय गॉड, खाली अश्लील नहीं, पागल अश्लील, ओ माय गॉड। मजाक कर रहा हूं भाई। आशिल है, ओके आशिल, आशिल। वेदिया, ये क्या है भाई? 2020, ये इतना बड़ा नाम, क्वीन f5, Queen f5, yeah, but Queen f5, I mean, this is like an awkward square, like Bishop d2 is possible, and I don't know what's the point of Queen c5, because it's kind of still blocking your a pawn, it has no threats, you can't play Bishop d5 anymore because of Rook takes d5, so I think Queen f5 would not do the job as well. Let's see what happens though. Just showing video, क्या हुआ? Video का चल रहा है game यार. So much hope after first 3 rounds. Yeah man, he played so well, he was 2 out of 2, 2.5 out of 3, crushing it. But then he lost the track after, sorry, 2 out of 3 actually. He lost against Rapport, that spoiled everything. Will you analyze your marriage? भाई उसमें क्या एनालाइज करना है? सीमन से तो अच्छा ही नाम है, ये बात तो है भाई। आशिल है यार, ठीक है आशिल भाई। वैसे आशिक हो सकता है यार, आशिक हो सकता है, आशिक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, आई थिंक इट्स लाइक अ मोर रोमांटिक नेम। वैसे फिक्र मत करो यार, मेरा नाम टिक्कू है, सो लाइक फनी, लाइक और लाइक यू नो स्लाइटली अनकॉमन नेम से मेरा नाम भी बहुत आगे है। Does Vidi have a chance to top pool? He does not, Manas bhai. He has no chance unfortunately because Rapport has drawn. हम सिर्फ वीडियो गेम प्राइड के लिए देख रहे हैं भाई, प्राइड के लिए और एंड द सेक ऑफ चेस भाई, और कोई रीजन नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नमकिशोर भाई। I mean he lost yesterday. It's very clear कि Rapport is the better player. As simple as that. Rapport is the better player and 2 बार वीडी को हरा दिया उसने। And there's not much he could do, because black pieces हराना बहुत difficult है, and he defeated him with the black pieces, so that's evidence कि मतलब yeah, he was just a better player. टिक्कू की टिक्की स्टॉल खोल लो, मस्त बिजनेस। अरे टिक्कू की टिक्की स्टॉल खोल देंगे तो भाई स्ट्रीम कौन करेगा यार, और बाकी सारे टिक्की वाले आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे यार। Why are we talking about sperm now? Well, I don't know man, because I played a guy named Sperm, I guess. क्लास में तो मजा करा देते हो आप टिक्कू भाई। भाई कौन सी क्लास है भाई? Rapport is definitely better. Man, yeah, he is, bhai, he is. I mean, rating tells you everything. He's 2763, VD is 2727, so it's obviously better. Gary Kasparov OP, of course, भाई। अब देखो VD के पास क्या चांस है भाई? The only chance he has, I think, is to kind of get to the C file and penetrate. Penetration always gives pleasure, and I think that's what he should do here. But the only issue here is कि is it enough? Like, is it enough
that white can, like, is this penetration enough so that white can basically come out and lose this game? But it's very unlikely. This technically we are all decent sperms. Okay, सर मुझे मॉड कब बना रहे हो? अरे चैम्प टीवी भाई बनाएंगे यार. Please, one last appearance of Lil Tico. Lil Tico will be back, भाई. Tomorrow he can be back. Lil Tico आखिरी दिन नहीं है भाई. अभी वो जिंदा है. भाई आप ऐसा करोगे तो यार IC Petrov saying that how you bully. अरे bully कहाँ से हो गया भाई? कुछ भी bully कर दिया. आशुल तो बुला रहा हूँ कुछ भी. प्रखर तो मजे ले रहा है यार. I just want to see someone get back and win master level and मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी. Look at the World Cup game of Karyakin against I think it was क्या नाम है उसका यार, जो चेस 24 का कमेंटेटर है, स्विडलर. लुक एट Karyakin Swidler, World Cup tie breaks. You will see it happen. He blurred like a rook on the back rank. अरे मजाक है भाई. फिर ठीक है भाई करूँ कैडेट्स में खेलेगा so that he could see Sergey losing. He will play, but I hope कि Sergey को खेलने का मौका ही ना मिले. I hope खेलने का ही मौका ना मिले ताकि वो बस मेरे को स्ट्रेस ना हो बस. That's a simple point there. A5 played by VD now, trying to not leave a weakness on A5, but the question is what after a move like F3? Where does the bishop go? Does it go to G6? Maybe to C2, maybe to B7. Too many options there for VD. Let's see what happens. VD is anyway out. Rating मिल जाए बस वापस. That is true यार. Is Hikaru playing candidates? Most likely yes. He's not qualified yet. Possible है. मुझे फ्रूटी का एडिक्शन हो गया है भाई. फ्रूटी का एडिक्शन किसको कैसे हो सकता है यार? हाउ कैन इट हैपन? फ्रूटी तो इतना खतरनाक नहीं है अनलेस यू सॉ द कटरीना कैफ एड यार, जहां पे वो ऐसे वो पीरियड के लिप्स पे गिरता है. अच्छा वो तो माजा था वैसे. दैट्स नॉट फ्रूटी. Watching Vidit's game over past 2 days, I feel he reached a pinnacle and this is it. Possibly, I don't know, man. I think there is potential there because you have to understand he only loses to like stronger players. It's very clear he never loses to like some weaker players. He defeats Dubov convincingly. Dubov is the same guy who defeated Carlsen. So I think there's potential, but he has not solved his time trouble issues. If he solves that, imagine if he never was under time pressure, I think he would probably play really, really well. मुझे टिक्को एडिक्शन हो गया है. अरे भाई प्लीज गेट योरसेल्फ चेक फॉर दैट. ड्राइंग 750 ml of fruity in the past hour. अरे 750 ml क्या होता है भाई? इतना तो भाई लोग क्या ही पी जाते हैं. एनीवेज 320 रुपीज बॉटल. अरे उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं है. फ्रूटी एंड मैगी आर ओजी ड्रिंक इज स्नैक. ट्रू. उसमें ऐड कर लो भाई, पार्ले जी ऐड कर लो उसमें आप ऐड कर सकते हो. आई थिंक वो लिटिल हार्ट्स होते थे ना, आई थिंक क्या बोलते थे उसको, वो जो बचपन में खाते थे. फ्रूटी आज भी मार्केट में मिलती है क्या? इवन आई एम सरप्राइज. फ्रूटी अभी चल रही है, मेरे को पता है फ्रूटी चल रही है. प्लीज एंड समोसा यू हैड प्रॉमिस्ड. अरे भेजेंगे भाई. साहिब वीडियो में कम बैक विद द फायर. या एग्जैक्टली. चलो फ्रूटी पीते हैं. विमल पान मसाला भी ऐड कर सकते हो भाई. वो आप खाते होगे, मैं नहीं खाता भाई. वांचुक शंचु तो यूक्रेन छोड़ के भाग गए. आई डोंट नो एग्जैक्टली कि भागे कि नहीं. By the way, B3 is very weird. What is B3? That's a very weird move. A4 is very obvious. Let's go A4 VD. Come on. Surely better for VD now. A4. If A4 he takes, I take with the rook. I have this rook coming to A8, bishop coming to D5. Lot of pressure on white. And if after A4 he plays B4, now I can simply push forward with A3. That would be very strong. Or I can also go rook C8 with the idea of rook C2. So I think VD is actually better now, chat. B3 is Adiban's openings and Sheena's nightmare. This is evidence, chat. Do not play B3. Either play it on the first move or never play. फ्रूटी का फ्री प्रमोशन कर दिया. मेरा फ्रूटी पीने का मन कर रहा है. मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी. हाँ याद है मुझे यार. याद है शाहरुख खान था क्या उसमें? आई डोंट रिमेंबर. शाहरुख खान था. मुझे एडवर्टाइजमेंट तो याद है लेकिन. Little hearts. Yes, exactly. That's what my ex-girlfriend left my heart with. A4, yeah, A4 looks very strong. It looks very strong. Sahil OP, thanks a lot. Demaji, thanks a lot, yeah. What's happening in Rapport's game? Rapport is already drawn. Chat, VD is out of this tournament. But the only thing is, can VD finish off with some rating gain and some respect? Like, some, pride. It's always good to finish off on a high. Did the pinned comment come true? Not really.
This is the 24th move, chat. Unless VD wins a pawn in this move, it did not come true. Defend VD's king. It's already defended. It's very safe. Vimal, kuch bhi. Have you played 193 before? I haven't. Will VD ever reach 2800 in his career? It is possible, but I think it's like it is possible. I think, but it will take at least a year. उससे पहले तो impossible है. Is Hari out? Yes, bhai. Hari and VD are both out. 24th move, chat, and VD will not be a pawn up. So जिसने वो message किया था is all. When is your tournament? Praftal bhai, my tournament is from 31st March, but there are a couple of problems with that. First of all, there are not enough foreign players in the tournament so far. If there are not enough foreign players, the norm के chances ही नहीं है. Then there's no point of playing. So I hope they get enough foreign players. And second, I hope I find enough time for practicing. So far, okay, they have a few foreign players now. I checked, but only from a couple of federations. So I still don't think they have enough to make a norm. But yeah, let's see. I might play this tournament. 31st March se Gujarati Open. Let's see. And Gukesh is also playing the tournament. Interesting. Thanks for samosa. Just got them very tasty. मिल भी गए क्या? Literally. हमारा स्टाफ कितना स्ट्रॉन्ग है भाई, बिना ऑर्डर करे ही भेज दिए. नाइस. This will be your first time now. Yes, bhai. Do you smoke or drink? Not really. Did we lose yesterday? Yes, he lost yesterday. ड्रिंक के लिए काफी बुरा लगता है भाई. देखो, बुरा सबको लगता है, ठीक है, गला हर किसी से सूखता है, बट हम क्या कर सकते हैं भाई? बिकॉज द थिंग इज, at least he was living in China, जहाँ पे he did not have to face COVID issues for the past 2 years. He was living his normal life, at least within his own country. So to be honest, like, it's not a bad deal. Yeah, you kind of don't get to play candidates, but then you also get to live within China for 2 years, जहाँ पे कोई COVID literally था ही नहीं. So you cannot really say it had only drawbacks. It also had some positive points. Do the due exactly, why? All Indians are out of this tournament. Anish bhai, I will correct you on this. Anish Giri is still playing. He will qualify, of course. Of course, we might not stream purely for Anish, but Anish is still playing and he might just win this tournament. No second wave there exactly. Bhai, first wave भी थी बस और खत्म. यहाँ पे 5 wave आ चुकी हैं. He was in a most democratic country. Okay, that is a topic for another stream, but I think at least एक benefit था कि वहाँ पे COVID नहीं था. What was the worst possible move here? I guess Rook D3 is the worst possible move. Giving away a Rook. Yeah, Rook D3 is the worst possible move. I think best move VD is Rook A6. No, first of all, it's White to play. White to decide. Does he play B4 or does he capture on A4? I think VD is definitely better. There's no doubt. With this bishop on this diagonal, the Rook on the A file, even without queens, I think Black is definitely pushing. And there's an attack on the White king. Lakers are losing like crazy. I don't follow it, bhai. So I am all chill, bhai. नासिक आओ, टूर्नामेंट भी है. आऊंगा भाई, नासिक आ रहा हूँ मैं. बाय द वे, अप्रैल के मिड में नासिक आऊंगा मैं. वहां पे नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्स है, so I might play that one. Will you become GM? Hopefully someday. Poll if your viewers want Anish game stream. Yeah, I don't think so. I think यहाँ पे लोग yes लिख देंगे, but Anish game खाली देखने में उतना फील नहीं है ना, because technically even though he's Indian, officially flag वो नेदरलैंड्स का है. NBA भी देखते हैं लोग इंडिया में, कुछ लोग देखते हैं. I am fan of GSW. GSW क्या है भाई? I guess Rapport is a player like Duda for VD, very little beat. I don't know. Yeah, you have these players जो लोग आपके against बहुत अच्छा खेलते हैं usually, and एक बार हार जाओ, it becomes more likely you lose the next time as well. I think best move for White is Rook to D8. Okay, I hear you, but I don't think that's what Fedoseev will play. Golden State Warriors. Yeah, I don't follow it actually. I have not followed it. GSW gunshot wound. भाई क्या बात कर रहे हो शिवम? Will you continue supplying samosas after you become GM with sauce? Okay, I think you misplaced the word sauce there, because GM with sauce क्या होता है ये मुझे पता नहीं है भाई. Bishop B1 brilliancy. अरे गर्वित भाई, Bishop to B1. Okay, what after King? Okay, first of all, it's White to play, so I don't know. He can't even do that. I am not crying seriously. ये क्या हो गया भाई? लड़की भाग गई क्या? अच्छा, GSW की फुल फॉर्म कह रहे हो? अच्छा, अरे यार मैं भी नूब हूँ. अच्छा, GSW, नाइस.
VD winning. Oh, by the way, he played the move king to B2. Really? Blunder. VD is winning. Chat. अरे भाई जीत जा यार. Final sauce is not good. Chutney is the best. अरे VD is winning. Chat. Come on. VD भाई जीत जा यार. Please finish on a high. Rookie C8 और A3 check both look very strong. Come on VD भाई. Come on. Looks very normal. Completely winning for VD now. Chat. Completely winning. come on. Will super chat dollars? Oh my god, नहीं भाई, it's not required भाई, it's fine. पहली बार स्कैम नहीं किए. अरे स्कैम नहीं है भाई, समोसा सॉस के साथ ना. क्या बात करो तुम भाई, सॉस हो या चटनी हो दोनों बढ़िया. बिग ब्लंडर एग्जैक्टली भाई. नाउ A3 चेक एंड A3 के बाद किंग पूरा बैक रैंक पे अटक जाएगा बिल्कुल. नाइट G4 ब्रिलियंसी भाई. क्या फूक क्या हो गलत भाई. डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? Chutney greater than sauce. Okay, agreed. I take you with your on face value. Come on भाई. छी भाई, समोसा सॉस के साथ कौन खाता है भाई यार. सॉस से खाओ, समोसा से खाओ भाई. हम तो दोनों जाते हैं भाई. वी आर वेरी फ्लेक्सिबल. फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं हम, और फ्रीडम ऑफ सॉस में भी. सो वी सेंड बोथ. I feel like Vidit's A4 was just like yesterday. Yeah, by the way, if he wins after A4, that will be crazy. None of the business is the answer. Tikku bhai, not him. नहीं भाई, I think he's trying to see कि उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं पटा ली मैंने, मे बी मोस्ट लाइकली. नहीं पटाई भाई, चल करो. समोसा विद ग्रीन चटनी सॉस एंड रेड चटनी यक. सो चैट, आई थिंक यहाँ पे सारे ग्रीन चटनी फैंस हैं. नाइस. A4 into B3. No, that's not a good move. That's not a good move. If you capture on B3, 8x B3, white will have rook A1 or rook C1 kind of holding on to the game. So I don't want that. I want A3 check, and when the king goes back to A1, then you go rook E8 or rook A8 and try to get into C2 with back rank mate. So even though Rapport को back rank mate नहीं कर पाए हम, maybe we can back rank mate Fedoseev, or you can also play the move rook C8 directly threatening rook C2 check. It's also possible, but it's not like winning by force or anything. But it's definitely very good for win. I am cheering for Fedoseev, but why? काहे देश के खिलाफ खेल रहे हो भाई. एक प्लेयर है जिससे मैं बार हार जाता हूँ. क्रेजी मार्शियन भाई. क्रेजी मार्शियन तो इंसेन है. Will you order anything today? नहीं यार, I will not order यार. I mean, I ordered yesterday, so I think अब पेमेंट और पैसे दोनों वेस्ट नहीं करने. I am cheering for Fedoseev. अरे क्यों भाई, क्यों भाई. रैपोर्ट का क्या सीन है? अरे मस्त सीन है भाई, मस्त सीन है उसका यार. नेवर फील दिस मैच. आई लव रेड चटनी. अरे नाइस. कैन यू बीट समय रहना हॉकी स्टिक से कि किससे? व्हाट आर देयर रेटिंग्स? विदित इज 2727, Fedoseev 2704. कजाकिन को ट्रैश टॉक करो प्लीज यार. आई कांट डू इट. मैंने थक गया. क्रैकन बोल के उस बंदे को बैन करो. सो ट्विटर बंद कराओ कोई. प्लीज रीड माय चैट. ओके, रेड इट. Fedoseev को लगता है हमारा कन्वर्जन सुनने को मिल जाए, लालच में ब्लंडर कर दिया. आई डोंट थिंक सो. Fedoseev को मैंने पहले बहुत बोला था, पहले हार जा तू. पहला ही मैच हार जा विद के साथ, पर हारा नहीं वो. एक्चुअली हारा था एक्चुअली. नहीं हारा था. वीडी ने किसको हराया था यार? अच्छा, वीडी तो इसकी को हराया था वीडी ने. ओ हाँ, इसको हराया था. ओ नाइस, माय बैड. ओके, प्लीज डोंट. ओके, ये वेबकैम है, मॉनिटर कैम, ये कैमरा है भाई. By the way, VD plays a good move, rook C8, and now White has to decide what to do. Maybe he goes rook C1. Let's see. Kayaking कौन है exactly? Shirov और Fedo भाई मैंने Fedo का पेडो पढ़ा. Yeah, that's a draw already. So they have drawn. VD is out of the tournament. I honestly want Fedo to strip Kayaking from his GM title for writing controversial. I think they will not do that. That is very unlikely. But I feel at least कैंडिडेट से निकाल दो उसको. Read my last chat. I read it, bhai. I read it. Hopefully, we are on a high note. Yeah, that's the hope, bhai. That's the hope. And honestly, I don't see how White can defend this now, because this rook does not have an easy path back, and this knight does not have an easy path back. Rook C8 is blunder. Neither VD figured it out, not Stockfish. Arey, crazy, bhai. Crazy. Torch bhai has discovered a move which even Stockfish has not discovered. Awesome, bhai. VD for block नहीं बोले तो बस. I think till the year 2005 VD for block ही बोलते. गए भाई, क्या बोल रहे हो भाई? आज समय के चल रहा गैरी किस्पारोव has come. I know भाई, I know ऋषि भाई, I know he's there.
आर यू एन आई एम? आई एम एन आई एम भाई, नॉट एन आई एम बनेगा, ड्रीम तो ये है इस साल बनेगा, जून तक इनफैक्ट. Now chat, the thing is, white has to do something. Rook c8, rook c2 check is the threat, and there's not much he can do. So the only move to defend it is rook c1, obviously, और कुछ है नहीं यहाँ पे. And then you give a check. King a1. Chat, I'll be back in 6.9 seconds. भाई खाना मंगा था भाई. समय को सागर नहीं सिखा पाया ये. भाई क्या सिखाना है समय को सागर ने? बाय द वे रूकी से व्हाइट ने खेला नहीं अब तक. नाउ आई एम चीयरिंग फॉर वीडी भाई, फॉर कंट्री. भाई पहले तो आप फिर कुछ कर रहे थे, अब जब वीडी इज विनिंग नाउ यू आर चीयरिंग वीडी. ऐसे कैसे भाई? क्या विनर को चेयर कर रहे हैं सिर्फ? Are you FIDE master? Not really भाई. FIDE master is a झंडू टाइटल भाई. क्या ही झंडू. जस्ट लाइक सी FM, NM, CM, ये टाइटल वो टाइटल है जो भाई कुछ लाइफ में कर नहीं पाते, उनके लिए है. जस्ट लाइक मी. सो आई थिंक द यूजलेस टाइटल्स. IM is a good title भाई. IM से स्टार्ट होता है मेन. म्यूट नहीं. I'm back. भाई ऑर्डर फ्रॉम उबर ईट्स टुडे. भाई ये क्या मतलब? कोई वो ईटिंग रिव्यू चैनल कर रहा हूँ क्या? पहले आज उबर ईट से करते हैं, कल जोमेटो से करते हैं. देखते हैं भाई कोई ना कोई चैट में उबर ईट्स का निकल जाएगा भाई आपने ये ऑर्डर किया था. आई एम इज ऑल्सो झंडी टाइटल अकॉर्डिंग टू गौतम चेस. ऑफ कोर्स मैन, वो तो बोलेगा ही ना. बाय द वे ओके, समथिंग हैपेंड. ओके, नथिंग. ईटिंग असिस्ट, नाइस. तो आप यूजलेस हो, मैं यूजलेस नहीं हूं भाई. मेरा टाइटल यूजलेस है. डिफरेंस है, बंदा यूजलेस नहीं है, टाइटल यूजलेस है. The best move for white is bishop to a7. Yes, of course, Rishi bhai. Of course. I mean, crazy move, bishop a7. The only one enter is flex to Rishi sir. भाई किसको फ्लेक्स करोगे? हम टाइटल किसको करोगे भाई? इमेजिन करो तुम रिश्ता कर, इमेजिन लड़की नहीं जा रहे हो, ठीक है? यू नो व्हाट अंकल, मेरे पास एनएम टाइटल है. यस. जस्ट इमेजिन उसकी वैल्यू क्या है भाई. घंटा किसी को पता नहीं टाइटल क्या होता है. रुक a5 बिलियन सी. भाई क्या फूक किया है भाई? Man sucks for VD. Yeah, it is भाई. It does suck. And even if he wins today, then it'll suck even more because then it's like मतलब he missed out just by half a point. That'll be really disappointing for him. Of course, it'll be also good कि आधे points छोड़ा तो it's like kind of, you know, you have compensation there, but it will be sad. He will be sad, of course. फ्रूटी के नशे. अरे नाइस भाई. फ्रूटी प्रोमो भाई गर्वित जैन. इलॉन मस्क का ट्वीट नहीं है समझ आ रहा भाई. मुझे समझ नहीं आया भाई. इतने बड़े आदमी का क्या ही समझ आएगा. चेस असिस्ट, पॉलिटिक्स असिस्ट, ईटिंग असिस्ट, देन व्हाट एल्स? देखो, I can go with dancing assist, I can go with flirting assist, I can go with yeah, इतना ही है. Hikaru versus Sergey Karyakin. Who wins in a boxing match? भाई हिकारू दांत तोड़ देगा कराकिन के भाई, लिटरली. साहिल भाई सीएम टाइटल में कोई इंपॉर्टेंस है क्या? यार ऑफ कोर्स है, बट इट्स नॉट दैट मच. जैसे कि व्हाइट से वीडी को D4 खेलना चाहिए या था सोल्ड आउट, फिर इसका हारा था, बहुत मुश्किल है ब्लैक से. ये ब्लैक से आना मुश्किल तो है, देयर इज नो डाउट. आई थिंक VD हैज मैनेज्ड टू ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन एंड ही कैन विन दिस वन. द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि मतलब देयर इज नो पॉइंट, ही विल नॉट स्टिल क्वालिफाई. हिकारू की टोन निकली हुई है, सर्वे फेल देगा उसको. सर्वे की भाई, सर्वे की अलग तरह की टोन निकली है. वो बॉडी में नहीं है भाई. बिशप a7 फिर रुक c2. रैपोर्ट क्या हुआ? रैपोर्ट को ड्रॉ हो गया. रैपोर्ट इज ऑलरेडी ड्रॉन चैट, ही इज ऑलरेडी ड्रॉन. तो अनफॉर्चुनेटली रैपोर्ट गोस थ्रू इन पूल C. रहने दो भाई, फ्लोटिंग असिस्ट आपके बस की बात नहीं है. हाँ वो तो है भाई. ट्रू.
गिव अस एग्जांपल्स ऑफ फ्लर्टिंग प्लीज। भाई नहीं यार, फैट शेमिंग साहिल नॉइस। भाई फैट शेमिंग नहीं भाई, दिमाग शेमिंग। अरे प्रोमिश भाई, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। भाई मेरे को लाइफ में आपकी जैसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। ऐसी कौन सी कंसिस्टेंसी है हमारी लाइफ में यार? ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में आपकी लाइफ में चाहिए? ऐसा क्या है भाई? बाय द वे, ही प्लेड रुक C1। लेट्स सी। अनीश, अरे अनीश क्या हुआ भाई? अरे अनीश विल क्वालिफाई चैट, अनीश का क्वालिफाई कंफर्म है चैट, अनीश विल क्वालिफाई। ये गेम ड्रॉ होगी, देयर इज नो डाउट। सिंपली अ मूव लाइक rookie 7 should be draw. So Anish is going to qualify. Anish Giri goes through the knockout phase. Harikrishna is out of course. He is completely lost against तबा तबाही। फिर से पिलते हुए हरिकृष्णा तबा तबाही के साथ। ये तबा तबाही इकलौता बंदा हरिकृष्णा का करियर खत्म कर देगा, मुझे लग रहा है भाई। क्या है तबा तबाही? Let's go to Vidit game now. Who's winning? SC+1 स्ट्रीमिंग। यार स्ट्रीमिंग में तो टाइम लगता है ना यार। आई थिंक आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, आई थिंक चैनल की पहली वीडियो आई थी 9 अप्रैल को 2020 एंड पहली स्ट्रीम थी आई थिंक सितंबर में 2020 की। तो बहुत टाइम हो गया ना यार। आपका वर्क एथिक चाहिए, मेरा वर्क एथिक बहुत टेरिबल है भाई। लेकिन आई डोंट गिव अप, दैट्स माय स्किल। आई नेवर गिव अप, दैट्स माय ओनली स्किल। आई नेवर गिव अप, दैट्स माय ओनली स्किल आई गेस। Anish can draw any position. I know but he can. By that AC check played by VD now and king to A1, and now he's thinking, and now only move for VD to have a winning position is knight to D5. Come on VD, find it bhai, please. Please find it, please. He has a couple of other moves that give him an advantage, but not a winning move. Come on. Draw गिरी क्या होता है यार? When will you do Simul? भाई यार साइमल देखो चितको में पॉसिबल नहीं होता, एंड वी डोंट गो टू इंफीरियर वेबसाइट अनफॉर्चुनेटली। You know what I'm referring to. Is there any concrete advantage for black here? For sure man, because the white king is completely tied down on A1. It can get back mated of course. For example, you can imagine the pawn pushing to B4, one rook coming to C1 check and B1 mate, or directly C1 mate in fact. So I think there's not much to do, and black needs to cut off this rook from the white queen side. So knight D5 makes a lot of sense. Let's say knight D5. And you try to play, rook takes C8, rook takes C8. You can see how there are some issues here. Of course, black has to be careful, खुद back rank ना हो जाए, but I think black should be much better here. रोज समोसा मिल जाता है विदाउट फॉल, कैसे कर सकते हो भाई? अरे वो तो भाई हमारे स्टाफ का क्रेजीनेस है भाई, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने करेक्शन मिला करके है। Will VD qualify? Just join. नहीं स्टेफन भाई, he will not qualify today. Leeches is superior, at least it doesn't scam people भाई। देखो भाई, अगर मेरे 3 लाख रुपए चेलकॉम खा गया, लिटरली खा गया, उसके बाद आई कैन से चेलकॉम इज बेटर, तो इट इज बेटर फॉर श्योर। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। हरी जी कभी 2770 थे, हाँ, और कभी कभी मैं भी 6 पैक थे। एनीवेज, आई कैन बीट यू इन ऑनलाइन चेस। ओके, ऑफ कोर्स। साहिल टिक्कू इज हु विन द डांस बैटल? ऑफ कोर्स भाई, मैं जीतूंगा भाई, गारंटेड। मूनवॉक कर इसको नीचे गिरा देना मैंने। कालू सर को वहां मारेगा जहां सोचा भी नहीं होगा। देखो, Karyakin cannot mess with like people like Hikaru, Samay and so on, because they have a huge following, and of course that's why he's very civil when he talks about them. But when he talks about Nigel Short या somebody, he roasts them completely. Like जो वो कौन था वो FIDE का जो बंदा है, Satoshi. He is ready to roast Satoshi like as much as he wants to. इसे क्योंकि आपके पास हीरा मेंबरशिप है, हम गरीब स्टूडेंट कौन सोचेगा? अरे भाई ऐसा नहीं है भाई, हीरा मेंबरशिप क्या होता है भाई? आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील, आई बेयरली यूज इट एनीवे। नेक्स्ट स्टेप अप वाला रोबोट डांस या वाटर डांस करो। जो मैं डांस करूंगा ना भाई, वो दूसरी, अगर आपने वो सीन देखा है, जो दूसरी टीम में वो स्लिप होते रहते हैं ना भाई, ये बेगिंग मैं वो वाली टीम का पार्टिसिपेंट हूँ भाई। एमएस दोस्ती एग्जैक्टली। हीरा मेंबरशिप का कुछ जुगाड़ भी नहीं होता, कितनी कोशिश कर ली। हाँ भाई, ये जैसे वाला कोर्स थोड़ी है जो तुम फ्री में खरीद लो। ND5 कैसा है? बहुत बढ़िया भाई, उमदा ब्यूटी है ND5 यार, ब्यूटी। GM हिकारू से GM साहिल टिक्कू भाई, एक दिन भाई, सम डे भाई, सम डे। $95 played chat, and now VD is winning. He just has to find some good moves, not get back rank mated. I think he should win this one.
He's completely winning now. टाइम नहीं है. अरे यार यही तो प्रॉब्लम है यार. वीडी के पास कभी समय क्यों नहीं होता यार? I think वीडी नीड समय. He never has time on the clock. This is the only reason he ends up losing like this or drawing like this. He's completely winning now, but he has no time on the clock. It's still better than last time, of course. He has to play 13 moves in 15 minutes, but still very difficult. मुझे आनंद जी का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. वो चेस के कपिल देव है इंडिया में, for sure. Idea is to cut off this rook first of all. The rook cannot go back and defend the white king. And of course, later we go knight b4 or knight c3 as well. And also attack the bishop, by the way, which defends the c1 square. For example, right now, if it were black to move, I would simply take on e3. And the rook is hanging. Rook takes c8. Let's say white plays g4, yeah, random move. I take on e3 and white resigns because rook is hanging. Rook takes c8. Rook takes c8 and there's mate on c1. So white cannot take back the piece. So knight is an excellent move, threatening knight takes e3. Samay says some videos new second. We don't have Samay after getting Samay if you know what ये क्या है भाई. क्या खा रहे हो? अरे सैंडविच खाना यार. I'm eating sandwich right now. आज डिनर नहीं किया ना. VD cannot qualify, chat. He cannot qualify because Rapport already drew. He just already drew. उसने विदित के सपने लिए, उनको लिटाया, उस पे लिटरली एक चुल्लू भर पानी से मग वाले पानी से पानी डाला, and unfortunately VD cannot qualify, but yeah, he can finish on a high. He can defeat Fedoseev. That would be really beneficial. डाइटिंग में हो क्या? अरे घंटा डाइटिंग में भाई. 15 मिनट कितने मूव करने होंगे? I think he has to play 13 more moves now. Knight f5 is totally possible. Yeah, that could be possible, but not right now. First of all, white has to take on c8, I think. समय इसकी कसम, I know. आपको इस साल एंगल मिलेगा भाई, कंफर्म. इस साल लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई. इस साल मैं लेके रहूंगा भाई. VD cannot qualify. Yeah, he cannot. VD cannot qualify for the candidates now, chat. He cannot, unfortunately, but he can defeat Fedoseev with the black pieces. Finish on a very high note and gain his rating back. Is there any other Grand Prix after this? There is one more, but VD is not playing that one. Anish Giri is. How old you are? I'm 29. समय का प्रॉब्लम है, हर बार समय की वजह से आता है VD. Yeah, officially that statement is true, but not in the way you meant it. How old you are? I'm 29, bhai. VD's rating right now is 2722. I think if he wins, he will gain like 5 points. कल ड्रॉ कर लिया होता तो कहानी कुछ और होती. हाँ, कल ड्रॉ किया था, लिटरली कल सिर्फ ड्रॉ कर लिया होता ना, he would win today, he would come win this event भाई, क्योंकि उसका ड्रॉ हो गया है. शिट यार, एक आधे पॉइंट से रह जाएगा वो. अनफॉर्चुनेट. Anish के मैच स्ट्रीम करोगे? I don't know, Soumya. I've seen the Anish matches because he's technically, well, on paper not Indian, so इतना उसका क्रेज होगा नहीं. This time really should have qualified from this group. It's disappointing. Yeah, to be honest, yeah, I agree with you because you had 2 out of 2. He was completely winning. फिर Rapport का सदमा लग गया. Rapport भाई ने पूरा खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया. आपकी रेटिंग कितनी है? FIDE रेटिंग 2201. फिर Rapport भी तो विन के लिए खेलता ना फिर. Yeah, but at least I know he'll play for a win, but कम से कम टाई तो guaranteed था ना. Like, at least we would have a tie now. Yo, Mir bhai, कैसे हो यार? Why VD cannot play the next Grand Prix? Because 3 Grand Prix थे chat, and everybody had to play 2 of them. Nobody had to play all 3. So because of that, VD cannot play the Grand Prix, third Grand Prix, and his 2 Grand Prix have finished. And now it's all about, just kind of finishing off on a high. I think that's all he can do. और कुछ वो कर नहीं सकता. Thanks for Mihir bhai. What knight f3? Knight is hanging. Yeah, but right now white is losing his king, to be honest, because it's knight takes e3 followed by rook takes c1. So white first of all has to take on c8. There's nothing else, otherwise he loses. Next GP cover करोगे? Most likely नहीं, because Anish का खाली cover करना makes less sense. I will cover it, but in some way or form, जहाँ पे I'm trying to look at, जब भी tie break होंगे ना, जहाँ पे Anish खेल रहा होगा, I will cover those. What is good, man? Really has improved a lot in this year. I mean, good position Tata Steel in Grand Prix 2. What do you say? I think
yeah, he's improved, but it's not enough to kind of qualify for the tournament candidate. So I think people kind of expect him to qualify because he's the only one. There's nobody else there at the top, and that's kind of a statement to how strong VD is. There's literally nobody there from India who's even close to him right now. So, I mean, Harikrishna is not playing so well, and Anand sir is, of course, not playing nowadays. So, apart from both those two, it's only VD. I will call Arjun के विष्णु मैं कितने बजे पता है क्या? At what time it is? I think it's at 12:15. VD is completely winning. Yeah, Somba is completely winning. Tie break मतलब क्या, जब भी किसी का equal number of points है, there will be tie break between them. Anand is not playing. I think it's a mix of many things because he's helping out other students right now. Also because of COVID, and there are not many top tournaments going on as well. This hurts, man. It was like 99% will really. Yeah, it does, man. 2 out of 2 tha. He was leading the tournament. It was crazy. It was crazy. I was so sure he would qualify this time, but क्या कर सकते हैं यार? It did not turn out to be that way. Did Rapport win this game? Rapport drew his game, man, but that was enough to qualify for the candidates. So, for the pool C. So unfortunately, it did not work for him. Arjun is close to VD in chess strength. Yeah, he is close, but those are difference है ना, वो 40-50 पॉइंट का. It's not easy to cover, man. It's not easy. समय बैठ गैरी सर, क्या बात कर रहे हो? Yeah, Fedoseev is really sad, especially if he wins today. मान लो VD जीत गया, he goes to 3.5 points and he misses it by half a point. He'll be so pissed at himself. Really, he'll be so pissed. So, yeah. Why don't you stream playing Norbits? I do stream it, I will stream it. Thank God he's winning the last match and he didn't go into a tilt, even though it's heartbreaking. Still, the game might improve his confidence slightly. That's true. Yesterday we should have drawn. Absolutely correct. If he had drawn yesterday, he would be in the game right now. Why will he out? Because he has to qualify from his pool. Yeah, he's out otherwise. Arjun is playing the Bullet Chess Championship today. I think it's at 12:15 a.m. रात को है, पूरा रात को भाई. Midnight के बाद जब सारे भूत निकलते हैं, तब हरिकृष्ण अर्जुन निकलता है चेस खेलने के लिए. Tikubai VD played a pawn move in the 24th move. Yeah, but he did not win a pawn. अनीश बदला ले लेगा भाई. अनीश तो लेगा भाई. अनीश तो पक्का बदला लेगा. लेकिन यार बदला नहीं यार, पहले ही जीतना था यार. No Indian candidates now. As of now, no. But Anish Giri can qualify technically. Gary is live with time. Nice. Since I started following, VD is always like so close yet so far. Yeah, I think so, but that's a good sign. No, like he's so close yet so far. So कभी ना कभी तो आएगा moment जहाँ पे he will cross the milestone. Yeah. Sad that he can't even qualify 3 wins. Yeah, that's the sad part. Yeah. But he doesn't have 3 wins. I think he has. I think he's 2 wins. Acha, you mean? Yeah. If he wins this one, wasn't it a loss against Dania? Yeah, he lost, but there's a loser section as well. So एक winners pool है, एक losers pool है. So Arjun will be playing today in the losers pool. Game management has to improve for VD such. Yeah, exactly. And time management is one of the most important elements there. He's just suffering on the clock. That's very obvious. Even right now when he's winning, he's low on the clock. In next 5 moves, where will you see yourself? Maybe GM. Next 5 moves, next 5 months, years. This heartbreak feels like the World Cup wala heartbreak where VD lost to Luda. Yeah, that is true. If VD wins this one, it will be kind of similar. Although it's a bit different because वहाँ पे he would directly qualify for the candidates. यहाँ पे तो of course it's not the same. Is the chance? No, there's no chance now. There's no chance now. VD can move ahead. Unfortunately, Manik bhai. Who Marcus is playing? He's playing Jordan Win Forest, I think, in today's bullet match. Next 5 decades, भाई. Next time lifetime lives ही बोल देते भाई. फिर इतना बोल दिया तो. Nice. Okay, chat. Let's see what VD plays. Let's go to Anish's game once. Is he drawing this? Easy draw now. G6 now. Move the bishop and shake hands. So Anish Giri qualifies. Yeah, this is already done as well. Harikrishna is completely lost. So he will also lose this one. And finally, we have VD who's winning. Let's hope so he can finish it off. अंकल आप 50 के हो कि 60 के? आपकी गर्लफ्रेंड से भाई 2 साल बड़ा. Next 5 lives, nice. What will be next OTV of VD? I am not really sure, bhai. I'm not really sure कि next OTV कौन सा खेलेगा VD. I told you VD always has a good record against Russians. Yeah, but chat. I mean, the thing is, it's not just Russians, man. He had to play well against Rapport, Hungarians as well. Unfortunately, it did not work.
Tell me the golden words Rapport lost. Even if my girlfriend said that I cannot say it to her right now, unfortunately, because Rapport did draw the game and Rapport has qualified by, unfortunately, but he has, and there's not much we can do about it, unfortunately. क्या करें chat हम लोग? You play as well, but you should learn from Nihal. I will. Let's go. Kraken is eliminated and VD gets a lucky chance. Oh, that is possible. That is totally possible. But why will they choose VD? That's the problem. Like, even if they technically get a chance, why would they choose VD? That's the issue. Who will be next Indian world champion? I think it's most likely going to be one of three players. Vidit, Arjun, or Nihal. You didn't defend Vidit's king yesterday. Yeah, I did. I did defend his king yesterday. I did not defend it today, so I think मुझे defend करने की जरूरत ही नहीं है. ये Rapport engine use करता है. हाँ भाई, धरने में बैठ जाए. अनशन पे भाई पूरा वो टूर्नामेंट के बाहर. Rapport engine करता है. Prague is also possible, but I feel कि Prague is lagging behind on the ratings graph, and he can. अगर मुझे top 3 choose करने होंगे तो I'll probably choose Arjun, Nihal, and VD. I think. Prague को थोड़ा नहीं है कि totally become world champion. Knight F5 now, chat. Knight F5 played, भाई. Knight F5 played. And chat, यहाँ पे बहुत सारे moves है. I think this is a mistake. Sahil were candidates. Yes, agreed. Chat, Rook D8 is completely winning for VD. Rook D8 wins on the spot. Let's find out why. Rook D8, and now the knight is hanging, the rook is hanging. Rook takes D8, rook takes D8, why is it winning? Even I'm trying to understand. There's a move knight to D6. What? Knight to threatening rook C8. Knight takes E3. F takes E3. Bishop takes G2. Knight takes D5. Bishop takes H3. Knight takes A3. And now G5. And I think black is just completely winning this. Bishop against knight is very, very helpful. The rook is coming to D2. I think VD can win this. Come on, VD, find some crazy moves. NM for a reason. Exactly. Isn't it unfortunate that we didn't qualify? Not that Rapport qualified. He did well to qualify. That's true. Both Harikrishna and Adiban declining. I mean, it's hard to say they're declining. I think decline is temporary because they've played very limited tournaments in the past couple of years. So it's like, it's very hard to judge also. I think they can always come back. Yes, I saw some people saying Prakhar didn't deserve to win yesterday. My question is, how can a guy win if he doesn't deserve it? Like Carlsen doesn't deserve to win as World Championship. The thing is, in the World Championship, it's classical chess, so the variance is very low. So I think it's very difficult for anybody to defeat Carlsen. But in the bullet tournament, it's possible to have a bad day. It's just 1 day, 1 hour. And Prakhar, of course, is... I don't think anybody was the favorite. I think Samay, Prakhar, Joel, Beastars, ये सारे बराबर के player almost. ज़्यादा difference है नहीं. But Carlsen is much better against, like, as compared to most of the chess players. ये रजब कहाँ अंडरग्राउंड हो रखा है मुझे पता नहीं कहाँ यार. I have no clue रजब. Unfortunately or fortunately, I have no clue where he is. Why is he hiding? Maybe he's playing for the candidates. Rapport को मारो कह रहा है कोई. भाई Rapport को मारने की जरूरत नहीं यार. वो तो अपना गेम जीत रहा है बस. कोई कह रहा है मारो, कोई कह रहा है मैरिड. मतलब क्या है, मारना है कि मैरिड है? मुझे बता दो भैया. अभी भाई वीडी क्या कर रहा है? अभी आया हूँ भाई. वीडी गेम खेल रहा है यार. What are you eating alone? Alone मतलब alone मतलब कैमरा के थ्रू पास करूँ क्या? ये लो भाई, चैट सैंडविच फॉर यू, प्लीज हैव इट. प्लीज भाई खाओ यार. व्हाट आर यू ईटिंग? अरे मेरी कैमरा की बैटरी भाई गायब हो चुकी है. कैमरा की बैटरी. अब कौन से पोज में अटकूंगा मैं, वही देखना बाकी है. कौन से पोज में अटकेंगे चैट? कैन यू गेस विच पोज विल आई गेट स्टक इन? और भाई एक और टट्टी पोज. गैरी सर थे समय की स्ट्रीम खत्म हो गई क्या? तन्मय टोल्ड गैरी टू से बेटे मौज कर दी. नाइस. आधार कार्ड कैम नहीं आएगा भाई. नो आधार कार्ड कैम चैट. You're all to go for आधार कार्ड कैम श्योर. स्क्रीनशॉट कोई ना ले तो बेटर है. योर ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर भाई गैरी कस्पारोव फॉर टुनाइट.
कस्पारोव भाई समय की स्ट्रीम में आगे उधर भी दर्शन दे दो यार। ज्यादा बस आगे से लेफ्ट लेना है बस। यार देखो कस्पारोव भाई इंडिया की गली में घूम रहे हैं, सो ही कैन टोटली कम टू आवर स्ट्रीम। कस्पारोव भाई प्लीज आगे से लेफ्ट, आगे से राइट और अच्छे से चैनल पे पहुंच जाओगे तुम। कम ऑन जल्दी आ जाओ कस्पारोव भाई। ओके कैमरा कमिंग बैक इन 3 2 and 1 आई एम बैक। आधार कार्ड कैम के बाद असली कैम इज ऑल्सो बैक भाई। आई एम बैक चैट, आई एम बैक। Centralization and it's sexy again. Oh my god, I'm so sexy. Anyways, oh not this. Yeah, बढ़िया। So chat क्या हाल है? Lol, we can actually see ये क्या भाई? तमय and team almost try to draw with Kasparov. भाई टीम में कौन कौन था? Yo रामदास भाई, I prefer Gary Kaspersky over Mac. Nice. Rapport already drew भाई, Rapport draw हो गया भाई, VD is out. VD is out. VD is winning. He's completely winning, but he's still out. But at least जीत सकता है. Is VD winning? He is. You think VD did not prepare for Rapport? I don't know. He did prepare भाई. मतलब घर बैठ के अपना वो grapes थोड़ी खा रहा है VD. Prepare तो कर ही रहा होगा. Rapport blunder भाई. Rapport की गेम खत्म हो चुकी है. समय stream ended. Do you think I not know about this? I mean watching इस तरह से 150 से 200 से 400 पहुंच गई. Of course the stream ended. प्रखर अनिर्बाण वैभव समय तन्मय. Nice. What about Gukesh is only 15 and 2620. Gukesh is 15? क्या बात कर रहे हो तुम? गुकेश जी 15 साल का है? क्या बात कर रहे हो तुम? Holy Gukesh is 15 years old. भाई ये तो सबसे बड़ा टैलेंट है फिर. Crazy. गैरी को हंसा दिया फाइनली. भाई कोई स्क्रीनशॉट ले लो यार. वेलकम बैक. नाइस. मैं भी नियरली 16 का हूं बट आपकी रेटिंग 2600 के बदले 600 है भाई, ये डिफरेंस है। गौतम चेस डिफीटेड विदित ऑनलाइन। भाई विदित तो यहाँ ओटीबी खेल रहा है, ऑनलाइन कैसे खेल रहा है? तन्मय ट्राइड, वाह बेटे मौज कर दी। कस्पारोव के सामने क्या? रैपोर्ट ड्रू अर्चित भाई, ही ड्रू ऑलरेडी। So VD is out. He is out, but he still can win the game at least. Whenever I don't get indulged in VD's match, he wins. Should I stop seeing these matches? Whereby it doesn't matter right now because he cannot qualify for the candidates now, but he can win the game, so it's not a big deal. If PD wins today, does he have any chance? No, bhai. Because Rapport drew his game. Rapport दगाबाज शिरोव से ड्रॉ कर गया भाई. So Rapport ने पूरा पानी फेर दिया, चुल्लू का पानी फेल दिया उसके ऊपर. Take a good at Gary versus Comedians game. We'll have a look by at the end अगर टाइम बचा. By the chat आज अर्जुन की गेम भी है. I think it starts at 12:15 AM. रात तो रात स्लो मोड ऑलरेडी है भाई. मैं 17 का हूं, आई एम 1700 तो बढ़िया है भाई. 30 पे आप 30 साल रेटिंग हो जाएगी आपकी 3000. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स क्या बोला मैंने? सॉरी. Somebody just mentioned stalemate and Kasparov chuckled. Nice. शिरोव ने दिया धोखा भाई. शिरोव बेचारा यार क्या क्या करेगा, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने शोल्डर्स पे बेचारा. Gary said it was almost equal. Nice. What about Anish? Anish is winning. Anish is drawing this game and he's going to qualify chat. Anish Giri qualifies from Pool B. But Pool C se I think Richard Rapport will qualify now. The only question is can VD end on a high, and he's completely winning. He has to find the move rook to D8 and he's completely winning here. फिर long time जीत भाई. Best move is rook d8 and it's a very paradoxical move because it's like open file से rook को तुम यहाँ पे डाल रहे हो जहाँ भी it doesn't make much sense but it's crazy. VD का टाइम यहाँ भाई, VD का और समय का कनेक्शन सही नहीं चल रहा अभी apparently clearly. Shirov is a player from Kasparov's time, right? Yeah, exactly he is. अरे ये क्या कर दिया यार? अरे ये क्या ही कर दिया भाई VD ने? अरे ब्लंडर भाई ब्लंडर. Now knight takes g7 is apparently some sort of equality for white. Will white find knight takes g7? I don't know. Chat, the idea is knight takes g7, king takes g7, bishop h6 check, and the bishop is now not hanging. The king has to go to g8 and now f3, and the bishop is defending the knights. The bishop has to come back obviously. Bishop f3, gf3, and yeah, something like this I guess. This and this should be a draw. So will white find knight takes g7? If he finds knight takes g7, it is going to be a draw, chat. Let's see what happens now. Let's see. Anish showed incredible prep. He's ready for candidates. He is. Anish is always ready. Transmission error हो सकता है. I hope so भाई. Transmission error हो.
Chat, like the stream, by let's go to 500 likes, and if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Next tournament onwards, should I watch because he wins when I don't watch? Dekho, bhai. 97 is super hard to spot. Yeah, for us it is super hard, but for a player like Fedoseev, who's 2700 with 30 minutes on his clock, yeah, possible. Shirov uncle disappointed us. तो तुम मुझे अंकल बुलाते हो, फिर तुम शिरोव को अंकल बुलाते हो. Are you putting me and Shirov in the same category age-wise? By this is ridiculous. Have you ever faced Nikaru Hakamura in online chess? I have not. By when will VD marry? ये तो वही बात तो की ना, ऐसे मतलब आई थिंक पुराने साल होता था, इसका कुछ हो नहीं रहा है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है पहाड़ी लाइफ में, इसकी शादी ही करवा लेते हैं. यही बात कर रहे तुम लिटरली भाई. शिरोव भाई ने धोखा दे दिया, ये तो है यार, शिरोव भाई ने धोखा दे दिया यार. 97 is hard but F3 it's findable. Yeah, it is of course. F3 के बाद ही लॉजिक है, वरना फ्री का पीस थोड़ी देना है. मैं 16 होने वाला हूं अप्रैल 10 को. नाइस. साहिल अंकल वर्सेस शिरोव ब्रो. भाई ये क्या बेइज्जती है भाई, सरासर बेइज्जती. आज मैं बोथ गेम्स जीत गया इन चेस ऑफ जूनियर्स. मैं कल एक एसीएम के साथ है मैच. भाई पेल देना भाई, एसीएम को ना उसका ए और सीएम दोनों निकाल देना भाई. शादी में बुलाओगे ना, समोसा चाहिए भाई, बुलाएंगे. VD was winning chat. He did spoil it. He was completely winning in this position. He could have played rook to d8, which is very difficult to play, to be honest. Set was, some sort of knight, maybe rook takes c8 and some checks here and back rank issues. So he tried to solve them with rook e8, but I think rook d8 was the best move. And now white has only one move that equalizes, that is knight takes g7. Will he find it? Let's see. Think VD played because he saw f3 as the current move. Yeah, I mean, f3 is the current move. Do you mean like white playing f3 right now? I mean, right now f3 does not seem logical, but let's see what happens. Because I have knight takes e3 in that case. Or bishop f5 is possible as well. I want to stream Anish's semis and finals game and also next leg in Berlin. I will most likely not stream it because I think I'm an Indian player nahi hai technically. Bishop d2 is also fine. Yeah, it is fine, but then black is again probably having a chance to play rook d8. He gets one more chance to play it. VD फटाफट रुक के एक्सपर्ट, सरकार को किसी को पता नहीं देगा. हाँ ऐसे करेगा. एडजस्ट. Anish or Hikaru? I guess Anish, भाई Anish. Please stream Anish's match. Really? I don't know how many people want to see Anish's classical game match. Yo आयुष कैसे हो यार? Board exams going on. Get stream your stream. अरे board exam तो हाथ का मैल है यार. क्या रेसिस्ट कमेंटेटर है अश्लील भाई फिर से आपने स्टार्ट कर दिया रोस्ट करना मुझे. From now, Bundling winning quiz should be known as doing a Vidit. अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं यार. White did not play 97. He played bishop d2, so VD still is slightly better, but he has to find one of these moves like rook d8, which is very difficult. डॉलर में क्यों है आपका कोर्स? भाई रुपये में यार, डॉलर नहीं है. But now, I think he can play rook d8. He can play rook a d8, but we want to exchange this rook and try to enter on the d and the e files. Let's go. आज से क्रैकिंग ग्रेटर देन रैपोर्ट. भाई क्या बात कर रहे हो नहीं यार. एक होता है भाई मतलब प्लीज एक्सप्लेन इलॉन मस्क ट्वीट ऑन चेस. भाई मेरे सर के ऊपर से गया यार, वो मुझे समझ नहीं आया भाई. कल मेरा पेपर है आईसी ऑफिसर के लिए. अरे भाई पेपर पेल देना भाई. व्हाई नॉट बिशप g2? Bishop g2 has a problem, and that is I think rook to g1, and you have some pressure here. And also simply knight to h4 attacking the bishop, and after bishop e4 there is f3 and the knight is now hanging, so let's not do this. Shirov की शादी कब? I mean yours. भाई let me clarify chat. Shirov और मैं एक उम्र के नहीं है. Let me clarify that. Shirov uncle equal to samosa. ये क्या लॉजिक है? Shirov is younger than you, I guess. टिक्कू भाई क्या रिजल्ट्स? चैट रिजल्ट्स में Rapport has drawn against Shirov, Grishuk drew against Shankland, and yeah, those are the results so far. Anish Giri is going to draw against Vitugov and he will qualify from Pool B, and Pool C में Rapport will qualify. Pool D में MVL most likely. Let's have a brief look at MVL's game as well against Vidyarov. Oh boy, this looks like a crazy mess. I don't know who will win here. Both sides are attacking here. So crazy mess here. Let's go to the game of Vidit again. Sahil was Shirov senior in Nalanda University.
या लड़की कैसे पटाते हैं मैंने सिखाया शिरोव को। साहिल भाई isn't there any एज लिमिट? शिरोव ने बर्बाद कर दिया यार। अरे हाँ यार एज लिमिट नहीं है भाई। द यंगेस्ट मेंबर इन द स्ट्रीम इज लिल टिक्कू। डू यू थिंक रंगा को इमीडिएटली बैन करना सही था? Why should they have tried to get him to play under a neutral country? I think they should have simply not allowed him to play candidates. I think that would be appropriate. बाकी क्या होगा exactly वो तो भगवान ही जानता है। By the chat, after the move knight rook e8, bishop d2, he played the move bishop takes f5, rook takes d5, and now I think he will probably play bishop e4, white will take on b5. He plays bishop e4 now, chat, white will take on b5, he will take on g2, and there will be a race. There will be a race now. Do you get triggered by anyone in life? Kraken for now. VD will not qualify, so why are you watching his game? He is... अरे भाई ऋषि ऐसा नहीं होता यार। कैसे chess? Shirov life matters. I think he should try to be like Kraken, then he will be more respected. नहीं भाई। Shirov life matters. I agree with that one, but second part I don't agree with. Draw नहीं होगा. I think VD is still better, but will he win this one? I'm not sure. Let's see. चैट पढ़ते पढ़ते थक गए होगे, ये लो बियर पी लो भाई। बियर से एनर्जी आती है क्या? यस आई विल लव यू। थैंक्स लॉट यार शादू भाई। भाई यू एंड करयाकिन मेक द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। आशिल भाई दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ समबडी हु इज डेटिंग करयाकिन एंड वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम। लाइक इमेजिन करो कोई लड़की है हु वांट्स टू ब्रेक अप विद द गाय। This is exactly what she would say. Yeah, I think you and Kraken make the best couple in the world. So भाई देख लो। टिक्कू भाई and fellow fans, good night प्रोमिशा भाई। Who is आरती टिक्कू? अरे कोई नहीं है यार। Kraken ने अटैक नहीं किया भाई। But the white is still thinking. I'm wondering what is he thinking about. He took on b5. Beer कभी पी नहीं क्या भाई? क्या ही एनर्जी आती है? क्या बात कर रहे भाई? एनर्जी नहीं आती है, बंदा लूज होता है। मैंने पी नहीं है ऑफ कोर्स, बट as far as I know, I absolutely don't deserve you. Yeah, it's not you, it's me, and I think you deserve somebody better in your lives. Extramarital affair, so sad for आरती। अरे क्या है भाई? अरे यार आरती को छोड़ो भाई। आरती की आरती वाला छोड़ोगे नहीं। It's most likely a loss for black. White's pawn seems faster. क्या बात कर रहे हो? White has one pawn and black has a pawn right there on a3. So it's not even possible for white to push this pawn all the way. Call Prakhar and ask about Gary. भाई प्रखर बिजी होगा यार, होगा तो खुद ही आया था। आरती लिल एंड अंकल टिक्कू बेस्ट फैन। कम ऑन वीडी भाई कुछ चमत्कार करो यार। लेट्स गो। आरती टिक्कू क्रैकिंग की सॉर्टन। अश्लील भाई देखो यार, अश्लील भाई देखो, मुझे पता है आपको कुछ बातें करनी है यहाँ पे चैट में। यू वांट टू गेट ऑफ क्रैकिंग, बट मेरे सर में चढ़ाओ यार, किसी और पे सर चढ़ाओ। इस मस्ट विन फॉर वीडी भाई, डजंट मैटर भाई। कॉल आरती स्ट्रीम टुगेदर विद हर। नाइस। आरती ओपी। एक दिन किसी आरती को उससे बुला लूंगा ना, फिर तुम फंस जाओगे चैट, सोच लो, पक्का फंस जाओगे फिर तुम। अंडररेटेड तो नहीं है, सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट है। रोशन कौन अंडररेटेड भाई? टिक्कू भाई वीडी प्लेड अ पॉन मूव इन 24th मूव, सो व्हाट कैन आई डू? मुझे बोला गया था 24 में पॉन अप होगा, पॉन अप नहीं था यार। कराकिन और शिरोव, ऑफ कोर्स शिरोव भाई, ऑफ कोर्स शिरोव। शिरोव इज मच बेटर देन कराकिन भाई। आरती जी का फेस। विवेक इनकमिंग। विवेक नहीं भाई, विवेक है भाई, फीमेल विवेक है वो। Is Pranali playing chess overseas? No, she's playing the Guwahati Open from 13th or 14th. Are there any Indian chess engines? What? Yeah, Nikhil Kamath. You know about the new emerging prop knights superstar Anish Nayak? Maybe there was chess team at last birth. I know about Anish Nayak. Yeah, I've gotten wind about him. Just joined WhatsApp. बस यार WhatsApp चल रहा है, मस्ती यार both ways, but cool नहीं करूँगा मस्ती। Nice. क्या हंसते आप आफ्टर पार्टी में बहुत जोर से? भाई हंसो तो खुल के हंसो ना यार। तबाई बीटिंग हरिकृष्णा भाई, एवरीबॉडी इज बीटिंग हरिकृष्णा अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक तबाई ने हरिकृष्णा करियर अकेले खत्म कर दिया है। लाइक ही डिफीटेड हरिकृष्णा सो मेनी टाइम्स, इतनी बार हराया हरिकृष्णा को, लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ वियर्ड। सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ अनीश गिरी नाउ। या दिस इज एन इजी ड्रॉ। In fact, only black can be pushing now, so this is a dead draw.
Let's go to the game of Vidit now. Probably bishop 3 makes sense, trying to go rook e2 at some moment. Yeah, looks roughly equal. Alpha 0 Indian जैसे भाई नाम 0 उसमें जरूरी इंडियन है भाई. Kayakin को free spot दिया होता लेकिन then he would have been removed. But he earned his spot. Yeah, I also earned a relationship, but he also dumped me, so we can also dump Kayakin. What is right age to get married? There is no right age, right? Depends. Samay replied, laughing his ass off to my comment on Kasparov's stream. Okay, I will check it, bye. I will check it. भाई 0 रेफरेंस था, पता है यार, पता है. लेट मी चेक क्या हुआ करा के भाई, क्या कमेंट है ऐसा. I can't see your comment भाई, आपका कमेंट बहुत नीचे है भाई. Unfortunately, it's not there. I can't see it. Anish draw, क्या बात कर रहे हो chat? Anish has also drawn. Anish game is drawn. Anish qualifies from pool B. Anish Giri ने भाई सबको धो के भाई ड्रॉ करके भी क्वालिफाई कर लिया है पूल बी से. एंड पूल बी से अपना एक इकलौता देसी इंडियन आगे जाता हुआ. लेट्स गो टू द गेम. हरिकृष्णा प्रूव करते हुए not all Indians will win. He has lost this game almost. Black is completely winning. He will capture this pawn, and then Hari will resign. Let's go to the game of VD now. VD game में VD still thinking. He has 2.5 minutes. 2.5 minutes. जल्दी खेलो भाई. 8-9 मूव खेलने पेंडिंग है. Kayakin applied for FIDE president. What? कुछ भी. It will definitely top 5 comments as some. It's not there भाई. Kayakin FIDE president like Sishant IPL president. भाई किसने कहा उसने अप्लाई किया यार? किसने कहा? What would you suggest? VD needs to take the next step. He seems to be stuck. I think he should work on his time. खुद देखो 27 minutes versus 2 minutes. That's clear evidence. क्या चक्कर है? You are too cute to watch. Thanks so much भाई. Cute का मतलब समझ नहीं आया मुझे. Thanks a lot. Just came. Did VD blunder advantage? How? बस कर दिया भाई. Time pressure में blunder incoming. I hope not. Come on VD यार. Come on. Finish him off. He plays a normal move h6, which well is okay, I guess. Vidit is a wannabe Grishchuk. I think nobody can play like Grishchuk though. Yeah, VD was winning, for sure. Lil Tiku for world champion. भाई Lil Tiku has too many jobs to do. क्या करेगा वो? VD was winning, yeah, and I was also winning that XYZ event. भाई चला गया वो. I think VD clock 5-10 मिनट आगे नहीं करनी. I think we should simply, I think उसके जैसे 5 मिनट बच जाए ना, उसके सर पे के चल बे ऐसे होना चाहिए कुछ. Just kidding by the way. One thing, do you agree Carlson is only good when he did not... क्या है भाई? Lil Tiku has so many jobs, exactly. Lil Tiku is outside the world, don't compare to humans. अरे कुछ भी. सैंडविच का टेम्परेचर क्या है भाई? पता नहीं यार, मेजर नहीं किया मैंने. भाई कितना... Fedoseev is like playing so slow, dude. Come on, play it faster. Why you consider Vidit game only? He's very, very... I am not supporting him. ऋषि भाई तो किसी गेम देखनी है आपको, मुझे बताओ यार. Which game do you want to watch? I'll focus on that game. Please let me know. Which other Indian player is still playing? Please let me know. Who has a chance to win? आरती का कंटिन्यू करो भाई. ये कोई वो डिबेट नहीं है जो कंटिन्यू करना है कुछ भी. पता नहीं चैट क्या होगा यार. I'm confused. Most likely a draw. Opposite color bishops है. Although black has some chances because of this pawn, but most likely draw होगा. Draw होगा. Bishop h6 sack may be a good move. Bishop h6 feels like a good move actually, because after g takes h6, you feel that you have rook to g1. But what you are forgetting is आपकी back rank लगी हुई है. And I will simply move the king somewhere, and once you take, I will mate you on e1. So let's not forget about back rank issues. Next video, find Aarti. अरे ये क्या है भाई? So please stream chess. I can hear only Kayakin. भाई Kayakin is a chessy. Kayakin is a part of chess.
So once we stream about Kraken, it's already chess यार. फिर से लो ऑन टाइम, फिर से भाई, फिर से क्या करे यार. Really such a bad player. He always plays the second best engine move, sometimes the first move. Yeah, I know you are sarcastic there, and that's absolutely correct. Yeah, he plays really well. I think the only problem is he just has some issues with his time with his clock basically. Rook G1 played now, chat. I think we will see a draw very soon because you will have to play a move like Rook D8, or in fact Rook D8 allows this pawn to fall. So Rook E2 now, Rook takes G2 is not possible. So it is possible for one move at least. Rook takes G2. So if Rook E2, Rook takes G2, Rook takes G2, and there's mate threat. So if we go back, he played Rook E2. Okay, now Bishop E3, I guess. लिल टिक्कू आप रैप कर सकते हो भाई. लिल टिक्कू रैप कर सकता है, मैं नहीं कर सकता यार. Bishop E3 played by white now. कितना देशभक्ति दिखाते हो भाई. देशभक्ति तो होनी चाहिए ना भाई. देशभक्ति तो होनी ही चाहिए. उसके बिना क्या ही हम लोग. Classical time pressure. VD needs a new format. Okay, that might be true. VD needs a new format. Yeah, that might be true. Lil टिक्कू वर्सेस NM टिक्कू. अरे नाइस. वाइट के किंग से बात कर लो एक बार भाई. इसलिए ये बात करने के लायक नहीं है भाई. कोने छुप के बैठा है, ये बात करने के लायक नहीं है. Kraken has always been a dash rating shaming करता है. That is true भाई. I have seen him shame everybody. Like when you know that Iron got into fight with him, he's like, तू कौन है, तू 2400, तू प्रोफेशनल, तू क्या नूब है. Then Fedoseev को बोलता है, तू भाई 4 साल की उम्र में मुझसे बेकार प्लेयर है. अब आई थिंक निचल शॉट को भी पेल रहा है. 7.5 2.5 हराया मैं तुझे. Will you stream Arjun's game? I want to. कितने बजे? 12:15 है ना चैट? 12:15 है ना? Is it 12:15, right? What's this टिक्कू? Black King in 2020 quarantine. Nice. And this is COVID क्या? Nice. Sahil टिक्कू for I am now, of course. Good to know you're supporting all 3 Indians, of course. सीओबी का कोई न्यूज लीक कर दो भाई. क्या न्यूज सुनोगे सीओबी का? बताओ भाई, क्या लीक करना? जो तुम बोलोगे वो लीक कर दूंगा मैं. घंटा फर्क पड़ता है, सही है कि गलत है. क्या सुनना है बताओ भाई, वो चीज न्यूज लीक कर दूंगा मैं. तुम बोलो क्या सुनोगे तुम भाई, बताओ. What's your daily schedule? Eating, sleeping, and repeating. Shirov drew his game भाई. Shirov drew his game against Rapport. It's already a draw. Maxine की game crazy चल रही है, but I don't know what will happen here. Anish has drawn, so Anish is also qualified. Grishchuk has drawn against Shankland as well, and Harikrishna is completely lost. Come on, VD कुछ अच्छी मूव, कुछ बढ़िया ताजा मूव निकाल दो यार. लीक कर दो Kasparov playing COV. नहीं यार, कुछ अच्छा बताओ यार. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बढ़िया बताओ जो लीक करना है, फिर मैं 5 मिनट बाद सडनली लीक कर दूंगा, और जो नए लोग चैट में आएंगे उनको समझ नहीं आएगा कि ये मजाक है. तो कुछ बढ़िया बताओ. सीओ पीछे से आएंगे क्या? पता नहीं भाई. हरी ड्रॉ, क्या बात कर रहे हो? ही वाज कंप्लीटली लॉस्ट व्हेन आई लास्ट सॉ इट. ही इज कंप्लीटली लॉस्ट भाई, कंप्लीटली लॉस्ट. Shankland or Andrekin. Shankland drew his game, so he's half a point ahead, and Andrekin is playing his backup right now, and he's better, so I expect Andrekin to qualify from Pool A. Leak आरती टिक्कू स्टोरी नहीं रही यार. खेल दिया मूव रिफ्रेश. रियली? VD. Yeah, he played king at 7 now, chat, and rook c5 played by white. I don't know who will win this one. लीक कर दो. मोदी हैज स्पॉन्सर्ड सीओबी एंड उनके पोस्टर्स में भी है. अरे कुछ भी. सीओबी में समय नहीं खेलेगा एज समय एज नो मोर अ कॉमेडियन. नहीं भाई, ही इज अ फुल टाइम कॉमेडियन फॉर श्योर. विल देयर बी CS2? दे विल बी भाई. साहिल इज प्लेइंग बुलेट प्लग एंड निहाल. मतलब कुछ तो औकात की बात करे भाई, कुछ तो औकात की बात. लीक कर दो. कामत विल बी इन सीओबी. आई वाज टॉकिंग अबाउट हिम वंस. नहीं, कुछ रियलिस्टिक भाई, कुछ बिलीवेबल, समथिंग फनी बट बिलीवेबल. कुछ ऐसा रैंडम नहीं जो लोग माने ही ना. Video has started in every tournament, then something happens. Yeah, true, bhai. Come on, VD win. वही उम्मीद है. अर्जुन कौन सा टूर्नामेंट खेल रहा है? He is playing the British Championship आज रात 12:15 बजे. Leak, you are doing a standard special and will play COB. नहीं भाई. Sergey chief guest. That will be fun, yeah. Like Sergey will playing a exhibition match during COB, yeah. That sounds fun. क्या बोलते हो?
टिक्कू काउंटिंग हेयर ऑन कस्पारोव हेड, ये क्या लॉजिक है भाई? Is he flagging? I don't think so. He's flagging. I think White is trying to win on. Like he's trying to just hold the position right now. भाई अपने सक्सेशन देखा है? नहीं मैंने देखा यार. Tanmay proud of COB because Tanmay pulled his leg today in front of Kasparov. Really? I think Tanmay will play COB. At least that's my point of view. What about Rook D8? Rook D8 पहले White to play है, so let White play first. Vivek winning COB is something impossible but unbelievable. ये अश्लील भाई, क्या अश्लील बातें कर रहे हो चैट में भाई? Rapport is tested COVID positive and hence Vidit is qualified. सक्षम भाई मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में तो बहुत आगे बढ़ गए आप लोग. Elon Musk is coming for COB, nice. 40 में 5 और होंगे चैट, 5 और होंगे. लीक कर दो, but that is not really some of a leak. That's a predictions. Predictions में क्या लीक होगा यार? कुछ बढ़िया बताओ इन्फो. Prakhar is not in chat भाई. Sergey Kasparov. Prakhar is in the chat. अरे प्रखर भाई क्या हाल है? चैट में मंडरा रहे भाई, कुछ लिख लो यार. Prakhar is in the chat apparently. COB is scripted. अरे यार तुम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी, कुछ फनी मतलब रिवील करना है जो मतलब पता ना हो. प्रखर एक्चुअली चैट में भाई, आई कैन सी हिम इन द चैट. सीओ में घोड़ा डिसरिस्पेक्टेड हुआ क्या भाई? ऑफ कोर्स अनिश गिरी तो आएगा ही, वैसे भी भाई आ ही सकता है. दिस इज नॉट एन इजी ड्रॉ सो फार. आई थिंक जब तक ये पॉन जिंदा है, आई थिंक ब्लैक विल हैव सम चांसेस ऑलवेज. ही विल ऑलवेज हैव सम चांसेस बिकॉज बैक रैंक का चक्कर है. द क्रूक्स कैन एंड द बिशप कैन नेवर रियली लीव द किंग अलोन. तो हमेशा सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए, और जब भी सपोर्ट के लिए कोई पीस चाहिए, इन दैट सिनेरियो black will always have an edge. For example, I can double up rooks, and the bishop has to stay here forever to control d2 and c1 both. He plays h5 to prevent the black pawns from expanding, but I could play, for example, rook a7 here, control the 7th rank, and then go g5, f5, and so on, and start pushing these pawns. And white cannot really push any other. He can push the b pawn, of course, but it's one pawn, and the h pawn might be much stronger. Once this pawn starts running, it's game over for white. So yeah, white is holding on, but as of now, Vidi is better. Leak कर दो कि you will sell Prakhar's prep to समय, कुछ भी. COB के गैंग लीडर्स एंड प्लेयर्स की लिस्ट लीक कर दो भाई. फेक लिस्ट लीक करनी होती तो वो तो कब कर चुका होता. एनीवे चैट, लेट्स सी क्या होता है. आज ऑर्डर क्या किया बताऊं क्या? बताओ यार क्या ऑर्डर किया मैंने आज, मुझे बता दो. भाई रहने दो, घर का टैप ही लीक कर दो. ये क्या भाई? एनीवे चैट, लेट्स वेट फॉर वीडी हैज 1 मिनट. भाई 1 मिनट नाउ. सागर भाई कमेंट्री नहीं करेंगे फॉर सीओबी, क्या बात? अच्छा तुम सेशन दे रहे हो? ओह अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई. ओनली अनीश कैन बीट रैपोर्ट. आई डोंट गिव अ शिट मैन, आई जस्ट वांट वीडी टू विन दिस गेम. दिस इज नॉट रैपोर्ट, दिस इज फेडोसीव. वी वांट विदित टू विन, कम ऑन. Like bishop e6 looks very logical as well to control this, ताकि b4 ना खेल पाए. Once the bishop is on e6, you can't play b4 because of rook takes a2. So I think bishop e6 खेलना चाहिए because then white can't push his only only pass pawn. So I think that will be really in black's favor. Oh, Vidi goes rook c8. He's trying to exchange rooks. Very interesting choice by Vidi. Rook c8 now. Trying to exchange the rook. Maybe not a bad choice actually. Looks interesting. How is it? It's not winning yet, Chad. It's not winning. I think black is slightly better because he has this very irritating pawn. But if white can somehow chop this pawn off, certainly white can be better with 2 passed pawns. So Vidi has to be careful. Levy coming to commentate and see. अरे अमरान का बोल सकते हो, but I think overall it's very unlikely, yeah, because इतना कुछ crazy news नहीं है भाई जो फैला के people उसका ओह ये क्या news है. लीक कर दो सीओ में पुतिन वैसे समय. चैट लीक कर दो कि सीओबी इज एक्चुअली सीएसएल वेब कैराकिन विल प्ले. अरे यार छोड़ो कुछ लीक नहीं कर रहे भाई हम कुछ भी लीक नहीं कर रहे हैं. हम सीधे साधे लोग हैं भाई. 2 रुपए की रोटी, रोजगार की रोटी खाते हैं भाई, और ज्यादा कुछ हमें टेंशन नहीं है. लेट्स मूव ऑन. क्या आपको कभी गुस्सा आता है? आता तो है यार, बहुत रेयरली.
समय का नंबर लीक कर दो, उससे क्या फायदा भाई, क्या फायदा समय का नंबर लीक करके? Is it to play as white here? It's not at all. Just let me flip the board, yeah. So as you can see, I always have this issue here. चाहे rook e1 mate हो या rook d1 mate हो, whatever it is, and I can't bring my king into the game because bishop check आएगा. Then what do I do as white? It's not much I can do. So black is better, but how much I don't know. Why? What do you do for a living? Please tell. I eat for a living, yeah. As I mentioned a million times, I eat for a living, and that's exactly what I am going to do right now. I'm going to eat. So let's eat. रहने दो, तुमसे लीक नहीं होगा भाई। भाई क्या लीक भाई, कुछ बढ़िया होना चाहिए। हाय आल्सो इट फॉर लिविंग, ये हाई फाइव अर्षद भाई। ओबीएस एक बार दिखा दो भाई, ओबीएस दिखा दो। मतलब ये लो भाई, मेरा ओबीएस, सारा ओबीएस ही है जो तुम देख रहे हो। What about Rapport game? Rapport do his game. क्या रोगन जोश खा रहे हो? अरे सैंडविच खा रहा हूं भाई, बाइट्स में। मार्केट के एल लग गए भाई, मार्केट के एल। भाई रशिया की करेंसी तो आई थिंक फ्री फॉल कर रही है, लिटरली इट्स लिटरली फ्री फॉलिंग राइट नाउ। दैट्स द क्रेजी पार्ट। रशिया करेंसी रूबल्स एंड आई थिंक लेट्स गो फॉर 1 ईयर भाई। 0.5 से 50% है भाई, लिटरली करेंसी 50%। अभी तक चल रही है स्ट्रीम, ऑफ कोर्स भाई। By the rook a5 played by white, he plays the move rook to a5. इस प्यादे को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। बाय बाय प्यादा। अब क्या करेगा वीडी? Will he find some counter play with rook c2 moves? What will he do, chat? क्या होगा अब जादू? क्या करेंगे वीडी? What will he do, chat? Nobody knows. He plays the move bishop to g4. The idea to stop this diagonal maybe. Let's see what happens, chat. What happens? He also wants to capture h5. You can't take the bishop because of rook e1 mate. दोनों पॉन मर चुके हैं। ये पॉन मरने वाला है, ये पॉन मरने वाला है। अब रेस होगी चैट, एक बहुत definitely better than race 3 for sure. Let's see what happens. Per dollar exactly. Chess is the arbiter in COB. बढ़िया भाई, शाबाश। क्या ही बढ़िया खेला तुमने। लीक कर दो कॉमेडियन समय जना कॉमेडियन यूक्रेन। अरे भाई आई गॉट बैंड ऑन मीगल। अब चेस के साथ खेलूं भाई? चेस ग्राउंड पे जाओ यार, ज्यादा नॉर्मल चेस पे मिलेंगे वहां पे। रेस 700 की। यहाँ पे सैफ अली खान से एक्टिंग ये पॉन करेंगे, अच्छी एक्टिंग मुझे लग रहा है। साहिल टिक्कू द एंटरप्रेन्योर अंडर द शेल, नाइस। डैडी सेंड फूड, रोशन कह रहा है डैडी सेंड फूड, नाइस। लेट्स सी भाई क्या होता है, कम ऑन भाई। फिर उसके इतना टाइम है क्लॉक में यार, क्या करेगा इतने समय के साथ वो? कैरी मिनाटी, रफ्तार एंड चहला प्लेइंग इन सीओबी दिस ईयर। किसने बोला यार ये? आर वीडीज चांसेस ओवर? ऑफ कोर्स भाई, इट इज ओवर। लीग कर दो, सेलेंस्की विल प्ले सीओ। भाई सेलेंस्की बेचारा देश को बचा रहा है, यहाँ बेचारे सीओबी के पीछे पड़े। रोड टू 22K भाई, 22K ही नहीं हो रहा भाई। 21 से 22K जाने में साल लग गया भाई, लिटरली ऐसा लगा 10 साल स्ट्रीम कर रहे, 22K नहीं हो रहे। एनीवे चैट, कम ऑन भाई, चलो यार जल्दी। फेदोसी भाई इतना टाइम नहीं, अर्जुन गेम स्ट्रीम करनी है भाई। अर्जुन क्या सोचेगा भाई? लीक कर दो अमन हैमिल्टन एंड साहिल प्लेइंग एग्जीबिशन मैच। ये लीक करने, अच्छा लीक करने को बोल रहे थे क्या? ओ भाई कराकिन तो समय के पीछे पड़ गया भाई, ये मुझे पता है। बट आई थिंक वो थोड़ा सा ही हैज सम इश्यूज चैट, कुछ पर्सनल इश्यूज है कराकिन को। दे आर कॉल्ड स्टुपिडिटी। दैट्स व्हाई आई डोंट सपोर्ट इंडिया। ओके top 4. Why poker is legal if gambling is illegal? It depends भाई। Gambling, is it like skill based gambling? Then it's actually skill based betting, then it's allowed. क्योंकि पोकर में स्किल बेस्ड है ना, that's why it's allowed. लीक कर दो, Wiz will play COB exhibition match.
बेन स्टोक्स, ओके बेन स्टोक्स का क्या लॉजिक है भाई? भाई प्लीज समय से मैच लो ना भाई, समय से मैच कहां लेके डालूं मैं? पुतिन ज़ेलेंस्की चेस मैच दिस फॉर यूक्रेन, भाई आई डोंट अग्री विद इट। आई डोंट थिंक कि योर कौशिक भाई क्या हाल है? एनीवे चैट मैन देखो फेदोसीव भाई, थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा भाई, हमारा तो बता तुम्हारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास कम है, थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा फास्ट, कोई ब्लंडर भी कर दो जाएगा नहीं। मार दो पॉन, इतना तुम रास्ता काट के आए हो भाई, इतना लंबा ये प्यादा मारने के लिए, मार काहे नहीं रहे हो बे? बेन स्टोक्स राइम विद, ओके वाह बेटा क्या ही जोक है भाई। बेन स्टोक्स राइम विद, वाह बेटा। Is there some decree by the president of Russian Federation that bans Russia from saying anything about the war? I don't think so. There's anything like this. All I know is that they have banned Twitter and all this stuff, so they cannot even say anything actually. Can Vidit qualify? No, bhai, he can't. Vidit in time pressure again, of course. Yo, Vidit भाई, गैरी वाली स्ट्रीम में क्रेजी मजा आया टिक्कू भाई, क्रेजी मजा आया। तो भाई ओ भाई, कैप्चर्ड H3, कैप्चर्ड H5, क्या होगा भाई? Vidit has two more moves chat with the time control. सर मेरे चाचा रात को गए सोने हैं, जल्दी खेलिए क्या भाई? ओ रुके 5, कम ऑन G5, पुश G5 जल्दी भाई, आंख बंद करके पुश करने का। ओके आंख खुली रख के पुश कर ले, बट जल्दी कर भाई, कम ऑन वीडी, कम ऑन, लेट्स गो। कैन यूसी प्ले इन COB? ऑफ कोर्स ही कैन, if there is no India match. Chess Queen posted something on IG. Yeah, she posted some things on IG and also on Twitter. Come on भाई, let's push it. कर दे यार पुश। पीडी जीतेगा, लिख के ले लो भाई, ले लिया। बेसिकली चैट, इट्स ऑल अबाउट कौन पुश करेगा, कौन पहले फास्ट पुश कर सकता है, कौन पहले या ही प्लेस G5, white will go B4 and it is going to be a race, crazy race, and who knows who will come on top. वीडी का मैच रैबिट और टोटल जैसा होता है, वीडी पहले सोता है फिर रेस करता है, ये क्या है भाई? VD has this issue of maintaining consistency. He starts very well, then misses out on a good finishing. That is true, but I think, but that's true for all men. They cannot finish. Anish Giri said as Vidit does not join him in semis. Yeah, of course he'll be sad. Yeah, he would love to see Vidit there. Puchuk reminder. Chat stream like kar do bhai. Let's get to 400 likes. And if you're here for the first time, do subscribe channel, guys. Your mods seem to like me. Nice. G5 is normal. What VD will not find it. He already played it. Bhai, thoda life में आगे बढ़े भाई. He's already played G5. VD out even if wins. Yeah, bhai, he's out even if wins because जो आपके अच्छे दोस्त हैं Rapport, he drew his game and that's why Rapport goes to 4 points. Even if VD wins, he goes to 3.5. Add new music कर देंगे राहुल भाई, कर देंगे यार. I am a mod aspirant. भाई हमारा मॉड बनने का एक्सेप्टेंस रेट इज वर्स देन IIT, सो आप IIT ट्राई कर लो यार. एनी थॉट्स ऑन चेंजिंग द स्ट्रीम लेआउट एज इट्स लुकिंग? कर लेंगे भाई, कर लेंगे. म्यूजिक एंड लेआउट मैं भी खुद को भी चेंज कर लेता हूँ. एनी थॉट्स ऑन चेंजिंग द स्ट्रीमर बिकॉज गेटिंग क्वाइट रेगुलर नाउ. दैट विल बी फन राइट. नाउ वीडी विल डू बेसिक. ये क्या है भाई, बेबी सिटिंग कहाँ से आ गई? MVL गेम, अरे हाँ MVL गेम वाज क्रेजी बाय द वे. Yeah, it looks like a draw to me, chat. Queen D3 check, King A1, Queen A6 because it's a repetition. They have already agreed to a draw. So MVL has drawn his game. Let's go to the game of Vidit. Vidit is winning, chat. He's winning. Crazy how 0.5 points cost an entire qualification. Exactly. Today Arjun is Botnik. No, I think it's Arjun versus Arjun versus क्या नाम है उसका, जॉर्डन नहीं आज. और कितने बजे यार पार्था भाई, कितने बजे यार? कल से क्या स्ट्रीम करोगे? करोगे भी, करो फर्स्ट करूंगा यार. चिल स्ट्रीम करेंगे कल से. फिर आई थिंक COB आ जाएगा तो उसका COB के ट्रेनिंग स्ट्रीम भी हो सकते हैं. उसके बाद अपने भी स्ट्रीम कुछ ना कुछ तो करूंगा भाई. ऑफ कोर्स आई ड्रॉ अगेंस्ट इंस्टेड ऑफ लॉस वुड हैव मेड ऑल द डिफरेंस. या मैन, ट्रू. अरे फिर से एडवांटेज आ गया. अरे एडवांटेज तो है बट कब तक रहेगा वही इंपॉर्टेंट है ना. रैपोर्ट ऑलरेडी ट्रू भाई, ऑलरेडी ट्रू. आफ्टर पार्टी भाई, हर दिन आफ्टर पार्टी नहीं होगी भाई.
टिकू भाई सुपर चैट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसे मांग रहा है। नाइस भाई। Now I hope at least Anish wins Grand Prix. Yeah, I hope so, man, because he's qualified for Pool B. Let's see. Pacific time में है, Indian time नहीं पता. तुम Pacific time बता दो, Indian time मैं ढूंढ लूंगा भाई. By the way, B4 played a white now, so अब पूरा रेस लगेगी भाई. निहाल का क्या हुआ बताना जरा, निहाल का भी देख लेते हैं यार, निहाल क्या चल रहा है. What is निहाल doing? ओ बुलेट टेस्ट चैंपियनशिप का आ गया है, वो भी देख लेते हैं. कितने बजे है आज, कुछ इन्फो तो होगी. बुलेट चेस चैंपियनशिप कुछ दिखा तो रहा नहीं यार, लेकिन न्यूज टुडे एट 7 CET है ना, सो 11:30 बजे हो गया आई थिंक. और सेकंड मैच अर्जुन का है, सो आई गेट 12:15 होगा. निहाल का मैच कहाँ है? निहाल निहाल का मैच इज ऑलरेडी ओवर चैट. निहाल ऑलरेडी फिनिश हिज मैच. And let's see the result of Nihal's game. Nihal drew his game against Ivanisevic Ivan. So he drew his game end game में. So all chill. Let's see. अरे भाई 30 सेकंड है वीडियो, आखिरी मूव. Come on fast. No time to waste. Getting up like Vivek in sari will be a good. ये क्या? I am the best chess player in my room. अरे nice भाई. Okay, F5. That's a very interesting move, to be honest, because aren't there a couple of checks incoming and isn't it a forced draw? Like rook a7 check, rook g6, there is rook a6 check, there is no defense. And if you play king g8, the king is stuck on the back rank, which I don't really like. After b5, white I think is better. So I think VD might have spoiled this chat. I think it's a draw now. Yeah, I think it'll be a draw. It'll be a draw. It'll be a draw. And पूरा 40th move पे फिर से किया भाई. 40th move पे. I think it'll draw now. It's a dead draw. Dead draw है भाई आज. अब तो dead draw है. साहिल भाई आप move बता दो, मैं जाके खेलती हूँ. Nice. Benjamin Boak crying in the corner. क्यों बोक ने क्या किया भाई? बोक का क्या हो गया? And to be honest, I don't even know why he can't just take the pawn. Even this looks kind of logical. 11:30 क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ भी 11:30 तो हो ही नहीं सकता. 11:30 तो ये कहाँ देखा रक्षित भाई तुमने? What the hell was this move? ये तो मैं भी खेल नहीं सकता. ऐसा नहीं है. Idea is F4 of course, but what if white just takes? I don't know. अभी players take 5-minute break. भाई कोई break नहीं है यार. The game goes on. फिर से था लगाव काहे को भाई? लगाव नहीं है भाई, चेस से लगाव है. Wasn't video? Yeah, he was completely winning, but yeah. Did Kasparov make any comment? Okay, I don't know. कोई chat है था यार. Anybody who's watching Samay stream, did he make any comment on Karyagan? We'd love to know. Somebody told 10 Pacific. 10 Pacific. Really? 10 Pacific? I don't know, man. Interesting. Let's have a look. As far as I know, chat, it's a second match. And पहला मैच yeah, 10 AM Pacific is like 11:30 PM India. हाँ 11:30 है, but the first match is not of Arjun's. I think it's the second match, so I think पहला match नहीं है, so that means कि it will be at 12:15 again, same time. Rook will take the a5, I think. Yeah, but the thing is, I mean, what about rook takes f5? Is this I think this might be a transmission error, because this makes no sense. Can't white just take the pawn? कल समय का बर्थडे है. कुछ भी समय का बर्थडे चला गया, मुझे याद है भाई. समय का बर्थडे अभी नहीं है. Did Vidit Gujrathi as well last time? Yeah, he was completely winning. He spoiled it, bhai. Who will Arjun play today? I think he's playing Jordan Forest, but somebody said Botnik है. I think Jordan Forest से खेल रहा है वो. What is better than f5? I think better than f5 is just to keep the. First of all, you cannot weaken this, your 7th rank. I think rook c2 was an interesting idea. For example, rook c2, and this pawn is now attacked. And if you push b5, then you play bishop f3, control this pawn as well. And then you start pushing one of these pawns, f6, king g6, h5, h4, h3, h2, and so on. But yeah, I mean, this is all very difficult to play from black. अब समय के साथ हैंड आउट करना छोड़ देगा वीडी को, ऐसा कुछ नहीं है यार. टुमारो इज साहिल्स बर्थडे, कल सब कमेंट करना. नाइस. Why rook to then back and mediate? The thing is, chat, we wanted to activate the rook. Yeah, you activate the rook, and then you try to stop this pawn as well. You can always play rook b2 or so on when the pawn gets to b6, and then you put pressure on this pawn ताकि ये rook भाग ना पाए.
This rook is tied down to the a file after rook c2. And इसका मतलब white has very limited options to start pushing his own pawn. So एक restricting move थी. For example, rook c2 let's say खेल दिया. अरे अभी तो उसने खेल दिया ना. Rook c2 let's say. b5, now bishop f3. And now b6. And now I can simply play, f6 or king g6. And you can't really push this pawn because you can't go rook b5 here because rook takes a2 is a threat. So that's the reason. And this rook is of course no way. For example, rook to b1 trying to push this pawn. Then comes bishop d5. b7 and now rook to b2 and black is actually winning this one. Crazy move hai. Rook takes rook e1 mate. So kuch crazy lines thi, but I think overall this was the best move, but he did not find it. And now Fedoseev is thinking आपको विदाउट कमेंट्री करना आएगा क्या? ऑफकोर्स भाई, बिल्कुल. रुको भाई, बार ऑफ कर देते हैं भाई. रुको भाई, स्विच ऑफ द बार नाउ. वीडी गॉट नो टाइम. दैट इज ट्रू, बट आई थिंक 40 मूव्स हो चुके हैं, so कोई स्ट्रेस नहीं है. If I could get a penny for every time VD messed up a game, my wallet would always be full. यार देखो सुनो, बात सुनो, भावनाओं को सुनो. देखो, VD is playing at the topmost level. मतलब he is trying to literally qualifying for the world championship cycle. It will never be easy, भाई. It will never be easy. उसके सारे tournaments, World Cup, Grand Prix, World Blitz, सारे के सारे मतलब ये strong tournaments थे. And now the problem is after rook a7, rook a6, ये check से भागना भी impossible है. And if you come to g8, then the king is stuck on the back rank. जब भी ये pawn push होगा, it will be a check on b8. That will be very difficult. So I think king has to go up the board. And if you go up into the check, and how do you escape these checks? There's no way to escape these checks. I mean, अगर king यहाँ लाओगे तो I can also take this pawn. So I think really it might be a draw unless f5 is a transmission error, of course. Rook b8, pawn push, rook 8. Yeah, but इतना आसान नहीं है. When you go b6, I will play bishop f3 and stop this pawn from going to b7. Keep bar on so we can get your blunders also. Why? If I keep the bar on, then I can also know the evaluation. फिर तुम बोलोगे मैं इंजन देख रहा हूँ. ऐसे कैसे चलेगा भाई? फिर काश उसकी बार ऑफ किया क्या? हाँ भाई, मैंने कहा आज बहुत लोगों ने बहुत पी लिया, ज्यादा हाई नहीं बना भाई. वर्ल्ड तो फिर बहुत अच्छा था वीडी का. वीडी वर्ल्ड क्या है भाई? विदित का क्या स्कोर है? एनीवन? विदित का स्कोर भाई 2.5 है. इवन इफ he wins 3.5, he cannot qualify. Who was winning? What happened? Life happened, bhai. Life happened. Vidit is not top 10 material, which is the one side he doesn't have right temperament. I don't know, bhai. मैंने विशेष का ये वाली बात तो मैंने सुनी नहीं है, so I can't comment. But I would say कि temperament की बात है, that can be changed. That's the best part. It's not. I think, and the thing is, he has played some crazy chess in a few games, so I know there's potential. The only thing is, he has basically no time in the last 10 moves, the time control, to find the best moves. And if he has no time, to what can he do? There's nothing he can do. और टिक्कू कह रहा है केशव, अरे और कैसे हो? मेरे को भी विषय का बोला है. Pool A lower seeds qualified. I think Andrekin is going to qualify most likely. True, maybe I'm getting emotional for no reason. He's doing a great job. And hey, thanks for saying. Of course, Arvind bhai, of course, yaar. If Sergey is removed, who will replace him? I hope if Sergey gets replaced, I honestly don't know who they will choose, but I just hope he gets replaced. That's the most important thing. पॉलिटी करेक्ट होने का बहुत प्रेशर टिक्कू पे भाई. कोई प्रेशर नहीं है भाई. तुमने देखा नहीं मैं कितना रोस्ट करता हूँ ट्विटर पे. अगर पॉलिटी करेक्ट होना होता तो क्रैकिंग से पंगे थोड़ी लेता मैं. ऐसा कुछ नहीं है. बट थिंग इज कि मैंने इससे कमेंट सुना नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट. एंड्रेकिन लूजिंग टू बैकवर्ड भाई. अभी तो जीत रहा था वो लौंडा, अब हारने कब से लेके? ओ भाई, एंड्रेकिन के तो भाई लोल हो गए भाई. ये कैसे हुआ? हाउ डिड ही लूज हिज क्वीन? Okay, here he was much better. Then he played rook d8 mistake, knight d4 mistake, and now black played king f7, bishop f4 trying to capture this knight, bishop b4 trying to capture this one, rook c7 check was the final mistake because now there are back rank issues here. King g6, rook g8, and black can I guess just take on a5 here, and there's no defense. Yeah, he took on a5, knight a5, rook a5, g4. I mean, this is just too much. Yeah, so chat, I think pool A से Sam Shankland will qualify, pool C से Rapport will qualify, pool B से Anish Giri will qualify,
एंड पूल डी से डी में कौन डी कर रहा है मुझे पता नहीं. डी में आई थिंक एमवीएल इज ड्रॉन, सो एमवीएल विल क्वालिफाई. सो दीज आर द 4 प्लेयर्स. लेट मी चेक यू यांगी फर्स्ट, क्या चल रहा है यहाँ पे. या यांगी इज लॉस, सो यांगी हार रहा है, दैट मींस एमवीएल क्वालिफाई. सो पूल ए चैट, पूल ए से आई थिंक पूल ए शैंकलैंड, पूल बी अनीश, पूल सी रैपोर्ट एंड पूल डी एमवीएल विल क्वालिफाई. सो ये 4 विनर्स हैं हमारे पास. Harikrishna is losing to Tawatabai. Anish Giri drew against Vitugov. Shirov drew against Rapport and qualified from Pool C. And Vidit is playing against Fedoseev with a move I don't understand. And now Rook A7 check played by Fedoseev. It is going to be a draw chat. I don't know. I think Rook C2 was difficult to play because it looks like the Rook is already defending A2, so there's no point to Rook C2. But the point was to keep the Rook tied to the A file ताकि pawn push ना हो. But difficult to see. Tawatabai exactly. Nationals easy से जीत कर मजे करता था, but he is not going for money, go for glory. Exactly. Anish wasn't winning today. Anish was actually having a draw position today, but he won Pool B though. That's what he wanted. Pool A tie नहीं है भाई. Tie कैसे? क्या बात कर रहे हो? Pool A tie हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, रुको यार. Pool A tie backrot and I think Backward and Shankland का tie है पूले में. That's true. Vidit did not lose on time. Andrekin winning now. क्या बात कर रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है भाई? He's winning now. What the hell? How is he winning? ये क्या हो गया भाई? What the hell just happened? He played Queen to B. Oh my God, क्या ये गेम है? भाई Queen. Apparently he had to give Queen A1 check. What the? ये क्या पोजीशन है भाई? G4 work for White. Knight D7, Rook takes D7, Queen B1, King G2, Queen E4, and now King H3 or King G3, and White is winning. What the hell? Variation देखो भाई. King H3, Rook A3 check, King H4. अरे भाई, ये क्या crazy था भाई. King to H4 helping him mate the black king, and there is no defense to Rook takes G7 mate. That is crazy, man. That is insane. That is completely insane. So Andrekin wins after all against Backrot, and Andrekin qualifies from Pool A. Done. Visa ने समय को कभी bad player नहीं बोला होगा. He is too nice person. Can't believe he said. हाँ, exactly. He would have never said that in video. I also think so. Bar dancer in tournament like this. Yeah, exactly. It's insane. क्या ही position है यार. Crazy position. So video game में देखते हैं chat. I think he will accept a draw very soon. डैडी को सब क्यों ढूंढ रहे भाई? डैडी इन डिमांड. चैट, आई थिंक वी कैन एंड द स्ट्रीम नाउ बिकॉज आई थिंक 12:15 बजे एक और स्ट्रीम है. वो होगी एरिगेसी अर्जुन की अगेंस्ट आई गेस इट इज जॉर्डन वन फॉरेस्ट. सो अगर मुझे पता लगा कि हो रही है, आई डोंट इवन नो वो करना है कि स्ट्रीम नहीं करना है. बुलेट वाला मुझे बताओ यार. एरिगेसी बुलेट मैच स्ट्रीम पूछ लेता हूँ. पूछना बेटर है भाई. 12:15 होगा भाई, देख लेना. डैडी इज बैंड ऑलरेडी भाई. डैडी इज बैंड फ्रॉम नोवेयर. हैप्पी बर्थडे टिक्कू. अरे यार मेरे बर्थडे के लिए कुछ महीने लेट हो गए आप. मेरा बर्थडे सीओबी फाइनल्स के दिन था भाई. क्रेजी. यस ठीक है. तो स्ट्रीम करते 12:15 बजे चैट. आई सी यू एट 12:15. ट्विच में करना है क्या? देखते हैं मैं कहां करता हूं. आई सी वेयर आई डू इट. ठीक है, आई लेट यू नो जहां पे भी करूंगा. लेट्स सी चैट किस. ठीक है. सो आई सी यू एट 12:15 देन चैट. मिलते हैं भाई 1 घंटे में. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. आई सी यू सून. बाय बाय चैट. ये गेम ड्रॉ है भाई. इट्स अ रेपिटेशन विद लाइक दिस डेड ड्रॉ. सी यू सून. वाईटी प्लीज. ठीक है, आई विल डू इट ऑन वाईटी. ठीक है. बाय बाय चैट. सी यू सून. Bye. See you soon. Happy Women's Day anyway. Chat. Yeah, very important. Happy Women's Day. And भाई, although it's not much, but it is एक दिन हम celebrate कर सकते हैं. So bye chat. See you soon. Take care.